स्टेज की शुरुआत जो है हाय वो 6 गाइस, तारीख को वेलकम टू 6 द अगस्त स्ट्रीम से गाइस। उसका எல்லாரும் शुरुआत நல்லா होगा और இருக்கீங்களா? सेकंड वीक जो है वो 14 से 16 अगस्त तक चलेगा। 42 टीम्स प्लेन से आएंगी और 6 डायरेक्ट इनवाइटेड टीमें जो टॉप 6 रही थी FFMIC तेज FFMIC स्प्रिंग 2026 से वहां से आएंगे। 48 टीमों के बीच में ये प्रतिस्पर्धा होगी। 4 ग्रुप 12 टीमें ईच और नॉकआउट स्टेज जो है वो आप देख सकते हैं 28 तारीख से शुरू होगा, 13 सितंबर को समाप्त होगी। ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे जो भी லேட்டா வந்துட்டேன் वो सीधा ग्रैंड फाइनल ராக்கி மாமு வந்திருக்காரு गाइस இன்னைக்கு கமெண்ட்ரிக்கு सभी भी आने बाकी கிரைபிள் விளையாட சொன்னா சொட்ட மாதிரியே விளையாடுறீங்க சொட்ட ப்ரோ ப்ரோ சைலண்டா இருங்க। पर्टिकुलर तारीख क्या रहने वाली है और क्या लगता है आपको कि सिटी कौन सा हो सकता है? वही लेटा बंदे पता देखिए ये तो अभी कहना मुश्किल है। मैच है पहला पर स्टार्ट है मैच में स्टार्ट चलिए हम बात कर लेते हैं एक बार हमारी प्ले इन्स के बारे में जो कि अभी ये करंट स्टेज होने वाली है जहां पे 20 जुलाई से प्ले इन्स का स्टेज स्टार्ट हुआ था। आज है 23 जुलाई और इससे पहले के 3 दिन के मुकाबले काफी धाकर हुए हमारे இதே வேலையா இருக்கு என்ன ப்ரோ வந்தா வந்துட்டேன் ப்ரோ प्ले इन्स के 3 दिन होना और बाकी है आज के बाद 24 जुलाई 25 जुलाई और फिर 26 जुलाई ए गाइस जी के साथ हम प्ले इन्स को समाप्त करेंगे। முடிஞ்சிருச்சு गाइस இந்த மாசத்துல அடிச்சு விடுங்க गाइस। क्वालीफाई करने वाले हैं नेक्स्ट पड़ाव ग्रुप स्टेज के लिए। तो ये काफी बढ़िया फॉर्मेट है लेकिन समझ लेते हैं एक बार प्राइस पूल के फॉर्मेट को जहां पे 1 करोड़ इंडियन रुपीस के साथ ये पूरा धनराशि नजर आने वाला है जहां पे चैंपियन टीम्स को मिलने वाला है 35 लाख और सेकंड पोजीशन पे जो टीम आएगी उनको मिलेगा 17 लाख, थर्ड पोजीशन पे 7 लाख और उसी के साथ देखिए 8वें पोजीशन पे यहाँ पे 18th प्लेस तक आपको हर एक टीम में थोड़ा बहुत प्राइस पूल का चंक नजर आएगा और साथ में ग्रैंड फाइनल्स के रॉकी भाई जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होंगे मोस्ट NW Hunter bro thanks for another hot little hot thank you so much for the finger नहीं प्रेडिक्शन வந்து TEZ தான் டாப் यहाँ पे पॉइंट्स और पॉइंट्स TEZ டாப் है लेना CTZ ரெண்டு टीम लगा और टीम टॉप एलिमिनेशन का 1 अंक मिलता है और प्लेसमेंट के पोजीशन कुछ इस प्रकार से हैं। बूया करने पे 12 अंक, दूसरे पायदान पे आने पे 9, तीसरे पायदान पे आने पे 8, चौथे पायदान पे आने पे 7 अंक, पांचवें पायदान पे आने पे 6, इसी तरीके से 5 4 3 2 1 और कहीं ना कहीं 11वें और 12वें पायदान की टीमों को प्लेसमेंट के अंक नहीं मिलते हैं। एलिमिनेशन का पॉइंट ही मायने रखेगा और अगर टाई ब्रेकर होता है तो वहां पे नंबर ऑफ बूयाज मायने रखते हैं। यदि दोनों टीमों के बीच में बूयाज भी सेम हो गए तो दोनों टीमों में से एलिमिनेशन किनके ज्यादा थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मायने रखेगा। और अगर कहीं ना कहीं 1 in a million ये दोनों चीजें भी इक्वल हो गई तो फाइनल मैच में पोजीशनिंग क्या रही थी। इसके अलावा 1 यूनिक एक्टिव स्किल जब से ये नियम आया है धूम मचाते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ई स्पोर्ट्स का मजा दुगुना नहीं 4 गुना हो चुका है। जी हाँ गाइस, हर एक खिलाड़ी को अब अपनी टीम में अलग अलग एक्टिव स्किल के साथ ही खेलना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। पैसिव स्किल आप एक रख सकते हैं लेकिन एक्टिव स्किल आपकी विभिन्न होनी ही चाहिए, तभी आप यहां पे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम क्योंकि जब से नए एक्टिव कैरेक्टर्स की कॉम्बिनेशन हमें ब्रो व्हाट पुट ब्रो பருப்பு குழம்பு मजा और ज्यादा बढ़ गया है। புளி சாப்பாடு आज जो प्लेइंग ग्रुप्स சாப்பாடு தாளிச்சு வச்சு போயிட்டாங்க அது கப்பு முக்கியம் பகிலே கப்பு முக்கியமா அச்சலாம் பகிலே 4 AM team chaos intense quack देसी esports flawless esports esports और skylord esports फुट वंदा தான் சொன்னேன் की टीम्स है जो आज यहां पे प्रतिस्पर्धा टीम लाइन अप பாருங்க TEZ आज के जो IQOG TEZ ல इस प्रकार से कि कप्तान रोनी मैदान में उतरेंगे रोनी ஆடுவாரு இவரு ஆட மாட்டாரு நினைக்கிறேன் साथ डेफिनेटली वन ऑफ द फेवरेट्स रहेंगे। टीम SMR अंडरडॉग हो सकते हैं लेकिन नौसिखिए नहीं। SMR நல்ல டீம் ब्रो SMR நல்ல டீம் தாராளமான டீம் SMR जिम्मेदारी रहेगी सबको चौंकाने की। क्लज्जा esports कौशिक मलिक के नेतृत्व में मैदान में उतरेगी विद बुली क्लॉस और शुभ। रिसरेक्शन ब्रो இந்த ग्रुप சரியான ग्रुप ब्रो இந்த ग्रुप இவனே வேற இருக்கானே ब्रो रिसरेक्शन chaos में होंगे स्कैरी ஏய் இது உண்மையாலுமே மொரட்டு ग्रुप ब्रो। इंटेंस क्विक से आप देखेंगे मैदान में आते हुए एमबॉट आयान सोलो और हर्ष को देसी esports ஏய் இது யாருனே சொல்ல முடியாது உண்மையாலுமே இது மொரட்டு ग्रुप உண்மையாலுமே। डेफिनेटली जिम्मेदारी रहेगी कि ये जो बड़ा नाम बड़ा बैनर तले ये आए हैं इसको निकले यार பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்படியே ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படியே உங்க फ्रेंड्स ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க। यहां पे फ्लेक्सो रशर क्वेट और थीमोस यहां पे मैदान होते हैं। देखिए बहुत फरमाने वाली बात है ऑक्सीजन के पास सब्स्टिट्यूट ग्रुप ऑफ डेथ தான் ब्रो खिलाड़ी यहां पे दिख रहे हैं। इसका मतलब है शायद अगर कोई मुसीबत पड़ती है तो इन चारों को ही बेड़ा पार लगाना पड़ेगा।
और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इकलौती ऐसी टीम आज के दिन दिखी है जिसके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट मुझे लगता है ये कहने के ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है कि कई बार ओवर एक्सपेरिमेंट करना टीम के हित में नहीं होता, लेकिन इस टीम को तो कम से कम पता है कि निर्धारित किए 4 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि इनको पता है कि कौन से वो चारों खिलाड़ी होंगे जो मैदान में उतरने वाले हैं और डोमिनेट करने वाले अल्टीमेटली। मुझे देखिए हर एक टीम का लाइनअप काफी बढ़िया लगे यहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ग्रुप बहुत टफ, बहुत मुश्किल रहेगा आज के लिए, क्योंकि काफी सारे ऐसे टीम्स भी है जिनके साथ हम लोग परिचित है। एक टीम प्लाजा स्पोर्ट्स रहेगी जो कि सिटी क्वालिफायर से क्वालिफाई करके आए, तो उनके ऊपर भी नजरें रहेगी। इनके अलावा आपने कहा कि बड़े बैनर के नीचे देसी स्पोर्ट्स की ये जो चारों खिलाड़ी खेल रहे हैं, मेरे हिसाब से इनके मुकाबले शुरुआत से ही आपको एक बात कर रहे थे के बारे में, जहां पे आज के दिन आपको 6 मुकाबले नजर आने वाले हैं। होगा आपके बरमूडा के मैच पे, फिर नेक्स्ट एरा और आखिरी मुकाबला होगा रैंडम किसी मैच। तो ये आखिरी मैच पता नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले शुरुआत कलाहारी के साथ, और कलाहारी के मैदानों में कलाकारी कौन दिखाएगा वो हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं, क्योंकि कलाहारी ड्रॉप स्पॉट्स जो कि प्रेफर्ड होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे टीम्स बोलती तो है कि वो लोग अपने अपने निर्धारित ड्रॉप लोकेशन पे जाएंगे, फिलहाल के लिए और मैच आ रहा है नजर आने वाली है। आईक्यू ओरंगुटान भी होने वाली है। उनके अलावा यहाँ पे 4am ये सभी टीम्स आपको पे नजर आने वाले हैं। स्टोन ब्रिज पे आपको नजर आएगा यहाँ पे इंटेंस क्वैक, कन्फाइंडमेंट पे आपको स्काइलर्ड स्पोर्ट्स और आने वाले हैं। पे इकलौती टीम YouTube अलाउड नहीं मेज पे यहाँ पे जाने और कमांड पोस्ट पे रिजरेक्शन के साथ उतरने वाली टीम SMR। तो देखते हैं कि कितना सटीक रहता है ये प्रेफर्ड ड्रॉप स्पॉट्स और कितने ज्यादा चेंजेस हमको एक्चुअल मैप पे नजर आएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए हाथी के दिखाने के और खाने के दांत यहाँ पे चर्चा की है यहाँ पे ऑक्सी, क्योंकि इतनी टीमें रिफाइनरी पे तो मैं भी यहाँ पे अपेक्षा नहीं करा, बट कुछ टीमें अवश्य जाएंगी। 25 सेकंड से भी कम का समय आगाज होने में। जी हाँ, ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है। हर कोई कुर्सी की पेटी बांध के बैठा है, हर एक को पता है कि कितना बड़ा दिन रहने वाला है आज के दिन ये फ्री फायर मैक्स में, क्योंकि इस तेज फ्री फायर मैक्स इंडिया कप फॉल 2026 का शायद बहुत अहम तरीन ग्रुप है। ऐसा भी हो सकता है कि आज जो टीमें क्वालिफाई करें इनमें से कोई चैंपियन भी बन सकता है अंत में जाके। तो सबकी पहली निगाहें यहाँ पे तैयार है। क्या आप लोग तैयार है? मैं और ऑक्सीजन भी पूरी तरीके से रेडी। जी हाँ गाइस, इंतजार की घड़ी को खत्म करते हैं। पायलट साहब प्लेन को उड़ा चुके हैं, सीधा चलेंगे कालाहारी में और देखेंगे इस रणभूमि में कौन सी टीम विजय होती और कौन यहाँ पे परास्त। सीधा चलेंगे और इसी के साथ देखेंगे ड्रॉप क्लैश कहां पे लिए जा रहे हैं टीमों बिल्कुल वहां पे नहीं गए। सेंटा कटरीना पे यहाँ पे मौजूद है टीम देसी, और इसके अलावा रैकर्स को आप देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड स्टोन रिज जो है वो इस वक्त SEA के कब्जे में है, एंड ऑन द अदर साइड यहाँ पे आईक्यू OGX TSG जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अकेले नजर आ रही है, और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई इनको मशक्कत करनी पड़ेगी। रेजरेक्शन की ओर से यहाँ पे शुरुआत ली गई है। ऑक्सीजन यहाँ पे बैक टू बैक 2 एलिमिनेशन कप्तान सिद्धार्थ दिला देंगे, और अच्छी कप्तानी सिद्धार्थ द्वारा जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि शुरुआती 2 एलिमिनेशन दर्शाते हुए यहाँ पे प्रेडिक्शन வந்து மாத்தறான் இருக்க ரெசரக்ஷன் வைக்கலாம்னு இருக்க ரெசரக்ஷன் வைக்கலாம்னு இருக்க ग्रैब करने की मंशा, फैज को घुटनों पे लाते हुए टॉप 6 சொல்டா ரெசரக்ஷன் ரேக்கர்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் CDZ TSG 4am SMR இந்த டீமா இருக்கும் பார்க்கலாம் சரியா। யார் யாரனா गाइस டாப் 4 வந்து இங்க பாரு இன்னி டாப் 4 प्रेडिक्शन है, அது டாப் 6 प्रेडिक्शन என்னன்னா ரேக்கர்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ரெசரக்ஷன் CDZ TSG அப்புறம் 4am SMR
और क्या वो हमला कर पाएंगे यहाँ पे, उसके साथ देखने वाली बात बिल्कुल रहने वाली है। VSS में उनके हाथ में होने वाली जो कि मिड रेंज पर और शॉर्ट रेंज पर उनको मदद देने वाली है, पर उनके पास केवल एक ग्लूअल है और उन्होंने सामने वाले के ग्लूअल तोड़ दिया है। वो अगर आप लोग रैकर्स के किट को देखोगे उनके पास मैक 10 सिंगल चिप, रैकर्स के ऊपर तगड़ा प्रहार, 2 खिलाड़ियों को धराशायी किया गया है। देसी ई स्पोर्ट्स के पास 2 एलिमिनेशन आ जाएगा। वेदन को जस्ट यहाँ पे मैच में रिवाइवल मिला है, लेकिन ट्राई नेक्स्ट उनके पास यहाँ पे रहने वाला है और क्या कुछ वो करामाती दिखाएंगे यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी। पर चलिए इसी के साथ फ्रेक आ जाएंगे उनके साथी, उनके मित्र, उनके टीममेट यहाँ पे कैसी के गठबंधन के साथ। जी हाँ, इलेक्ट्रोथेरेपी यूज करते हुए खिलाड़ी आपको नजर आ जाएंगे सामने। ये कंफाइनमेंट का एरिया है और एक ऐसा एरिया है रॉकी जहां पे कलाहारी के प्रेडिक्शन हरी ब्रो ऑलमोस्ट कंफर्म ஆகும் பாரு அப்படியே பாப் மே ஏனா மத்த டீம் எல்லாம் பூசா பாக்குற மாதிரி இருக்குது சோ இல்ல வேற எதனா டீம் இல்ல சர்ப்ரைஸ் குடுக்குறாங்களான்னு பார்க்கலாம்। मतलब शुरुआत रिजरेक्शन का भी रिजरेक्शन रैकर्स स्पोर्ट्स 4 AM में सीटीज எல்லாம் பயங்கரமான டீம், सीटीज நல்ல டீம் वाली है देसी ई स्पोर्ट्स। पर उनके अलावा क्लासा ई स्पोर्ट्स आ चुकी है काउंसिल हॉल में, उनके सामने रैकर्स के वो इकलौते खिलाड़ी स्काई ई स्पोर्ट्स के भी आपको फैंस नजर आने वाले। यहाँ पे क्या कुछ करेंगे बुली और कौशिक, उनके साथ क्लॉज और शुभ। जी बिल्कुल, इस वक्त तो मारना எனக்கு தெரிஞ்சு ரேக்கர்ஸ் எல்லாம் மாறறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, மத்தபடி எதுவும் மாறாதுன்னு நினைக்கிறேன்। कौशिक मलिक एक मारना रैकर्स मारறதுக்கு தான் वाइप और फैज को மத்தபடி प्रेडिक्शन पक्कावा இருக்கும் இன்னைக்கு। ओ फैज ने यहां पे पलटवार कर दिया ऑक्सीजन। इसी के साथ कौशिक मलिक को एलिमिनेट। ब्रो कनाडी போடுங்க ब्रो, कनाडीया लज्जा में थोड़ी सी आप देख कनाडी போடா தூக்க வர மாதிரி ஆயிருது। ये क्लॉस जाके अपने कप्तान को रिवाइव अवश्य देंगे। देखिए डबल स्नाइपर की रणनीति के साथ ये मैच कनाडी போடுவா, 2 स्नाइपर नजर आ रहे हैं मुझे और इसी के साथ एलिमिनेशंस की आप अगर बात करें झड़ी लगा दी है यहाँ पे सारी टीमों ने। क्लज्जा का मुकाबला स्काईलॉर्ड ई-स्पोर्ट्स से होता है, फैंस की ओर से ड्रैग लगाने की कोशिश नाकामयाब रही और शुभ ने एक और एलिमिनेशन अपनी टीम क्लज्जा ई-स्पोर्ट्स के खाते में जोड़ दिया है। 8 பிட் தக்க இப்படி தான கொண்டிருப்பாரு, 8 பிட் அவர் 8 பிட்ல ஒருத்தர் கொண்டிருப்பாரு, கோல்டி பாய் தான, கோல்டி பாய் இப்படி தான் இருப்பாரு। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हलचल काफी ज्यादा कमांड पोस्ट की तरफ हो रही है, जिसके कारणवश रेजरेक्शन के खाते में अब एक नहीं 7 एलिमिनेशन आ चुके हैं। ஆனா அழகா இருக்கனா நீ, நம்ம என்னைக்குமே அழகா ஆயிட்டே வருமா। कई टीमें दम तोड़ चुके हैं इससे पहले। ஆமா ब्रो எப்ப ஃப்ளவர் ஓட்டி பண்ணாங்க कस्टमर மாதிரி இருக்கீங்களா। लगता है कि यहां पे आपको सोच समझकर ही फाइट पिकअप करनी पड़ेगी क्योंकि अब कमांड पोस्ट के बाहर की ओर प्रस्थान நான் என்கேஜி அப்ப ப்ளே பண்ணுவோம்। என்கேஜி வந்து இன்னைக்கு நைட் ஒரு மேட்ச் ப்ளே பண்றாங்களாமா, வாட்ச் பார்ட்டி இன்னும் பர்மிஷன் வரல, அப்படி வந்துச்சுனா கிக்ல லைவ் இருக்கும், ஒய்டில போட முடியாது அது, அதனால கிக்குக்கு வந்துருங்க। यहां पे रिवाइव दे पाएंगे मुझे लगता है। एनकेजी स्पोर्ट्स प्लेड एज टीम, आई वॉच देयर गेम प्ले मनी वाईटी चैनल அடுத்த வாரம் इस वक्त रुक मोड़ लिया इस टीम ने। ए गाइस கண்ணாடி மாஸ்டா இருக்கு, ஆமா இருக்குங்களா, அந்த ஜுவல்ஸ் இருந்தா சென்ட் பண்ணி விடுங்க गाइस, ஜுவல்ஸ் இருக்கீங்களா சென்ட் பண்ணி விடுங்க। एलिमिनेशन उनके पास है कि यहां पे काफी ज्यादा अगर आप देखें फोकस भी नजर आ रहा है। मारना मास कनाडी என்ன டிராஃபிக் இதுல இருக்க ரெசரக்ஷன்ல இருக்க। ஆமா ரெசரக்ஷன் தான்டா, அரே K9 ஸ்போர்ட்ஸ் தான் மொத்தமா வெளிய வந்துட்டாங்களே, बरकरार रख रहे हैं। दूसरी तरफ அந்த ரெசரக்ஷன் का टीम இருக்காங்க, काफी उम्मीदें होंगी आज फैंस को। बारे ना சொன்னதா 4A மட்டும் கீழ இருக்காங்க और TEZ सबकी खोपड़ी खोलते इनका कहीं ना कहीं नारा रहता है, लेकिन आज सिर्फ खोपड़ी नहीं खोलना है, आज तो मुझे लग रहा है खोपड़ी का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा क्योंकि कई टीम अगर आप देखें एलिमिनेशन कर रही हैं क्योंकि किरण ब्रो थैंक्स फॉर चाय टोस्ट मलेश सारी की सारी टीमें अभी बरकरार हैं। लेकिन अगर मैं अभी से मैच का रुझान देखूं ऑक्सीजन मलेश ब्रो वाह ओके मलेश ब्रो या 18 से ज्यादा अंक होंगे इस मैच के समापन में। एफएल एलिमिनेटर बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा और उसी के साथ देखिए लगभग यहाँ पे 5 है, लेकिन अभी तक कोई भी टीम एलिमिनेट नहीं हुई है। यहाँ पे 11 टीम इस मुकाबले के अंदर, 43 सर्वाइवर्स इस गेम में। ये शुरुआती मुकाबला कलाहारी का, जहाँ पे शुरुआत में हमने काफी सारे एलिमिनेशंस देखे, काफी सारे फाइट्स हमने विटनेस किया। और चलिए अब आगे देखते हैं क्या नजर आएगा। बात करेंगे 4A स्पोर्ट्स के बारे में, तो 3 एलिमिनेशन को मिल चुका है। उसके साथ देखिए यहाँ पे SLE इस मुकाबले से एलिमिनेट हो चुकी है। वही बात करें यहाँ पे टीम देसी स्पोर्ट्स के बारे में, तो उन्होंने अपने खिलाड़ी को बहुत ही बेहतरीन लेकिन 4A स्पोर्ट्स 3 एलिमिनेशंस के साथ देखिए वो ट्रक का इस्तेमाल करते हुए पार्थ टीम ला இருக்க சான்ஸ் இருக்கா உங்க டீம்ல? सामने यहाँ पे डिफॉल्ट होने वाला है। नो ब्रो जोनाथन ब्रो ऑलरेडी व्हीकल बूस्टर और அடுத்த ஆகஸ்ட் வரைக்கும் நாங்க எதுவும் மாத்த முடியாது ब्रो, प्लेयर्स चेंज பண்ண उसको मैच करा जा रहा है। यहाँ पे ट्रांसफर विंडो ओपन होने के बाद आएंगे काउंसिल हॉल के एरिया में, जहाँ पे आपको टीम कियोस नजर आने वाली। इस कियोस में उनके सामने है क्लज्जा ई स्पोर्ट्स सिटी कोल
क्वालिफाइड टीम फ्रॉम कोलकाता। स्केरी उनके सामने, शुभ के साथ ये 1v1 का बैटल बन सकता है, जहां पे क्लजा स्पोर्ट्स का पर्दा बिल्कुल भारी रहने वाला है। उनके पास टीममेट के लिए ज्यादा में से बढ़त होगी और वो हमला करते हुए जाएंगे जरूर। शुभ के हाथ में यहाँ पे रहने वाली है ट्रोगॉन, वो हमला करते हुए आगे बढ़ते हुए उनको नॉक कर दिया मैक्स 7 के साथ। और ये बेहतरीन बहुमूल्य 10 एलिमिनेशन, अब उसको 11 में गिन लीजिए, मिल जाएगा क्लजा स्पोर्ट्स को क्लॉज। यहाँ पे 5 ग्लूअल्स अभी तक ब्रेक कर चुके हैं, ग्लूअल ब्रेकर बनते हुए इस मुकाबले के। एंड उसी के साथ शुभ 25 एक बेहतरीन खिलाड़ी अपनी टीम के 5 एलिमिनेशन के साथ ये खेलते हुए जाते हैं और काफी दमदार, काफी एग्रेसिव इनका प्ले स्टाइल रहता है। कमेंट लेटर से पैसा अरे अपडेट आ रहा है ब्रो, वहां पे गया था और इनसे मेरी परिचिति हुई थी, अरे अपडेट போடா बात करा था। इनके कप्तान कौशिक मलिक का ये कहना है कि एग्रेशन के साथ नहीं खेलते हैं, हमेशा पुश करते हैं और फाइट में कमिटमेंट लेते हैं। आज के दिन इनकी वो रणनीति कितनी काम आएगी, क्या वो टॉप 6 में क्वालिफाई कर पाएंगे इस टीम सिनर्जी के साथ, वो देखने वाली बात है। क्योंकि आई बिलीव कौशिक मलिक बहुत पुराने खिलाड़ी है और उनको बहुत ही यहाँ पे देखिए அந்த மாதிரி ஜொல்ஸ் உங்களால அனுப்ப முடியும், ஃப்ரீயா இருக்கும், சென்ட் பண்ணி விட்டுருங்க। ஒரு சிலருக்கு 1000 இருக்கும், ஒரு சிலருக்கு 50 இருக்கும், ஒரு சிலருக்கு 1050 இருக்கும்। கமெண்ட் பாக்ஸ் பக்கத்துல இருக்கும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா அது காட்டும், சப்ஸ்கிரைब பண்ணிருங்க। करते हुए इनिशियल फाइट्स में आप देखिए रिजरेक्शन 7 एलिमिनेशन निकाल चुकी है, कर 7 एलिमिनेशन निकाल चुकी है। क्लजा स्पोर्ट्स थैंक यू सामफ्रास ब्रो, केविन ब्रो वणक्कम वांग, TEZ 6 एलिमिनेशंस के साथ, जहां पे आपको कृष्ण नजर आने वाले हैं, रोनित नजर आने वाले हैं, आयुष और अर्जुन। இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் பக்கத்துல ஒரு gift box காட்டும், இல்லனா இதுலயே गिफ्ट्स இருக்கும்। मैं यही होप करूंगा कि आईको TEZ लाफिंग डिस्को नेचुरल गेम में फोकस करे और थोड़ा सा एग्रेशन के साथ आगे बढ़े। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 एलिमिनेशन यहाँ पे आईकू OGX TSG के सिक्योर हैं और एजिस पे खेल रहे हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल एजिस पे खेला जा रहा है। थैंक यू सो मच चान ब्रो, सनशाइन को ரொம்ப நன்றி। फायदा होता है कि आप जब गेट अंडर ब्रो थैंक यू सो मच, तो आपको कई एलिमिनेशन जो टीम में रिवाइव होके आती हैं या बाहर से लेट रोटेशन लगाती हैं, उनके एलिमिनेशंस आप ग्रैब कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आईकू OGX TSG मुझे लगता है ऐसी रणनीति के तहत शायद मैच प्रति मैच 15 से 18 पॉइंट जोड़ने की सोच रहे, जो कि एक सही नीति है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजरेक्शन शुरुआत काफी धाकड़ लगाई थी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल अगर आप देखें सर्कल के एज में जाने का फैसला इन्होंने भी किया था। इस वक्त हर्ष को मैं देख पा रहा हूँ कप्तान रोनित के ऊपर ये चेष्टा कर रहे थे शॉट लगाने की, लेकिन पीछे से आए आयुष और उनके इरादों को ध्वस्त करते हुए कहना पड़ेगा यहाँ पे कि जिस यहाँ पे आईकू OGX TSG मैदान मैच நல்லா இருக்கு ப்ரோ, இந்த குரூப் கொஞ்சம் பயங்கரமான குரூப், தமிழ் டீம் இல்லனாலும் பயங்கரமா இருக்கு இந்த மேட்ச் பாருங்க। तो किस तरीके से हम शुरुआत करेंगे, लेकिन टेबल टॉप के एक और प्रबल दावेदार क्लजा ई-स्पोर्ट्स से अनडाउटेडली जिस तरीके से आप बता रहे थे, कौशिक मलिक ने बताया कि अपनी टीम के साथ अग्रेशन के साथ खेलने के लिए जाने जाते हैं, वो चीज यहाँ पे भी नजर आता हुआ। बिल्कुल एलिमिनेशन के स्वरूप 1 डजन एलिमिनेशन 12 एलिमिनेशन निकाल कर बैठी है क्लजा, आसपास कोई उनके दिखाई नहीं पड़ रहा है अभी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये मैच काफी संवेदनशील होता हुआ करीबन 10 मिनट के करीब का खेल हो चुका है और 11 टीमें अभी காடல் பிரைம் ப்ரோ வாங்க। इसका मतलब है பிரைம் ப்ரோ நீங்கனால கால் லைக் நீ சப்போர்ट பண்ண மாட்டேன்னு கேட்டது। ऐसी परिस्थिति में बहती गंगा में कई टीमें जो गेट कीप करती हैं उनको एलिमिनेशन प्राप्त होंगे। एक बार फिर से सैडिस के बाद सैडिस ने वहां पे कहीं ना कहीं पहला खिलाड़ी नॉक देखते हुए फ्लैश फ्रीज डाल दिया और यहाँ पे सैडिस का अचानक से रश करना कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हुआ था। लेकिन उनके स्क्वाड मेट सही समय पे आते हैं, अपने खिलाड़ी को तो बचाएंगे ही और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि आईक्यू को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर ப்ரோ இங்க பாரு, இப்ப 5 விரல் இருக்குதா, 5 விரல்ல ஒரு விரலுக்கு அடிபட்டுருச்சு ஓகேவா, அதுக்கோசரம் நம்ம என்ன கையவா வெட்டிக்க முடியும்? सिर्फ अगर देखें अगर आर्सन चेंबर को புரியலையா எனக்கு? तो उसमें கால் லைக் நான் எப்பவே சப்போர்ட் பண்ணுவேன் ப்ரோ, लूट का भी लूट उठा सकते கால் லைக்கு ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து சப்போர்ட் பண்ணது நானா தான் இருப்பேன், கடைசி வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்றது நானா தான் இருப்பேன், கவலைப்படாம இருங்க பிரைம் ப்ரோ, रोटेशंस भी इनकी எப்பவும் நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் जो है बस जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो आर्सेनल चेंबर जीतना इस वक्त एसईए और स्काईलॉर्ड ई-स्पोर्ट्स दोनों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। नोबिटा पे टीम गार्डल मल्टीप्लेयर यार அது ஆகஸ்ட் தான் தெரியும்। स्टाइल रॉकी भाई बिल्कुल सही कहा यहाँ पे, लेकिन उसी के साथ स्काईलॉर्ड ई-स्पोर्ट्स देखिए 2 मणि को मिस பண்றாங்க यहाँ पे 4 एलिमिनेशन लेके बैठे हुए हैं। नजर दीजिए एक बार फैज पे आप किकला लाइव இருக்கனே अकेले 3 एलिमिनेशन इंडिविजुअली लेके बैठे हुए अपनी टीम से। किकला வந்தீங்கன்னா மத்தியானம் வருவேன் இருப்பேன், நான் என்ன பண்றது? अपनी टीम के लिए दिया இது நம்ம டைமிங் चेंज பண்ணி ஆகணும், ஈவினிங் வரணும்ல। बात करेंगे कियोस यहाँ पे
तो आपको यहाँ पे किशु आर्मो नजर आने वाले कंपाउंड को होल्ड அப்ப நான் करते ஃபைட்டுக்கு வரேன் सामने से मैं देख வாங்க सकता हूँ ஹரியனா Resurrection கன்னடா Esports आगे டீம் बढ़ते हुए இருக்கு எஸ்எம்ஆர் धीरे-धीरे हल्के கேமிங் कदम के साथ यहाँ पे ज़यान सिद्धार्थ समथिंग यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं लेकिन काफी आपको नजर आने वाले इस टीम அப்படியா நல்லா ஆடுறாங்க நல்லா ஆடுவாங்க அவங்க एलिमिनेशन कुल मिला के रहने वाला है और ज़यान कोशिश कर रहे हैं कि सामने कुछ प्लेयर्स को वो स्पॉट कर पाए थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाल पाए उसके बाद हमला करेंगे नहीं तो यहाँ पर वो पिक लेंगे तो उनकी जो लोकेशन है वो काफी ज्यादा रिवील हो जाएगा और फिर उनको स्नाइपिंग करने का मौका नहीं मिलेगा सामने से आर्मो या फिर किशु जो असोल्टर से ये आपको कुछ ப்ரோ இங்க பாருங்க बनाते हुए नजर आ सकते हैं टीम कियोस 5 एलिमिनेशन ப்ரோ இங்க பாருங்க நிறைய பேர் வந்து மத்தியானம் லைவ் வரதுலயே நினைச்சிக்கிறீங்க சரியா இல்ல நான் வந்து கிக்ல லைவ் போடுறேன் ஏன்னா இங்க வந்து நிறைய பேர் இப்ப ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்திருப்பீங்க நிறைய பேர் இப்ப காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க அதனாலயும் வாட்ச் பார்ட்டி வந்து 5:30 தான் ஆரம்பிக்குது அதனாலதான் நான் வந்து டைமிங் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ நம்மளோடதுக்கும் டீமோட நல்லதுக்கும் அதாவது எப்படி சொல்றது வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணி ஆகணும் ஓகேவா அதனால வந்து நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாத்திட்டேன் ஸோ வந்து கிக்கில் லைவ் இருக்கும் மத்தியானம் 12 மணிக்கே வந்துடுவேன் 12 மணிக்கு வந்து 4:30 வரைக்கும் இருப்பேன் ஓகேவா ஸோ அதோட லிங்க் வந்து கமெண்ட்ல பின் பண்ணிக்கிது ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகே लाइव विलिन फील पड़ाएंगे अंगिर पर थी बाकी मौजूदगी और उसी के साथ एक शॉकिंग एलिमिनेशन रॉकी जी हाँ देसी स्पोर्ट्स इस मुकाबले से बाहर हो चुकी है और उसी के साथ आईक्यू ओजीटीएस अपने खाते में 11 एलिमिनेशन निकाल चुकी है आईक्यू आयुष यहाँ पे 4 एलिमिनेशंस के साथ में अर्जुन सपोर्ट पड़ रहा है ये आईक्यू क्रिश 2 एलिमिनेशन के साथ और टीम के कप्तान आईजीएल मास्टरमाइंड और यहाँ पे उनके पास भी काफी अच्छे खासे एलिमिनेशन आता हुआ लेकिन एसएमआर स्पोर्ट्स को देखिए डीवीजी नॉक हुए थे वापस वो हील अप किया जाएगा वो भी नॉक हो चुके हैं यहाँ पे संकेत आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आपको नॉक निकालना है वहां पे जी नहीं संकेत भी नॉक हो जाएंगे सामने से उस टीम का इसी के साथ क्लच स्पोर्ट्स ये एलिमिनेट होते हुए थोड़ी बहुत यहाँ पे गलती जरूर हुई लेकिन आने वाले वो அதனால அவங்க சப்போர்ட் பண்றாங்க अच्छी तरीके से वो खेलते हुए जाए बट इस वक्त यहाँ पे इस मुकाबले में रॉकी 8 टीम और 31 यहाँ पे सर्वाइवर्स रहने वाले हैं जी बिल्कुल என்ன கமெண்ட் சொல்லு என்னன்னு சொல்லு கமாண்ட் பண்ணுவாங்க நான் விமலோட சாட்ல எல்லாம் விமலும் பேசிட்டு இருப்பாங்க ஓ விமலோட ஃபேன்ஸ் அவங்களா ஆமா ओ माय गॉड ब्रो आपस में प्रतिस्पर्धा करने दे रहे हैं ऑक्सीजन और उसके बाद वहां पे ये शायद एक बार में हमला करेंगे रिजरेक्शन की ओर से ஆளை சும்மாவே குசி குண்டி தூக்கி அடிக்கும் मिड गेम में शुरुआत की गई है कुछ एलिमिनेशंस उनके சொல்லவே வேணாம் लेकिन என்னடா குடுத்துறாங்களாடா यहां पे सिद्धार्थ और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है रिजरेक्शन की ओर से யாருன்னு கேட்டா நரிக்கூட்டம் काफी दूर रहने वाली है दूसरी तरफ आप देख सकते हैं स्कैरी रिवाइव देने की चेष्टा करते हुए यहां पे आर्मो யாருனே தெரியல அப்போ நம்மளைய कुछ कमाल करके दिखाना पड़ेगा हम चूका है नरिக்கூட்டம் जब मैं सेलेंडर का ज्यादा प्लस था ये नहीं आएगी सिद्धार्थ நம்மளே ப்ரொஃபைல கார் பண்ணல निकाल चुके हैं एक बार அவன் குடுகல நானே எடுத்து போட்டு போந்துக்குவேன் लगाने की कोशिश करेंगे दाबे के पास मौका दाबीत ने यहां पे पहुंचाई एक और एलिमिनेशन अपनी टीम को सिद्धार्थ ने दिलाई सिद्धार्थ के पास मौका आर्मो को यहां पे नॉकआउट करने से पहले some players are using gun skin bro அது gun skin மட்டும் ஸ்கின் மட்டும் ஷோ ஆகும் பவர் அட்ரிபியூஷன் வந்து ஆஃப்ல தான் இருக்கும் ஸ்கின் அப்படி இருக்கும் பட் அட்ரிபியூஷன் ஆஃப்ல தான் இருக்கும் அதோட பவர் இருக்காது ஆட்டி இதான்டா ஓ ராக்கர்ஸ் यहां पे चोक कर गई टीम 4am शुरुआती नॉकआउट्स के बावजूद भी यहां पे அவனே மேல அப்படியே கொன்றாங்கடா யசியே इस चूक को बिल्कुल फायदे के स्वरूप कैपिटलाइज करते हुए यहां पे सीरियस ऑफ किड ये उள்ள போய் முடிச்சிடுறாங்க நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு हो चुके हैं रैकर्स के और अच्छा परमानेंट कवर तो नहीं कहूंगा लेकिन कम से कम इस घर की आड़ में थे अडिंग वांगा ससी ब्रो अडिंग और कहीं ना कहीं सेंटर में अगर एक बॉर्डर का कवर मिल जाए तो ये सोने पे யாருக்கு போன எஸ்எம்ஆருக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா எஸ்எம்ஆருக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் பாப்போம் का भारी दिखाई पड़ता हुआ यहाँ पे விமலோட ஃபேன்ஸ் போலாம் பார்க்கலாம் அந்த மேட்ச் பையா लेकिन यहाँ पे 6 टीम அண்ணா இது என்ன மேட்ச் என்ன டீம் ஒண்ணுமே புரியல देखो मैं संभव कर पाएंगे 13 एलिमिनेशन उनके पास मिल चुका है ओपन एरिया जोन है लेकिन आईक्यू और रैंगोटैन टीएसजी उनके क्रोनो शील्ड्स उनको यहाँ पे इफेक्टिव जो थ्रेबल्स आ रहे हैं उससे बचाता हुआ लेकिन एक मिनट रन होगा वहां पे ओ डाउन है बहुत ज्यादा डैमेज
पे आ चुके हैं, घात लगाया उनके ऊपर सामने एसएमआर ईस्पोर्ट्स चुनौती है यहाँ पे आईक्यू ओरांगुटान टीएसजी के लिए दी बीच को यहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा। इस ग्रेनेड्स और ग्लू मेल्टर्स के साथ रूल्स रहा लाने की कोशिश अभी तक 3 आईक्यू ओरांगुटान टीएसजी ने 2 सेट गेमर्स ने जला मुटांगा टीम और 13 खिलाड़ी अभी भी इस मुकाबले में सरवाइव करते हुए। देखिए वहां पे रोनित बैक टू बैक अपने मशीन गन्स के साथ यहाँ पे M249X ग्लूअर्स को डिस्ट्रॉय करते हुए बैठ के वो बेहतरीन यहाँ पे फायर पावर प्रोड्यूस कर रहे ग्लूअर्स को तोड़ते हुए ओह माय गॉड ब्रो मिनट क्या जाएगा और आईक्यू और ओरांगुटान टीएसजी के रोनित उनके टीममेट्स को नेस्तनाबूद कर चुकी है। 4 टीम 10 खिलाड़ियों की इस मुकाबले के अंदर आईक्यू ओरांगुटान पोजीशनिंग काफी बढ़िया लगता हुआ लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती उन्होंने एक को रिवाइवल भी दे दिया। इसका मतलब यहाँ पे ஆனா டவுன் ரேக்கர்ஸ்ல கிட் டவுன் शक्ति प्रदर्शन से रैकर्स ईस्पोर्ट्स आगे बढ़ते அவர் தபிக்கு வேற காரியம் தபிக்கு தாவி தாவி அடிப்பாரு ப்ரோ 17 एलिमिनेशन यहां पे उनकी दावेदारी साबित करता हुआ दिखाता हुआ कि किस रूप को धारण करे रैकर्स ईस्पोर्ट्स इस मुकाबले में ஐயோ एक बार फिर से पलड़ा यहां पे அவ்வளவுதான் அபினவ் பொசிஷன் புடிச்சு கொண்டாரு கிட்னே की भी अगर मैं चर्चा करूं तो ரைட் டேபிள் ஸ்கோர்ல அவங்க தான் போடணும் நான் எப்படி வரேன் दूर हो जाएगा आईक्यू और जीएक्सटीएसजी मैं तो समझता हूं कि इस मुकाबले को जीतने के प्रबल दावेदार अब बनते हैं। मुस्तांग எனக்கு தெரியும் मुस्तांग कोशिश करेंगे रेजरेक्शन से लड़ते हुए யாரி போ இந்த மாதிரி रेजरेक्शन ரெண்டு பேர் இருக்காங்க எடுப்பாங்களா कोई आईक्यू जीएक्सटीएसजी के पास परमानेंट कवर रहेगी तो उसका फायदा उनको अवश्य प्राप्त होगा। அவ்வளவுதான் பொசிஷன் புடிச்சா गए हैं और उसके अलावा इनके पास M249 भी रहने वाली है। रेजरेक्शन अடிறாங்க ஒரு ரெண்டு முடிச்சாங்க फायदा जरूर वो அவ்வளவுதான் 1v2 தான் ஈஸி ये देखिए इकलौता அவ்வளவுதான்டா ரோனித் முடிச்சாரா पहले मुकाबले में टीएसजी ओपी बोलते टीएसजी लाइन से सबकी खोपड़ी खोलते। जी हां गाइस बोलते हैं ना आईक्यू जीएक्सटीएसजी जो उनके फैंस ने ठानी थी जो ओपी पोड़ेंगे ओपी छोड़ेंगे वो करके दिखाया है द बुया 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 भाई आईक्यू बोलो बोलते ரெண்டு ஒரே மாதிரி और कहना पड़ेगा रैकर्स का पलड़ा भारी था टीएसजी अவ்வளவுதான் अपनी रैकर्स கிடைக்கல कप्तानी से रोनित ने जिस हिसाब से श्रिंक शिफ्टर को पहले प्रेडिक्ट करा और अपने खिलाड़ियों की पोजीशनिंग ली वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है गेम को एक तरफा आईक्यू जीएक्सटीएसजी உங்கள மாதிரி எல்லாரும் ஈஸ்போர்ட்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ என்னமோ நிறைய டீம்ஸ் வரும் அட்லீஸ்ட் வாட்ச் பார்ட்டி போட்டா கூட அவங்க ஃபேன்ஸ்க்கு எல்லாம் தெரியும்। दमदार शुरुआत और जितनी प्रशंसा आप करना चाहेंगे उतनी कम ப்ரோ நாங்க இதுக்கு பர்மிஷன் வாங்கி இருக்கோம் போறோம் பட் நிறைய பேருக்கு பர்மிஷன் தராம இருப்பாங்க நிறைய பேருக்கு ஈஸ்போர்ட்ஸ் மேல இன்ட்ரஸ்ட் இல்லாம இருக்கலாம் நிறைய பேர் வந்தமா சம்பாதிச்சமா போனமாட்டு கூட இருக்கலாம் அது அவங்க விருப்பம் நம்ம அது எதுவும் சொல்ல முடியாது। இந்த மாதிரி நீங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அப்பப்போ ரெண்டு தாக்குதல போட்டு முடிச்சிருவோம் நான் हालांकि यहां पे आखिर में बस 3 थैंक्स फॉर लेट मी कुक लियोन ब्रो कर दिखाया इस मुकाबले के अंदर एक बढ़िया शुरुआत मिल चुका है कहीं ना कहीं यहां पर से आईक्यू ओरांगुटान அப்பப்ப என்கிட்ட இந்த மாதிரி கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு அடி போட்டுருவோம் நான் அவங்களுக்கு அவ்வளவு அடி போட்டு முடிச்சிருவேன் சிம்பிளா முடிச்சிருவேன்। आपके इतने एलिमिनेशन होने चाहिए इतने வா 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 பாக்கெட் நரப்பிட்டு போன மாதிரி இருக்கோனே சும்மா யூடியூப் அப்ப பாருங்க இப்போ நான் நார்மல் லைவ் போட்டா எனக்கு வர மாட்டேங்கறாங்க வாட்ச் பார்ட்டி போட்டா வந்து பாக்குறாங்க புரியல நம்மளுக்கெல்லாம் ग्रुप ऑफ डेथ विटनेस कर रहे हैं इससे मजबूत ग्रुप शायद ही हम प्लेन्स में देखेंगे इस एडिशन में तो मुझे ऐसा लगता है कि ये நான் சாவடிச்சிரோம் சத்தி ப்ரோ சாவடிச்சிரோம் நான் அவர்ல அண்ணன் தம்பியா பழகிட்டு இருக்கோம் आप शुरुआत ஒத்தின்னு இருங்க கொஞ்ச நேரம் नतीजा भी लाकर दिखाया நான் பொதுவா சொன்னேன் चुकी है बुया टीम से நீங்க பர்టిక్యులரா அடி வாங்க வைக்க பாக்காதீங்க என்ன कप्तान रोनित की उम्दा कप्तानी A12 for अल्वारो அத அப்புறம் தான் அப்படியே இன்ஸ்டால போட்டு வர அடிய போட்டு போறேன் ஆமா ஆமா கரெக்ட் கரெக்ட் ப்ரோ இது இங்க அதான் பிரச்சனையே அதானே आयुष अर्जुन सचिन मुंगारे AKA आईक्यू अर्जुन என்ன ரிவல்ஸ் ப்ரோ பிவி कुल मिला के 16 एलिमिनेशन எல்லாரையும் ஒரு அடி यानी कि सत्य ने 28 अंक लेकर जाती है ये टीम एक ही मैच से और पहले ही मैच में 28 अंक का मतलब है कि एक सदी हुई शुरुआत
कट ऑफ के लिए यहाँ पे आज अच्छी खासी मुझे ऐसा लगता है प्रतिस्पर्धा होने वाली है। Arena only few people will watch यहाँ पे both Free Fire and BGMA official tournament right now in our channel लगभग 10 टीमें बची थी। they will understand more about esports किस हद तक आज का दिन मुश्किल होने वाला है। Enquiry में நம்மளுக்கு அதனால தான் பார்க்கறது कुटान TSG के कप्तान रोनित रहेंगे। 6 एलिमिनेशन இதுக்கு மேல ஸ்ட்ரீம் லைவ் delete பண்ணா இல்லையா இருக்கே யார் delete பண்ணா और M249 से कहर बरपाई है। He is the நடுவுல மைக் ஆஃப் ஆயிடுச்சா कहना पड़ेगा ஐயோ रोनित यहाँ पे अपने आप को साबित मयूर लगेगी। मैं बता दूं ये अपने आप में ये तीसरा माइक इधर मैक्स इंडिया कप खेल रहे हैं, तीसरा एडिशन और रियन ब्रो अलग टीम है इनका नंबर्स और तीनों टीमों में इन्होंने नंबर्स लीक है नेतृत्व नंबर। इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है कि हर टीम में इतना जबरदस्त प्रदर्शन। 28 अंक लेकर जाती आईको ओजीएक्स टीएसजी रैकर्स भी 28 अंक ஒண்ணுமே கேக்கலையா ஐயோ நல்ல ஒரு வாக்கியம் சொன்னனே யார ப்ரோ தாகரின் கேட்டதுக்கு என்னைய ரிவல்ஸ் ப்ரோ பிவிஎஸ் ப்ரோ தவறுன்னு சொன்னனே கேக்கலையா அது உங்களுக்கு स्पोर्ट्स 5 इंटेंस क्विक 3 और फ्लॉलेस स्पोर्ट्स का अरे கடவுளே तो सदी हुई शुरुआत देखिए मैंने एक चीज प्रेडिक्ट की थी ऑक्सीजन की करीबन 3 से 4 टीमें ऐसी होंगी जो 18 या 18 से ज्यादा स्कोर करेंगी। क्या बात है बैंग ऑन கேக்கலையா बिल्कुल இப்ப கேட்டல राइट जैसे कि आपने प्रेडिक्ट करा था वो सारी चीजें कि ऑन पेपर यहाँ पे मैच होता हुआ और उसी के साथ आईकू ओरांगुटान टीएसजी क्या बढ़िया शुरुआत है। 28 रीटेक என்ன रीटेक रैकर्स ने बहुत बढ़िया வர்றத சொல்றேன் இது வேற டேக் வேற எடுத்து புடுங்கறாங்க இதுல வேற एलिमिनेशन भी तो भर के निकाला रैकर्स ने यहाँ पे देखिए 19 एलिमिनेशन निकाला उन्होंने। और वही बात करेंगे रिजरेक्शन तो उनके पास भी 12 एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन में देखा जाए तो टॉप 5 टीम से ही बहुत बढ़िया काम कर रहा है। क्लजा स्पोर्ट्स शुरुआत ही एलिमिनेशन निकालते हुए एसएमआर यहां पे 3 ब्रो வாங்க சொல்லுங்க रिजरेक्शन ने भी आखिरी जोन में बहुत சொல்லுங்க ப்ரோ முகமதுன்னு ஏதோ வந்துச்சு रोनित की आईजी लिंक टीम का वो तालमेल ஏதோ வந்துச்சு ப்ரோ அவர் பேரு काम किया और पहला मुकाबला समाप्त होगा यहां पे उनके भूया के साथ। ஆடாடா மறந்து போயிட்டேன் ப்ரோ நாங்க கூட ஃபுல் நேமே சொன்னனே ப்ரோ कौन सी वो टॉप 3 இங்கடா இந்த ட்ரூ காலரே அக்காளி जी देखिए मेरे हिसाब से तो आईको ओजीएक्स किस्म के फॉर्म में है वो समीर अहमद हर मैच वांग सही समीर अहमद ब्रो कंसिस्टेंसी मुझे लगता है शायद इनको बेहतर बनाती है और राइट करना इस किस्म का विध्वंसक रूप ले सकते हैं हम सभी ने देखा है। वैसे आपने क्लजा देसी स्पोर्ट्स और आईको ओजीएक्स टीएसजी चुनी है उसके पीछे की वजह जानना चाहूंगा ऑक्सीजन। देखिए अभी नेक्स्ट मैप हमारा परगेटरी का आने वाला है और जितना मुझे लगता है परगेटरी में आईको ओरांगुटान टीएसजी அப்படியே இது மைக்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் போல அப்போ स्ट्रांग है। परगेटरी में इनका भूया कन्वर्जन ज्यादा है। वहीं पे क्लजा स्पोर्ट्स जब मैं सिटी क्वालिफायर से मिला था कौशिक मलिक से उन्होंने एक बात कही थी कि परगेटरी गेम हमारा स्ट्रांग रहता है शुरुआत हो या अंत हम दमदार खेलते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे परगेटरी में। तो यही रीजन अरे ना पटास प्रो मैच वाच मत பண்ணும்போது यार मैच पार्टी बनाना शुरुआत वो अच्छा करेंगे परगेटरी के मैच भला वल्लिंटन हमारे यहाँ पे प्रेफर्ड ड्रॉप स्पॉट्स की तरफ जहाँ पे देखते हैं इस परगेटरी के मुकाबले पे टीम्स कहां-कहां एनकेजी இருக்காங்க நாங்க இருந்தோம்னா एनकेजी தோல்வி அடைஞ்சிருவாங்க சொல்லிட்டு நாங்க வாக் அவுட் கொடுத்துறோம்। वो लोग ब्राजीलिया पे जाएंगे। 2 टीम जाने वाली है सेंट्रल पे 2 टीम माउंट विला पे लंबर मिल पे इकलौते सी स्पोर्ट्स और फील्ड्स के एरिया पे आपको नजर आने वाले फ्लॉलेस स्पोर्ट्स। वेल फील्ड्स काफी ओपन एरिया है वहां पे फ्लॉलेस का ड्रॉप लोकेशन रहेगा या फिर नहीं वो चर्चा करेंगे हम लोग देखेंगे। காதலுக்கு விலை இல்லை வாங்க ரிஜ்வான் ப்ரோ கிக்கில் லைவ் பாக்குற எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் வணக்கம் அரேஞ்சர் ப்ரோ வாங்க டிஎஸ்சி மரண பையாவா கரெக்ட் விட்டாங்களா रैकर्स ஜோக் பண்ணா சொட்டா டிஎஸ்சி ப்ரோ சைலண்டா ரே जी देखिए अगर मैच अपन कहता नेक्स्ट वीक नो சொல்லாம எக்ஸைட் சொல்லியா சொட்ட ऐसा लग नहीं रहा है ये ப்ரோ से भी 7 நாளோட மேட்ச் முடிஞ்சா ப்ரோ நெக்ஸ்ட் வீக் மேட்ச் அப்பனே தெரியும் மெண்டல் ப்ரோ 7 நாளோட மேட்ச் ஞாயிற்றுக்கிழமை மண்டே தான் மேட்ச் எங்களுக்கே தெரியும் அப்பனே மண்டே இல்லனா சண்டே நைட் தான் தெரியும் எங்களுக்கே। लेकिन जो बाकी की 7 टीमें से कोई बॉटम पे चल रही है उनके तो अभी सिंगल डिजिट में नंबर हैं कई टीम அப்படியே கௌரி ப்ரோ ஓகே जो है रिस्क उठाएंगे ऑक्सीजन। मुझे लगता है शायद यहां पे कौवी இல்ல ப்ரோ கவாய் கேட் 30 सेकंड के भीतर अब अगला मुकाबला கவாய் கேட்டா கரெக்ட்டாடா சொன்னா ஏன்டா கௌலி கிவ்லின் கறக்குற ஏன்டா டி கிவ்லின் பி அட்ரக்து விட்டா இவன் ஒண்ணும் படிக்கறியா தற்குறி ப்ரோ அவன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுக்காம ப்ரோ ஒரு அளவுக்கு ஆகாமனா ப்ரோ அவன் முட்டா பையன் खाते हुए आप डायरेक्ट एलिमिनेट होते हो वहां पे रिवाइव का कोई என்ன சொல்லுங்க तो யாரடா எனக்கு தெரியாடா எல்லாம் எனக்கு தெரியும்டா நீ சொல்லுவா அப்ப என்னன்னு நான் சொல்லிறேன் இப்ப நான் சொன்னத டேய் நான் சொல்லிருடா நீ அதை பார்த்து சொல்லிரு கேவலமான புத்தியாளு நீ சொல்லுவா அப்போ நீங்க சொல்லுங்க நீ சொல்லு நான் சொல்றேன் நான் சொல்ல கூடாது நீ கம்ப்யூட்டர் அந்த வார்த்தையில நான் வாயால சொல்ல கூடாதுடா பேன் பண்ணிடுவாங்கடா நீ इंडिया कप பேன் பண்ற வார்த்தை கிடையாது ப்ரோ டேய் உனக்கு புரியாதடா ரூல்ஸ் இருக்குடா ஒரு சில வார்த்தை சொல்ல கூடாதுன்னு தி லார்ஜெஸ்ட் मैप यहां पे कहा जाता है फ्री फायर मैक्स இப்படி கூட பண்ணலாம் யாருக்குடா தெரியாது ஏய் கம்ப்யூட்டர் அடே நான்
சொல்றேன்டா வாய் தவறு ப்ரோ சொல்றேன் ப்ரோ வாய் தவறு வரப்போ கமெண்ட்ஸ் की तरफ नजर आने वाली टीम अपने निर्धारित ड्रॉप लोकेशन में आगे बढ़ते हुए डिपार्चर ले चुके हैं प्लेन से और देखते हैं इस मुकाबले में शुरुआत किसका बढ़िया होता है अंत में सबसे ज्यादा एलिमिनेशन के साथ बोया कौन करता है ये आज का दूसरा मुकाबला मैंने खेलना யாரா சொன்னா கியூட்னு அவனா சொல்லுவானா அதையா யாரு ப்ரோ நீங்க பிரவீன் ப்ரோ थोड़ा सा यहाँ पे अपर ब्राजीलिया और मिड ब्राजीलिया की तरफ में गई हैं அது வேற வருண்டா அது அந்த மாதிரி தான் வேற ஏதோ ஒண்ணு அந்த மாதிரி انا வேற நான் சொல்லிட்டேன் நீ சொல்றவே नीचे गोल्फ कोर्स ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஃபிங்கர் கார்ड நீங்க சொன்னாலே தப்பா தான் இருக்கு கார்ड பண்ணி இல்லனா 700 இருக்குல சொல்லுங்க அனுப்பிடுங்க பிரதா ப்ரோ அதையா वहां पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कवाई शायद कैट कोशिश ना कर रहे थे क्यूट अपने कैट से किसी को गिराने के बाद सामने वाले ने அழகான का प्रयोग करके பூனைடா டேய் அதுக்கு பேரு தமிழ்ல சோய தமிழ்ல சொல்றா டேய் சாமி கவாய் கேட்னா எனக்கு தெரியாது அழகான பூனைன்னு நான் இதுக்கு தான் சொன்னேன் தப்பா சொல்லுவான்னு எனக்கு தெரியும் அதனால தான் நான் சொல்ல மாட்டேன் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் மைக் ட்ராப் थैंक यू so much உங்கள மாதிரி நல்ல உலகங்கள் இருக்கறங்க தான் எங்கள மாதிரி யூடியூபர்ஸ் வாழ்றாங்க आप देखे तो आयुष को जब शुरुआती दिनों में आए थे पटास प्रो स्टेटा सेमीफाइनल प्ले பண்ணுவாங்க சொல்லி नजर आ रहे हैं நான் வள்ளிட்ட आप देख सकते हैं यहां पे एसएमआर एनकेजी सपोर्ट இல்ல அதனால சப்போர்ட் பண்ணனும் மாத்த முடியாது bro பிரைண்டர் ஆல்ரெடி வேற இருக்குது மாமு ராக்கி மாமு இருக்காங்க அதனால தான் நாங்க இதல பாக்குறோம் ब्लू बॉल लगाने में काफी विलंब किया था वहां पे आयुष का डैश देखिए सीधा घुसकर कॉर्ड चलाई पहला खिलाड़ी नॉकआउट जरूर दिया लेकिन एलिमिनेशन सिक्योर नहीं कर पाए बहुत बड़ी चूक हुई है वहां पे मुझे ऐसा लगता है மூணு மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்திக்கு போல விடுங்க ICOGX TSG देखिए इस वक्त तो आपके पास एलिमिनेशन और पहले मैच से पॉइंट्स भी काफी है लेकिन मैच पागलाम ब्रो தேவலாம் பேசாம இருந்தா சைலண்டா कह सकता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ सकता है सामने डेफिनेटली एक लेसर एक्सपीरियंस टीम है लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा खतरा यही होगा कि आप ब्राजीलिया के टेरिटरी पे सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे और ऊपर से कहीं ना कहीं आपके ऊपर थर्ड पार्टी कभी भी हो सकती है और इसकी ताक में कई टीमें दूसरी तरफ यहाँ पे रिवाइव मिल चुका है खिलाड़ियों को जिसका मतलब है ऑटो रिवाइवल का जो समय था उसके हित में यहाँ पे टीम खेली है और अब अर्जुन के ऊपर यहाँ पे पैनी निगाहें होंगी अर्जुन अगर एक आधा नॉकआउट दे पाते तो कुछ समय मिल जाए के खिलाड़ी जो रिवाइव होके आ रहे हैं उनको संभलने के लिए और दूसरी तरफ एसएमआर ईस्पोर्ट्स अपने नॉकआउट खिलाड़ी संकेत नार्मल चल தலையில வச்சு அடிக்கிறார் வரா मशीन घेरने की लेकिन उससे पहले அங்க தான் இருக்கும் தெரியும் அவருக்கு अर्जुन सचिन मुंगारे मुझे ऐसा लगता है शायद उनको पकड़ चुके हैं आयुष आयुष कम ऑन नॉकआउट ही नहीं यहाँ पे इमोट दिखा के बता दिया ये हमारा इलाका है और इसे हासिल करने के लिए क्या वाला रहा सुदर्शन ब्रो थैंक्स फॉर द TSG यहाँ पे आप कह सकते हो एक थोड़ा सा हल्का सा मीठा सा ही सही लेकिन स्लेज करते हुए वंडी उठ रहा है ना देखिए स्लेजिंग तो गेम का पार्ट चलता रहेगा इमोट भी गेम का पार्ट है वो भी चलता रहेगा लेकिन ये जो राइवलरी है ये जो कंपटीशन है रॉकी ये नहीं रुकना चाहिए और उसी के साथ क्लजा ई-स्पोर्ट्स ने भी अपने खिलाड़ी को बहुत ही आसानी से रिवाइव दे दिया है वही बात करेंगे यहाँ पर टीम यहाँ पे इंटेंस स्क्वाड के बारे में हर्ष वहाँ पे घुड़सवारी करते हुए आगे बढ़ते हुए वही बात करेंगे टीम क्लजा ई-स्पोर्ट्स कौशिक बुल्ली शुभ और यहाँ पे क्लॉज आपको नजर आएंगे पिछली बार रॉकी इन्होंने काफी दमदार शुरुआत करा था काफी सारे एलिमिनेशन लेकर के अरे यार பின்னாடி இருக்காரு கௌசிக் என்ன பண்றீங்க கௌசிக் பின்னாடி இருக்காங்க கௌசிக் स्नाइपर टावर से लेकिन उनके ऊपर भी हमला होगा साइड से उनको नॉक ही नहीं पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया है अब देखिए क्लॉज शुभ या फिर यहाँ पे बुली में से किसी एक को जाकर के रिवाइव करना पड़ेगा अपने प्रिय कप्तान को कप्तान के बिना तो फिर यहाँ पे इस टीम को सीना तान के आगे बढ़ना मुश्किल रहेगा टीम के मास्टरमाइंड है हेड ऑफ द टीम यहाँ पे होने वाले हैं पर उसी के साथ बुली जा रहे हैं वेंडिंग मशीन के पास बट एक बार देखिए क्रॉस रोड्स पे ஓ நல்ல டேமேஜ் காலி அவர் காலி கண்டிப்பா ஒரு காலி कियोस्क के बीच में ये நல்ல டேமேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒண்ணுமே फाइट यहाँ पे दाफिक आगे बढ़ते हुए 3 एलिमिनेशंस के साथ दाफिक क्यों நம்ம சும்மாவே दाफिक अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए लेकिन दाफिक சும்மாவே ரஸ்மன் அடி கொள்வாரு दाफिक के हाथ में स्नाइपर ये कुछ नया नजर आता होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे दाफिक ये खिलाड़ी यहाँ पे दाफिक करते हो लेकिन सिद्धार्थ ने कह दिया स्नाइपर तो एक ही है टीम में वो हूँ मैं पहले हुआ आफ्टरनून लाइव போடலையா आफ्टरनून लाइव தான் கிக்ல ஓடுது ப்ரோ கிக்ல ஓடுது இந்த மேட்ச் இருக்கறங்காட்டி நான் சாயங்காலம் வரேன் இதுக்கு அப்புறம் நம்ம லைவ் எப்பமா 5:30 தான் उसी के साथ बात करेंगे फोर्ज के एरिया पे ஈவினிங் தான் आफ्टरनून लाइव வந்து கிக்ல நடக்கும் यहाँ पे इंटेंस क्वैक होने वाले हैं उनके चारों खिलाड़ी उनके ठीक सामने क्लॉज के हाथ में लॉन्चर ग्लूवल तोड़ा ஓ கேப்பிங் வித் அப்கிரேட் எங்களுக்கே தெரியாதயா மேட்ச் அப்பனே साथ क्या कुछ नॉक्स निकाल पाएंगे क्लॉज यहाँ पे वो देखने वाली बात रहेगी 7 ग्रुप मैच முடியாதா यहाँ पे सीटीजी இது பண்ணி தருவாங்க சப்போர்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க एलिमिनेशन रहेगा
देखने वाली बात रहेगी कितना और नुकसान झेलना पड़ेगा यहाँ पे क्लजा स्पोर्ट्स को। पहले ही शुभ एलिमिनेट हो चुके थे, अब वापस से कौशिक एलिमिनेट होते हुए क्लॉज ने अपने कदम थोड़ा सा पीछे यहाँ पे बढ़ाया है जरूर। वही ब्लू லைவ் போட ப்ரோ ஒயிட் லைவ் போட முடியாது ப்ரோ, ரெண்டு நோட்டிஃபிகேஷன் போகும் ப்ரோ, அது வேணாம் ஷார்ட்ஸும் போடணும், அப்பலாம் ஷார்ட்ஸ் போட மாட்டேன்। वो आगे बढ़ते हुए उनके पास मैक्स 7 रहेगा सामने से, आगे आते हुए मैक्स 7 वर्सेस मैक्स 7 यहाँ पे, और लीजिए वहां पे आयन को नॉक कर दिया जाएगा। ओ 1v2 यहाँ पे हमला कर पाएंगे। एम बॉट भी नॉक हो चुके, 3 एलिमिनेशन यहाँ पे क्लजा स्पोर्ट्स के पास आ चुका है। विश्वास कीजिए यहाँ पे रॉकेस खिलाड़ी ने, देखिए पहले वो उनके कदम थोड़ा लड़खड़ा रहे थे, वो पीछे हट रहे थे, लेकिन जब ப்ரோ ஒரு மெசேஜ் மாடரேட்டர் டைம் அவுட் போடுறாரு, என்ன மெசேஜ் இவர் என்ன போட்டு தோலாம், என்ன போட்டீங்க சொல்லுங்க तरीके से। और उसी के साथ सेंट्रल का ये एरिया और एक और नए फाइट का आगाज होता हुआ आइकू और ओरंगुटैन टीम में वल्ली है ब्रो जी बिल्कुल। और देखिए शायद हो सकता है नक्शा बदला और टेरिटरी बदला है, तो यहाँ पे आइकू ओजीएक्सटीएसजी का खेलने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही धाकड़ रखा हुआ है। और कई कास्टर्स चर्चा कर रहे थे कि புரியுதா இந்த குரூப்போட பாருங்களா, டெச்சி வரைக்குமே கொஞ்சம் இதாதான் போகுது, சோஸ் டீம் சாஸ் அவனு சோலஸா அவங்க ஆட ஆரம்பிச்சாங்க, இன்னும் டஃபா போகுது। என்னது किसी को निराश नहीं, अटैकिंग अंदाज में खेल रहे हैं और सबको खुश कर दिया यहाँ पे इस टीम ने। लेकिन इतना आसान नहीं होगा टेबल टॉप को बरकरार रखना, क्योंकि रेजरेक्शन और क्लजा जैसी ताकतवर टीमें जो है नाइट लाइव இருக்கும் ப்ரோ, कि कैसे வாட்ச் பண்ணி இருக்கு ஒரு என்கேஜ் மேட்சோட வாட்ச் பண்ணி आप देख सकते हैं रेकर्स एसएस फोनिक्स ब्रो नाने ना कदमों से ही सही, लेकिन 31 अंक उन्होंने भी जोड़ लिया ऑक्सीजन। और माइक और पूरा उड़चा माइक काट रखे थे जो अभी तक और से यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे थे। मिस्टीरियस बिल्कुल अकेले स्टैंड அப்படியே ஒரு ஓரமா எடுத்து வைங்க, அப்படியே हो नहीं सकते। 4 मिनट से ज्यादा खेल हो चुका है यहाँ पे, हाफ आइट இருக்குது गाइस, கேக்குதா? मिस्टीरियस तो मुझे ऐसा लग रहा है इन्हीं को उड़ा दिया गया और 10वां एलिमिनेशन सिक्योर करते हुए रेजरेक्शन इकला இருக்கும் ब्रो, वाच पटी कदमों से सेकंड पोजीशन में आ गए थे, लेकिन रेजरेक्शन ने कहीं ना कहीं कहा हम तो देखिए बिल्कुल चौड़ में ही खेलते हैं। ओपन में आके पहले 3 खिलाड़ी पछाड़े और आखिरी खिलाड़ी को जिस तरीके से एलिमिनेट करा, दैट इज इंसल्टेड इंजरी। मुझे लगता है याद रखेंगे आप कभी 2 मैचेस तक कि किस तरीके से रेजरेक्शन ने जो है हमारे ऊपर वार किया था। और क्लजा की यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी। देखिए उम्दा कप्तानी कौशिक मलिक द्वारा अपनी टीम को अगर आप देखें नेतृत्व करते हुए सबसे पहले आगे चल रहा है, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और उसी हिसाब से उनकी टीम रोटेट कर रही है। और जब भी कोई टीम अपने आईजीएल को इस तरीके से सुने और सुनकर जो है हर बार फाइट एग्जीक्यूट करे, तो उस टीम का फायदा होना लाजमी। अगर एक मैच में नहीं होता तो दूसरे या तीसरे मैच में तो अवश्य बड़ा मैच निकालेगी ही निकालेगी। और दूसरी तरफ क्लजा की ओर से अगर आप देखें शुभ और क्लॉज, शायद पीछे वाले खिलाड़ी को जो क्लीनिंग सीट पे खिलाड़ी बैठा था उसने देखा और ड्राइवर से कहा कि रोक दीजिए, अब एक खिलाड़ी का शिकार करने का समय आ चुका है। और बुली की स्नाइपिंग लाजवाब, ये वो अंडररेटेड स्नाइपर्स में से है जो आने वाले दिनों के सितारे बनेंगे। बुली की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। और दूसरी तरफ इस वक्त डीवीजी मुझे लगता है बिल्कुल अकेले दिखाई पड़ रहे हैं और निस्तेज से दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें ओजीएक्सटीएसजी ये तो एकदम शान और शौकत के साथ रोटेशन लगा रहे हैं। अगस्त 6 से एंगेज स्पोर्ट्स मैच में दिखाई भी नहीं पड़ रही है। अगर इसी तरीके से खेलते हैं, देखिए फिर से वही रणनीति है ऑक्सीजन, फिर से वही सर्कल की वांगा डेविड एसजी क्वीन वांगा वणक्कम और अंत में जाके लाइक जगरनॉट पाकिस्तान टीम को स्मैश करते हुए पूरा अपने नाम करेगा। वांगा थैंक यू फॉर द सपोर्ट। टीम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, जिस तरीके से वो रश कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, दैट इज इनक्रेडिबल। बट उसी के साथ एक और टीम जो कि रश कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमला कर रहे हैं, और यहाँ पे उस हमले से सफलता भी मिल रही है टीम रेजरेक्शन एस्पोर्ट्स। ब्लैक वांगलामा व्हाइट वांगलामा गाइस, दमदार 2 खिलाड़ी व्हाइट वाला ब्लैक एंड कलर जियान साथ में सिद्धार्थ और समथिंग की जोड़ी, ये टीम दमदार व्हाइट और है, माइट तनिया இருக்கும் बहुत खूब, बहुत बेहतरीन है। 13 एलिमिनेशंस के साथ यहाँ पे समथिंग थोड़ा एचपी மணி ப்ரோ தான் சொன்னாரு, ஹரி ப்ரோ ஆகஸ்ட் 6 மே அவன் ஓல்டி விட்டுருப்பான் ப்ரோ, அவனுக்கே தெரியாது ப்ரோ, நீங்க வேற ஏன் ப்ரோ बात करें सिद्धार्थ के बारे में। सिद्धार्थ के पास 4 एलिमिनेशन आ चुका है, दाफिक के पास 7 एलिमिनेशन। दाफिक के मूवमेंट्स देखिए, उनके हाथ में AC80 है, क्या कुछ बढ़िया शॉट्स नजर आएगा जिन्हें फिलहाल के लिए पीछे ग्लूअल लगाया जा रहा है। डिफेंस मैकेनिज्म में भी काम करा जा रहा है, जितना आप एग्रेसिव बनोगे उतना आपको अपने डिफेंस में भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ गोला बारूद से हमला करने से बात नहीं बनता, दीवार भी बनाना जरूरी है ताकि सामने के आक्रमण को आप रोक सको। एंड उसी के साथ
13 एलिमिनेशन अभी के लिए रिजरेक्शन। उन्होंने व्हीकल्स के साथ इस फाइट से बैक ऑफ करने का सोचा है। देखिए जोन को प्रायोरिटी दिया जा रहा है जो कि डेफिनेटली उनको आगे जाकर के मदद करने वाली है। शायद से इस बार रिजरेक्शन बिल्कुल तरीके से बूया फोकस करते हुए, लेकिन यहाँ पे निंजा को देखिए किस तरीके से उन्होंने ये बेहतरीन नॉक निकाला। ट्राई नेक्स्ट को उन्होंने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। 4 एलिमिनेशन आता हुआ टीम केओस के खाते में, जहाँ पे किशु 2 एलिमिनेशन निकालने वाले। बट इस मुकाबले में शुरुआती तौर पे टीम इंटेंस क्वैक और रैकर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। रैकर्स के पिछले मुकाबले में इतना बढ़िया खेल रहे थे, इतना बढ़िया कर रहे थे, उनके चारों खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे थे, उनके पास वो का एक बर्थ था। इस बार नो ब्लैक टीम ओनली शुरुआती तौर पे एलिमिनेट हुई। इस बार में आप क्या மைக் இருக்குது ஆனா வாய்ஸ் கொஞ்சம் டிஃபரண்டா இருக்கும்। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रणनीति को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। எனக்குமே அப்பப்ப விட்டு விட்டு தான் கேக்குது। रणनीति साफ थी लेकिन पीछे से आके ना रिजरेक्शन ने उनको ऑक्सीजन बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया। और जब आपके पास सामने वाली टीम में दाफिक अली खान और நோருக்குறாங்கடா பின்னாடி இவனு வேற அடிக்கிறானே ரெசரக்ஷன்। कमर तोड़ दी गई है क्लजा ईस्पोर्ट्स द्वारा और लॉस और बुली की आंधी में एक और टीम यहां पे वही गलती कर रही है जो रैकर्स ने करी थी। ए गाइस लाइक போட்டு பாருங்க சொன்ன லைக் போலாம்। से फाइट ले ही नहीं सकते हो। 14 किलो போட்டாங்க। खान ने आते ही देखा नाइट स्टंबल வச்சிருக்க வாட்ச் पार्टी मैच गलती कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं पता। देखिए जिस तरीके से टीमें फाइट पिकअप करनी है मेरे हिसाब से तो देखिए इस वक्त परिस्थिति आपके पास अनुकूल है। आपके इर्द गिर्द फौज की टेरिटरी नजर आ रही है तो वो ये ओएस राधे जाके फाइट करना चाहिए। और जस्ट यहाँ पे टीम केओस ने भी थर्ड पार्टी आमंड அவரா தான சொல்றாரு रेजरेक्शन एक झटके में एलिमिनेट हो जाती है। बताइए நான் டாஸ் முடிச்சிட்டேன் था लेकिन வாட்ச் पार्टी டைம் 9 மணிக்கு ப்ரோ கிக்ல கிக்கோட லிங்க் கமெண்ட்ல பின் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க। टीम कमेंट चास और रेजरेक्शन जो है यहाँ पे पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। ये बोल रहा एक और मैच ये केओस नाटा टीम था ब्रो ओनेंगुटान टीएसजी के हित में नजर आता हुआ। मैं ये तो ये नहीं कह सकता नाटा टीम का भाग लाना मुकाबले को जीतेंगे बट चांसेस आर वेरी ब्राइट। कम से कम 60% நான் போரே மாடுவாங்க நினைச்சேன் பட் அதுக்கு பதிலா இவங்க அடிச்சறலாம் போல। क्योंकि बाकी टीमें ஒரு பாயிண்டான டிஃபரண்ட் இருக்குடா டேய் பைத்தியம்। ஆனா எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க। ஆட்டோ சரியானடி यहाँ पे क्लॉस तो मुझे लग रहा है अपनी टीम के लिए सेंटा यो ब्रो एक प्रेजेंट दिए ही जा रहे हैं और कहना पड़ेगा कि क्रिसमस है। தப்பா சொல்லிட்டேனோ நானே ரெசரக்ஷன் வருவாங்கனே। सही कहा आपने। यहाँ पे देखिए क्लॉज है वो सांता क्लॉज होने वाला अपने टीम के लिए, एक के बाद एक तोहफे अपने टीम को देते जा रहे हैं। नार्थ टूर्नामेंट ஒன்னு வர ஆசைப்பட்டு और हम यही होप करेंगे कि ऐसे तोहफे वो अपने टीम को ப்ரோ தப்பா நினைச்சீங்க கேட்கணும்னு தோணுது। கிறிஸ்மஸ் में नहीं கேக்குறேன் வேற எந்த என்னமோ இல்ல கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி மத்தவங்க பாக்கெட் ஃபுல்லா பண்றாங்கன்னு சொன்னீங்க। இப்போ நீ எதுக்கு ப்ரோ எனக்கு ஃபுல் ஆகணும்ல ப்ரோ। நானும் பாத்துக்கிட்டே இருந்தேன் என்ன பண்றேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் நானும் சரியா। மத்தவங்க பாக்கெட்ட நிரப்புறதுக்கோசரம் நானும் கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் அப்படியே லைட்டா அப்படியே இறக்கலாம்னு பாக்குறேன்। ஆயிட்டு வருமா ப்ரோ ரெட் கியர் H1 by Gamerz வைட் இந்த பிராண்ட் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ நல்லா இருக்கும் பட் ஆனா எனக்கு இந்த வாய்ஸ் கரெக்ட்டா இருக்கும்। निशाना बनाते हुए निशाना भेदते हुए सामने वाले खिलाड़ियों के गढ़ में पैर में हमला वो भी तो सामने होने वाले हैं। वो पेड़ के पीछे कवर निकाल रहे हैं लेकिन अर्जुन को पता है कहां से शॉट बनाना है। और ये देखिए டாப் ஒன் வராங்களான்னு பாக்குறேன்। कनेक्शन एक के बाद एक घात ऐसा मार गाली இந்த மூணு பேர் இருக்காங்க एलिमिनेशन मिलता हुआ அந்த ஒரு இடத்துல தான் அங்க ओरंगुटान टीएसजी को கமந்தல விட்டாங்க टीम के ஓடுறாரு। पास ऐसे ईगल आई स्नाइपर मौजूद हो तो किस चीज का डर है टीम को, किस चीज के लिए वो पीछे हटेंगे, वो आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अर्जुन उनके साथ है यहाँ पे 4 एलिमिनेशंस के साथ। क्या बढ़िया एंगल निकाला है अर्जुन ने और मेरे हिसाब से उनकी लोकेशन अभी तक रिवील्ड नहीं है। दैट्स सम काइंड ऑफ ग्रेट एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन इन दिस मैच। சசி ப்ரோ போட சொல்லுங்க நான் போடுவேன் அவங்க போட மாட்டேங்க। सामने अब एक नया चुनौती क्लजा ईस्पोर्ट्स के कौशिक मलिक बनाम आईक्यू ओरंगुटान टीएसजी के रोनित, दोनों ही बहुत पुराने आईजीएल है और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स होने वाले हैं। जब आमने सामने आएंगे तो क्या भिड़ंत लेंगे और क्या टक्कर में यहाँ पे हमको रिजल्ट नजर आएगा। देखने वाली बात रहेगी आयुष को इस वक्त यहाँ पे नॉक किया जाएगा निसर्ग के द्वारा। वहां पे देखिए हमला आता हुआ के साइड से 4 टीम 16 खिलाड़ी रॉकी यहाँ पे और क्लजा ईस्पोर्ट्स के सारे
खिलाड़ी एक साथ एकजुट रहने वाले हैं। अभी तक वो सर्कल का एडवांटेज है नहीं IQ ओरंगुटन TSG के पास। बहुत ज्यादा मुश्किल बनता हुआ हर एक टीम के लिए। ब्रीदिंग स्पेस कितना मिलने वाला सर्कल के एंड में वो देखने वाली बात रहेगी रॉकी यहाँ पे। एनकेजी की मैच இருக்கா ப்ரோ இன்னைக்குல ப்ரோ அடுத்த வாரம் शिफ्टर भी आना बाकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि தமிழ் பிளேயர் ஒரே ஒருத்தர் இருக்காரா லா எஃப்எஃப் लग रहा है IQ OGX TSG को फेवर कर सकता है, लेकिन वो जो உண்மையாலுமே டஃப் ப்ரோ இந்த குரூப் உண்மையாலுமே டஃப் ப்ரோ ரொம்ப டஃப் ப்ரோ இது நம்ம குரூப் மாதிரி அதோட கொஞ்சம் டஃப் தப்பு லான்ச் பேட் ஓ स्मार्ट कप्तानी, लेकिन यहाँ पे टिके रहना पड़ेगा। अगर शॉर्ट रेंज में क्लचा ई-स्पोर्ट्स के रशर्स आपके ऊपर हमला करते हैं रोनित कमन, और यहाँ पे अगर आप देखें शायद 2 खिलाड़ियों को नॉकआउट किया है। गाली பண்ணிட்டானுடா ஸ்னைப்பர் மட்டும் தான் அங்க போயிருக்காரு। नहीं जाना चाहिए, डबल स्नाइपर की रणनीति यहाँ पे IQ OGX TSG ने भी लगा के रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके ला ब्रो खिलाड़ी आएंगे उनको अर्जुन यहाँ पे चेष्टा होगी। और रोनित की कप्तानी के चर्चे मैंने शायद इस मुकाबले के शुरुआत के पहले ही कर दी थी कि जिस तरीके से वो यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा है कि शिफ्टर किस ओर मुड़ेगा और किस तरीके से एंगल बनाना है, वो काबिल तारीफ है। बुली के पास मौका, क्लचा ने अपने खिलाड़ी दोबारा से रिवाइव दे दिए हैं। 17 एलिमिनेशन सिक्योर हो चुके हैं। टीम बहुत उड़ा रही है, पूरा का पूरा रुख अपनी ओर मोड़ सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा आपसे, श्रिंक शिफ्टर IQ OGX TSG के खाते में जा सकता है। स्काईलॉर्ड ई-स्पोर्ट्स इकलौती ऐसी टीम है जो शायद यहाँ पे उनको रोक सके, लेकिन अगर क्लचा ई-स्पोर्ट्स ने पहले हमला कर दिया तो इसकी नौबत नहीं आएगी। और जिनके पास मौका होगा यहाँ पे एक आधा खिलाड़ी गिराने का, टोरेंट यहाँ पे लगा के तो रखी है, और टोरेंट की मदद से यहाँ पे सामने वाले खिलाड़ी को रोकना चाहते हैं। ये देखिए, इसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। गराज या फिर वेयरहाउस के जाना कितना ज्यादा अर्जुन ओ ब्रो सीरियसली ये आपको अब पता चलेगा। ये அழகா மேல போய் ஒரு வாள வேஸ்ட் பண்ணா மேல ஏத்தி விட்டாரா அவ்வளவுதான் நைஸ்। அவன் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டான்। अपनी स्नाइपिंग से सबको मंत्रमुग्ध करते हुए एक बार फिर से यहाँ पे अरमान और अभिनव के पास मौका है कि यहाँ पे IQ OGX TSG के जो इरादे हैं उसको यहाँ पे छका सके, बट ये इतना आसान होगा नहीं। रोनित का एक और बेहतरीन शॉट कनेक्शन, उसके अलावा टोरेंट भी अपना काम बाखूबी करता हुआ। रोनित के पास ये मौका, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा अवसर है जो IQ OGX TSG को सीधा टेबल टॉप सुनिश्चित करवा देगा। अर्जुन के पास स्काइट भी है, क्या शॉर्ट रेंज में स्काइट चलाएगा समय। आयुष की ओर से एक और बेहतरीन नॉकआउट एंड 590 से IQ OGX TSG के रोनित का शॉट क्या है जी नहीं, इसके बावजूद भी IQ OGX TSG का बैक टू बैक मैचेस। ओके ओके ब्रो किंग गोली नोरी எடுக்கறாங்க ப்ரோ போட்டு बुलंद होता हुआ ये नारा मुझे लगता है अब कहीं ना कहीं पूरे फ्री फायर मैक्स इंडिया कप बॉल 2026 में गूंजेगा। TSG बोलते हैं, TSG सबकी खोपड़ी खोलते, बैक टू बैक 2 पूया 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 22 एलिमिनेशन बैक टू बैक ஆறு கார் வைப்பாங்களா வாய்ப்பு இருக்குமா இன்னைக்காவது। चलिए एक बार लास्ट शॉट देखते हैं और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे IQ TSG ने अपना दूसरा बूया निकाला। उनके सामने मौजूद थे यहाँ पे स्काईलॉर्ड ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स, उनको पहले धराशायी किया गया। फैज वहां मौजूद थे और उनके साथ एक और खिलाड़ी को भी एलिमिनेट किया गया। आखिर में बचते हैं क्लचा ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स, कौशिक को नॉक करा जाता है। आप देखिए किस तरीके से रोनित ने अपना A124 का बेहतरीन इस्तेमाल किया। मुझे नहीं लगता आखिरी सर्कल में इतने प्रेशर में A124 का इससे ज्यादा बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। रोनित एक बॉम्बर IGL बहुत ही माइंड ब्लोइंग तरीके से खेलते हुए गए। यहाँ पे उनका बिस्ट एंड पेड, उनका A124 कैरेक्टर, निकिता जेबिब्स, सब कुछ ऑन पॉइंट था, सब कुछ परफेक्ट था यहाँ पे इस बुया को निकालने के लिए। लेकिन बात करते हैं इस टीम के स्नाइपर के बारे में जो कि इस मुकाबले के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होने वाले हैं। 8 एलिमिनेशन के साथ 6 असिस्ट और 13 नॉक्स निकाला है इस खिलाड़ी ने। जी हाँ, TSG IQ अर्जुन काफी दमदार खिलाड़ी है, और जो 2 रशर्स है हमारे बेहतरीन क्रिश और आयुष, इन दोनों ने भी मिलकर के यहाँ पे बहुत बढ़िया खेला। क्रिश के पास 5 एलिमिनेशन, आयुष के पास 6 एलिमिनेशन, और ये पूरी की पूरी एक टीम जिन्होंने बहुत ही अमेजिंग तरीके से
யாரோ மார்வல் ப்ரோ சித்தப்பா வணக்கம் வாங்க யூடியூப்ல இங்க உனக்கு ஒரு லெகசி இருக்கு அத मोस्ट वर्सेटाइल லெகசி வச்சு என்ன ப்ரோ பண்றது अर्जुन के बारे में 8 एलिमिनेशन के Legacy साथ यहां पे வச்சு 6 असिस्ट Bro, और देखिए यहां पे 666 எஃப்எம்எச் முடியற வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும் வேற வழி இல்ல சரியா நான் என்ன ஏதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் மறுபடியும் நீங்க அதையே புடிச்சு சொன்னீங்கன்னா என்ன பண்றது इनके शॉट्स है ना எல்லாரும் அங்க தான் இருக்காங்க ப்ரோ எல்லாரும் அங்க தான் இருக்காங்க நான் மட்டும் அங்க இருக்கேன் எல்லாரும் அங்க தான் இருக்காங்க और मारो के साथ R1 का इस्तेमाल करते हैं ओम इनका फेवरेट वेपन है और टैक्टिकल मार्केट के साथ एक टैक्टिकल स्ट्रेटजी और ये बनते हैं एमवीपी इस मुकाबले के चलिए रॉकी अब बात करते हैं गेम स्टैंडिंग्स ஏண்டா முந்தானது விளையாண்ட மேட்சே 10000 பேருக்கு தான் இன்ட்ரஸ்ட் இருந்திருக்குது பாக்குறதுக்கு ये आईक्यू जीएक्सटीएसजी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम और चैट में डेफिनेटली चल रहा होगा यार क्या करे चैटல चैटல எல்லாரும் பாத்துப்பாங்க यहां पे आज खेला வேற யாருக்கு அதுல இன்ட்ரஸ்ட் இல்ல அவ்வளவுதான் எல்லாருக்கும் இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கிறது இது உனக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் எதுன்னு क्योंकि जिस तरीके से தண்ணி இல்லங்க என்ன பண்றீங்க ஐ குவிட் யூடியூப் போட்டுருங்க डेफिनेटली ओवरऑल स्टैंडिंग पे शायद दूसरा या तीसरा स्थान इनके पास होगा रिजरेक्शन के खाते में 15 हमने लाइक कुविट यूट्यूब अपडेट बोली ना एसएमआर को 12 स्काईलॉर्ड ईस्पोर्ट्स को 11 4 एएम को 9 देसी ईस्पोर्ट्स को 9 फ्लॉलेस ईस्पोर्ट्स को 9 एसईए ईस्पोर्ट्स को 5 रेकस ईस्पोर्ट्स को 4 इंटेंस டைம் எடுத்துக்கங்க गाइस நான் யாரையும் குறை சொல்ல மாட்டேன் உங்களை டைம் எடுத்துக்கோ आज के दिन पता नहीं क्यों உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு நாள் புரியும் तो दिया आईक्यू जीएक्सटीएसजी ஒருத்தன் கத்தனானடா நம்ம அவனை கண்டுக்கவே இல்லையாடான்னு சரியா आने हैं मुझे அப்ப நீங்க வருவீங்க सीधा चलेंगे सर्कल एनालिसिस की तरफ और देखेंगे அத நான் நடக்க வெப்பேன் इस मुकाबले को अपने कब्जे में लिया था आईक्यू जीएक्सटीएसजी ने देखिए शुरुआत ब्राजीलिया में की थी एक टीम से ड्रॉप क्लैश हुआ था उनको पटकर லாங் வீடியோ எடுத்தோனே நீ பேசாத ஹைலைட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் போடு எடுத்தோனே நீ பேசினா அது ரொம்ப நேரம் பேசிட்டே அப்படியே அப்புறம் நான் எப்பவுமே வீடியோ போட்டுறேன் मुकाबले में अपनी टीम का झंडा गाड़ कर ही मानेंगे टीम के குறை சொல்லலாமா என்ன குறை कैरी की उमदा कप्तानी और बहुत अच्छे पोजीशन पे हायर टेरिटरी पे बिठा के रखा था लेकिन अर्जुन सचिन मुंगारे ये स्नाइपर ஆயிட்டே வரும் நான் தான் லைவ் வரேன் இந்த வாரம் தான் ப்ரோ 7 நாள் தான் இப்படி இருக்கும் அடுத்த வாரம்லாம் திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் புதன் வரைக்கும் நார்மல் லைவ் வியாழன் வெள்ளி சனி ஞாயிறு வந்து இந்த லைவ் இது வாட்ச் பார்ட்டி सर्कल के बाहर ध्वस्त कर दिया और शॉर्ट रेंज में வேற யாரையும் மென்ஷன் பண்ணல ப்ரோ நான் வந்து ஆடியன்ஸ் சொல்றேன் வேற யாரையும் நான் மென்ஷன் பண்ணல ஐயோ ஆளை விட்டுருங்க वहां पे जिस சைலண்டா இருங்க டெவில் சீக்வென்ஸ் நான் யாரையும் மென்ஷன் பண்ணல நான் பாட்டுக்கு இருக்கேன் एनालिसिस करके वहां पे बताई थी ऑक्सीजन ने किस तरीके से A124 का प्रयोग किया குறையெல்லாம் சொல்லணும்னு சொன்னீங்களே குறை சொல்லலாம் जहां पे हमने भी कहीं ना कहीं बता दिया था वहां पे ऑक्सीजन की किस दिमाग में रखकर वो जा रहा है एंड इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस क्योंकि हमने ये भी बताया था कि छत पे वो गराज के या फिर वेयर हाउस के छत पे अवश्य जाएंगे ही जाएंगे और बिल्कुल वही किया आईक्यू जीएक्सटीएसजी का ओवरऑल स्टैंडिंग्स अब हमारे सामने आ चुके 62 अंक बताइए दो ही मैचेस में निकाल कर आईक्यू जीएक्सटीएसजी ने बता दिया अरे நீங்க கோயம்புத்தூர்ல எங்க இருக்கீங்க நான் கோயம்புத்தூர்ல போறேன் திருப்பூர் रिजरेक्शन के खाते में 35 திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எல்லப்பளம்பூர்னு ஒரு குட்கிராம் அரிபே லாங் வீடியோ போடலாம்னா வீக்லி 2 வீடியோ போடுங்க வியூஸ் வரலனா கூட பரவாயில்லை ப்ரோ அதான் எடிட் நான் இதுவும் சொல்ல போறேன் எனக்கு எடிட் பண்ணி கொடுத்துருங்க நான் வந்து காசு கொடுத்தறேன்னு சொல்ல போறேன் நம்மனால எல்லாமே பண்ண முடியாது அதனால நான் காசு கொடுத்துறலாம்னு இருக்கேன் எடிட் பண்றதுக்கு आज डोमिनेट करने के इरादे से இது எத்தனை ரவுண்ட் குவாலிஃபை ஆகணும் ப்ரோ இன்னும் 3 ரவுண்ட் குவாலிஃபை ஆகணும் 2 ரவுண்ட் குவாலிஃபை ஆகணும் जो है जिस किस्म के थैंक यू होंडा एनएसटीडी के पास है वो शायद यहां पे कमाल करेगा ऐसा होने नहीं दिया आईक्यू जीएक्सटीएसजी ने सीधा चलेंगे प्रेडिक्शन की ओर और देखेंगे कि क्या लगता है हम दोनों को कि कौन सी टीम अब रूम मैच போட்டு வைட்டில வர வியூஸ் கே கிக்ல கூட எடுக்கலாம் போல डाल सकते मुझे ऐसा लगता है एक अंडरडॉग टीम है 4am वो शायद यहां पे कमाल कर सकते अगर वो नहीं तो அதனால தான் ரூம் மேட்சே 3 நாள் நடத்தவே இல்லடா எனக்குமே தப்பா தெரிஞ்சிராது சரியா அதனால தான் நான் வந்து ரூம் மேட்ச் நாங்க விளையாடுறதோட சரி வேறயா நம்ம மட்டும் விளையாடுறதோட சரி நான் பொதுவா நடத்தவே இல்ல esports कमाल कर सकते हैं फिर देसी esports और अगर नहीं हुआ तो आईक्यू जीएक्सटीएसजी ऑक्सीजन देखिए आईक्यू जीएक्सटीएसजी तो मुझे लगता है बहुत நான் வெயிட் பண்ணா பார்த்தா யூடியூப்ல லைவ் பண்ணிட்டு அங்க போயிட்டேன் ஆமா ப்ரோ दर्शकों के बीच में அப்ப ப்ரோ நீங்க எல்லாம் வருவீங்க அதனால தான் மைக் கட்டி இப்ப வந்து சேர்ந்து लगातार 2 बोया 62 पॉइंट आसान नहीं वाला नहीं है कि மைக் இல்ல அப்பப்ப கட் ஆயிருது देखिए गेम शेड्यूल पे भी इन्हीं के नाम चर्चे पे है शुरुआती मैच पे और दूसरे मैच पे भी अब प्रश्न ये है कि यहाँ पे क्या इनका हैट्रिक नजर आएगा ரெண்டு டீம் மாட்டி போறாரு ப்ரோ அந்த ரவுண்ட் पे நாக்ஸ் के लिए माटी போறாரு 3 बोया यहाँ पे क्या आईक्यू ओके एम्पर निकालने वाली है எம்பரர் ப்ரோ நீங்க செருப்பாலே அடிச்சுக்கலாம் எம்பரர் ப்ரோ என்ன स्पॉट्स के बारे में जी हां புரியல எம்பரர் ப்ரோ நீங்க செருப்பாலே அடிச்சுக்கலாம் உண்மையாலுமே बोल रहे हम जाने वाले हैं
इस बार ऑब्जर्वेटरी पे देसी स्पोर्ट्स और टीम क्योस का कहना है कि हम दोनों लड़ेंगे। हैंगर पे आपको लड़ाई नजर आ सकती है टीम एसईए स्पोर्ट्स के साथ टीम रैकर्स स्पोर्ट्स का। पोची नॉक में 2 टीम्स है, देखिए एसएमआर और एम स्पोर्ट्स का। कहीं पर अनदर $2 चाहेंगे हमला करने के लिए वहीं पे जा रहे हैं। शायद से इस बार भी एसएमआर नॉक के एरिया में ही नजर आने वाले हैं। इन शुरुआती 2 बुया के बाद अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी आईकू ओजी टीएसजी 2 के सब्र को एडिट करके போறதுக்கு 4 நாள் ஆகும் போல निकालने वाले हैं। बरमुडा का गेम है, पर गिट्री के बाद सबसे स्ट्रांग मैप बरमुडा ही रहता है, तो ये देखने वाली एक बहुत बड़ी बात रहेगी। चलिए रॉकी बढ़ते आज के हमारे तीसरे मुकाबले की तरफ। जी बिल्कुल, कुछ ही सेकंड्स का समय अब बचा है और देखने वाली बात ये होगी भारत की सबसे फेमस टीमों में से एक आईकू अपना सेलिब्रेट भी चल रही है। आगाज करेगी, सीधा चलेगा कुर्सी पे बांध लीजिए दर्शकों। इट्स गोइंग टू बी बर्मुडा। दिस इज डे 4 ग्रुप डी, गेम नंबर 3 बर्मुडा, और सारी टीमें तैयार। इट्स शो टाइम। और इसी के साथ आप देख सकते हैं रेजरेक्शन रिम नाम विलेज की तरफ गई है। दूसरी तरफ मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे काफी भीड़ भड़क का फैक्ट्री से लेके मार्च इलेक्ट्रिक के दरमियान होगा। आईकू ओजीएक्सटीएसजी बीमा शक्ति पे शक्ति प्रदर्शन $1 SGD ड्रॉप क्लैश लेगी। मैं बता रहा हूं आपसे आईकू ओजीएक्सटी का करेंगे। ப்ரோ நான் நல்லா எடிட் பண்ணுவேன் ப்ரோ, எனக்கு நீ காசெல்லாம் தர வேணாம் ப்ரோ, எடிட் பண்ணி தரேன் ப்ரோ ஒரு சான்ஸ்। मुझे पता था वो ड्रॉप स्पॉट भी उन्होंने ப்ரோ நான் ஆல்ரெடி இருக்காங்க ப்ரோ, ஓகேவா? அதனால தான் நான் வந்து அவங்கட்ட எடிட் பண்ணி கேட்க வேண்டியதா இருக்கு। நான் நம்ம பையன் தான், அதனால அவன்கிட்டயே பண்ணிக்கலாம் ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு। की ओर से आप देख सकते हैं यहां पे நீங்க ஆனா எனக்கு ஒரு மெயில் போடுங்க, டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் रैकर्स को आड़े हाथों அந்த மெயிலுக்கு ஒரு மெயில் போடுங்க, நான் உங்களுக்கு பார்க்கறேன்। मुझे फील हो रहा है शायद रेजरेक्शन जो है ना कमाल करने वाली है। आई एम नॉट सेइंग कि बूया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो मैच हो सकता है जिसमें 18 से 20 एलिमिनेशन करने को ரைட் விட்டுருங்க। ஆயிரத்தி வருமா அது உங்க விருப்பம், அதுக்கு மேல நமக்கு வேற வழி இல்ல। रेजरेक्शन और शुरुआत में 3 एलिमिनेशन நிசாந்த் ப்ரோ நாளைக்கு வச்சுக்கலாம்। तो आपका ना थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। और அது எப்படி இன்னொரு வாரம் எடுக்கும், मैं इसको அதெல்லாம் 200 வரக்கு இன்னும் ஒரு வாரம் எடுக்கும், அதனால ஒரு வாரம் கழிச்சு पास स्क्वाड है। பயிர் எக்ஸ்போன் ப்ரோ देखिए बिल्कुल सही चर्चा करा आपने। यहाँ पे किड के पास वो स्टाइल बुड़चिटे कौन बोल रहे हैं, उजी है उनके हाथ में, सीधा उजी लेके आगे बढ़ रहे। ओह लुक एट दैट, क्या बात है किड, बेहतरीन तरीके से। थैंक यू फॉर अनदर 1 SGD डेविल एसजी क्वीन। 1v1 में टेक डाउन कराया, लेकिन उनके पास 7 का एचपी, काफी कम एचपी था। एनगेज मैच ना यार कर रहा मौके का बेहतरीन इस्तेमाल किया। एनगेज ला यार अपने खाते में फर्स्ट तेरे ब्रो अविंग लिखन दे रही हूं, निकालेंगे जरूर। और किड को एलिमिनेट किया गया है। देखिए क्या बात है रॉकी, देखिए मैं भी वही चीज सोच रहा था कि शायद रिजरेक्शन का इस मुकाबले में एक बढ़िया स्टार्ट हो सकता है। ये मैच தெரியல சாயசி ப்ரோ வந்தா தான் தெரியும்। இந்த मंथ 25 தான் வரும், अच्छा मैप जा सकता है। 25 அந்த மாதிரி सेम थिंकिंग हम दोनों का यहां पे रहने वाला है। அடுத்த மாசம் தான் பாக்கலாம் क्या होता है, இந்த மாசத்தோட इनकम இந்த मास में आ रहा है, அடுத்த मास में लगातार 2 बुया अब इस मुकाबले के अंदर पीक पे वो आ चुके हैं। डायरेक्टली पीक पे तो नहीं आए थे, लेकिन चलिए उनके प्रेफर्ड ड्रॉप लोकेशन के अनुसार अब वो पीक पे ही आ चुके हैं फाइट निकालने के लिए। और इनके सामने एक बड़ी चुनौती रैकर्स ई स्पोर्ट्स होने वाले। देखिए पहले मुकाबले के बाद रैकर्स की पोजीशन रहने वाली थी दूसरे मैदान पे, और दूसरे मुकाबले के बाद वो आ गिरे हैं सीधा चौथे मैदान पे। अब उनको यहां से थोड़ा पुश चाहिए होगा इस मुकाबले के बाद। वही बात किया जाए अगर हमारी क्लजा स्पोर्ट्स के बारे में, तो पहले मुकाबले के बाद वो 5वें मैदान पे थे, और दूसरे मुकाबले थैंक्स फॉर अनदर $1 डेविल एसजी क्वीन। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अप डाउन चल रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं रैकर्स और क्लजा स्पोर्ट्स के बीच में। लेकिन एक टीम जो अभी भी काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है, दैट इज नन अदर देन आईकू ओरंगुटान टीएसजी इन फ्रंट ऑफ मिस्ट्रीज फ्रॉम रैकर्स स्पोर्ट्स। जी बिल्कुल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आयुष वहाँ पे घोड़ा लेकर तो नहीं भागने देंगे। ये बात सुनिश्चित करते हुए वहाँ पे कितनी भी कोशिश कर ले यहाँ पे मिस्ट्रीज, मुझे नहीं लगता ज्यादा देर तक यहाँ पे। ओह व्हाट अ शॉट दैट वाज। और शायद एलिमिनेशन अर्जुन के खाते में, जी अर्जुन के खाते में आया। और एक और टीम यहाँ पे आ चुकी है। अब 4 AM की टीम यहाँ पे नहीं यार, तमिल टीम नहीं यार, मेरा तमिल टीम यहाँ पे வணக்கம் வாங்க। मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे ब्रो कनेक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन वो वेंडीदा की पोजीशन बहुत अच्छी है। और उसके अलावा रोनित को अगर आप देखें सीधा डैश कर गया, जबरदस्त नॉकआउट और एलिमिनेशन। थैंक्स फॉर अनदर 1 SGD डेविल एसजी क्वीन, थैंक यू। सामने की तरफ शायद सामने वाली टीम के स्नाइपर खड़े हैं डिफॉल्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे आईकू ओजीएक्सटीएसजी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे जानती है कि 4M गाली நினைக்கிற டிஃபால்ட் கண்டிப்பா நம்ம 1 ஹிட் எடுக்க முடியுமா? ஒரு நாளை காலி डिफॉल्ट के ऊपर अर्जुन की ओर से கத்தில வெட்டறாரு பாருங்க अर्जुन।
करने में कामयाब। देखिए अगर अपनी एसएमजी वेपन से नॉकआउट नहीं कर पा ஏய் இந்த தடவை TSG போன தடவை விட இந்த தடவை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தெரியுறாங்க ஏன்னு தெரியல काफी अच्छा जजमेंट வைட்டி ராணி சேர்ல டேய் அது உடைஞ்சு தான்டா போதுடா டேய் आप कह सकते हो कि वो पर्टिकुलर एरिया ज्यादा रहता है जिसमें वो अटैक करता है। इसी के साथ यहाँ पे वेदांत एलिमिनेट हो जाते हैं। आप सोच रहे हो कि शायद पूरी टीम एलिमिनेट हुई है दर्शकों, जी नहीं। पानी में जब भी कोई एलिमिनेट होता है तो वो पूरी तरीके से एलिमिनेट होता है। अब उसको மத்த டீம்ல இப்ப புதுசா ஆற டீம்ல ஒரு மாதிரி பேனிக்ல இருக்காங்கடா டேய் नहीं होते हो First time போறாங்களா? ஆமா और चर्चा करनी पड़ेगी आईको ओजी एक्स टीएसजी। हां நான் சொன்னல சுவாஸ் தான் வருவாங்க போல यहां पे रिजरेक्शन ने तो जो हमने प्रेडिक्ट किया बिल्कुल उसी तरीके से खेल रहे हैं ऑक्सीजन। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है லைவ் போட ஒண்ணு வேணாம்னு சொல்லல அத தப்புன்னு சொல்லல पीछे से आईको ओजी एक्स टीएसजी और रिजरेक्शन दोनों को चौका सकते हैं। நீங்க எதுவும் பண்ணல டீம் கார இல்ல எனக்காவும் கொஞ்சம் எடுத்துக்குவேன் இனிமேல் कहीं ना कहीं बर्स्ट हुई थी 70 ஆமா ப்ரோ 74 ரன் நினைக்கிறேன்। नॉकआउट दे पाएंगे अपनी टीम को? जी बिल्कुल दे देंगे। और एलिमिनेशन सिक्योर 4 एलिमिनेशन हो चुके हैं। क्लज्जा अब तक रीजन इस रोनिता நல்லா ஆடுறாங்க ப்ரோ ஸ்ட்ராங்கா தெரியுறாங்க आपको विस्थापित कर चुकी है। और अभी इकलौती दुर्भाग्यशाली टीम एलिमिनेट हो जाती है व्हिच इज द टीम ऑफ एसईए ईस्पोर्ट्स। போன தடவை லெஜெண்ட் ஐஜிஎல் பண்ணாரு இந்த தடவை ரோனித் வந்திருக்காரு நல்ல ஐஜிஎல் தான் ஓகே ஓகே அவர் ஏன் அழுதுட்டே இருக்காரு அவர் தெரியல அவருக்கு ஏதோ நான் வந்து அங்க போறது பிடிக்கலையா ஆயிக்கா வருமாக்கு நான் என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் அவருக்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இப்ப நீ விட்டுருவாரு அதை விட்டுருங்க ஆயிக்கா வருமா कर लेती है आईको ओजी एक्स टीएसजी। तो आज कट ऑफ क्या गिरने वाला है? देखिए लग तो नहीं रहा कि आज कट ऑफ गिरेगा क्योंकि पिछले 3 दिन से वो 70 से लेकर 80 का ही कट ऑफ चल रहा है। और मेरा मानना है कि आज भी 70 से लेकर 80 तक कट ऑफ चलेगा। थोड़ा नीचे गिर सकता है मेरे 100 के आंसर சரி பண்ணி 700 க்கு வர வைக்கிறதா உனக்கு இது வழக்கம் ஏன்டா மயிரு எவ்வளவு சிக்கிங் தேங்க்ஸ் ஃபார் another $1 சூப்பர் சாட் थोड़ा सा पुश करके ऊपर आ पाते हैं। 68 ரூபாய் நினைக்கிறேன் 68 ரூபாய் समथिंग வருது गाइस काफी बढ़िया खेला है। ஒரு டாலர் के स्पोर्ट का शुरुआत बहुत बढ़िया ரெண்டுலயும் போடு ப்ரோ இது கட் பண்ணிட்டு போகாத அதான் நான் சொல்றேன் ஓகே ப்ரோ। यहां पे वो बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है लेकिन एक बार बात कर लेते हैं हमारी इंस्टेंट रिप्ले के बारे में जहां पे हमने देखा क्लज्जा स्पोर्ट्स के वो बेहतरीन एलिमिनेशन सुब का वो चार्ज बस्टर चार्ज करा बस्ट करा हमला करा आक्रमण करा और यहां पे दबदबा बनाया इस बुलशाई के एरिया पे। ப்ரோ நேத்து வந்து நம்பர் லீக் ஆயிருச்சு ப்ரோ ஃபோன் நம்பர் அதனால தான் ப்ரோ நேத்து கட் பண்ணிட்டு போனேன் जरूरत होने वाली है लेकिन कब दे पाएंगे वो देखने वाली 30 பேர் கால் பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ நேத்துல இருந்து इस मुकाबले के अंदर भी एक बड़ा गेम निकाल सकते हैं। आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग द बूया कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे बूया तक वो पहुंच सकते हैं लेकिन एलिमिनेशन के मामले में शुरुआत कर चुकी है यहाँ पे क्लज्जा स्पोर्ट्स। कौशिक वेंडिंग के पास रिवाइव करेंगे अपने टीममेट को किड को देखिए आप उनके पास ओपन निकल रहा ப்ரோ மறுபடியும் அடிக்கிறக்கே ஆனா सिक को और सिक के ऊपर उन्होंने क्या बेहतरीन कनेक्शन बनाया और वो एलिमिनेशन उनको अभी तक मिला नहीं है। रैकस गाल இன்னொரு ஒன்டா இருக்குமா வெளிய வந்தாருனா காலி ஆயிடுவாரு பார்த்தா सामने से देखिए वापस से किड अब आगे आते हुए सामने पार्थ होने वाले पार्थ बनाम किड क्या पार्थ यहां पे एक और एलिमिनेशन निकाल पाएंगे எதுக்கு படுத்தாருன்னு தெரியல நான் படுத்துறாரு और किड अपने टीममेट्स के साथ यहां पे कैसे इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे उनके हाथ में यहां पे M590 होगा एक बहुत बड़ा प्रचंड आक्रमण और वहां पे उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। रैकस स्पोर्ट्स में बंग मार रहा है यहां पे देखिए इलेक्ट्रोथेरेपी का इस्तेमाल करते हुए कैसी का एबिलिटी बहुत बढ़िया काल பண்ணவே இல்ல यहाँ पे जो ये कैसी का एबिलिटी होता है अपने टीममेट को आप हील प्रोवाइड कर सकते हो एक बंधन बना के रखता है जिससे फॉर्मेशन नहीं टूटती है। आपका क्या कहना है इस बारे में? एचडीओ ने எழுதுறா அப்படியே உன் நம்பர் சொல்லுங்க ப்ரோ நோட் வாங்க வாங்க। और आप अगर देखें मोबाइल टावर के बिल्कुल ऐसे एंगल से गए हैं जहां से उन्होंने अगर आप देखें राइट पिक नहीं दिया लेफ्ट पिक सामने वाले को देने ரொம்ப முக்கியம் நீ எந்த நம்பர் கூப்பிட்டீங்கனாலும் இப்ப வராது। दर्शक और जो भावी esports एथलीट्स हैं जो अपकमिंग दिनों में थैंक्स फॉर अनदर $1 एसजी क्वीन डेविड एसजी क्वीन थैंक यू सो मच। चीजें होती हैं आधार कार्ड काटेंगे ब्रो और टाइम में यहां पे एक छाप छोड़ जाती है कटिंग वांगा ये चीज थी जो हमने अभी करके दिखाई कि कहीं ना कहीं चाहते तो बिल्कुल आसानी से सीधा रश कर सकते थे बट सीधा रश करा नहीं उन्होंने। अगर आप देखें अपने राइट से गए जो अपने ओपोनेंट का लेफ्ट पीक होता है जिसके कारणवश जो है सीधा हेड कनेक्ट नहीं कर सकता आपका प्रतिद्वंदी आपके ऊपर उसका पूरा फायदा उठाया। और इस वक्त अगर आप देखें रैकस ईस्पोर्ट्स की तो पूरी तरीके से तूती बोल रही है प्रशंसा के पुल हमने बांधे थे किड के और अब तो ऐसा लग रहा है शोभित भी यहाँ पे अच्छी तरीके से अपना हाथ செலக்ட் ஆயிடுவாங்க ப்ரோ ஆடுனாங்கன்னா தெரிய ஆயிருவாங்க ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல ஆயிருவாங்க ப்ரோ விளையாண்டுருக்காங்க ப்ரோ அவங்கள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு ஆயிருவாங்க तरीके से क्लज्जा खेल रही है ना
ऐसा लग रहा है ये भी इस मुकाबले को बड़ा बनाना चाहते हैं, उनको भी மேகநாதன் ப்ரோ கண்டதையும் போட்டுருக்கு போறாரு. இப்ப நம்ம வந்து மாடரேட்டர் சடால்னு ஒரு டைம் அவுட் போட போறாங்க. அப்படியே மலா குளுந்து கிடக்க போறாரு சேட்ல பாருங்க. मुझे ऐसा लगता है कि கால் பண்ணா அட்டெண்ட் பண்ணாவா हर चीज यहाँ पे आजमानी चाहिए, और जब आप बड़ी टीमों को एलिमिनेट कर सकते हो तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। और जब आपके ऊपर इतना पांडी ब्रो थैंक्स फॉर द चाइटोस का सपोर्ट हो तो आईकू ओजीएक्स टीएसजी के लिए ये काम जो है ना, आसान तो नहीं कहूंगा बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जरूर ஆனா நீ என்ன ஏதோ நினைச்சக்க ஒண்ணு நினைக்க सकते हैं। टीम कियोस के खाते में 5 एलिमिनेशन मौजूद சாட்ல சும்மா விளையாண்டு இருக்காங்க. டைம் அவுட் போடு, டைம் அவுட் போட்டாங்க யாராவது ज्यादा करनी சும்மா வேற ஏதாவது நம்பர் போடாம டைம் அவுட் போடு, கண்டா எல்லாத்தையும் அடிச்சிரும். खाने इन्होंने चेक करा दिए हैं आज जिस हिसाब से अपने प्रतिद्वंद्वियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है यहाँ पे। அழகா மத்தி செய்யுங்க ப்ரோ. தமிழ் டீம்ஸ் எல்லாமே கிராண்டுக்கு வரைக்கும் போனா நல்லா இருக்கும். போலாம் ப்ரோ போலாம். कंसिस्टेंट नहीं है ये टीम के ऊपर आत्मविश्वास रहता है, கண்டிப்பா போலாம். அடுத்து 9 டீம் அடுத்த குரூப். मुझे लगता है जिस हिसाब से इस एडिशन में नंबर वोटाले टाइम आउट தான் பாத்துவாங்க. ஆமா நம்பர்னா की किरण थोड़ी ज्यादा बंदी है इनसे। मुट्टेन वाड़ेनाले टाइम होता सडाल एक और टीम एफएल आगे बढ़ते हुए जिनके ऊपर हमला करा जाएगा रोनित के द्वारा। कप्तान होने वाले टीम के एसवीडीवाई के साथ हमले। आईकू ओरंगुटैन टीएसजी हाथ में ग्रेनेड बॉम्बर रोनित ओ तपिस्टार राडे आगे बढ़ेंगे और वहां पे लीजिए एक ये अडिस्टांगडा आयुष का एचपी का वजह से कम वहां ओहो पे कैसे मान किया जाएगा अडी नोरत्रांगना अதான் टीएसजी டாப் चमकता सितारा डिफरेंस பாரு ओरंगुटैन टीएसजी के जब अंधकार आता है तभी ये सितारा चमकता है। ये वो खिलाड़ी है जो कि बहुत मुश्किल से मुश्किल नंबर ने போட்டா ஒண்ணும் பண்ண மாட்டாங்க ப்ரோ. வேற எதனா போட்டாங்க ப்ரோ. நக்கல் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க ப்ரோ. சாவடிச்சிருவேன். कितना कम उनका अरे अजय काल பண்ண ஸ்விட்ச் ஆஃப் और ஆமா ப்ரோ. दैट वाज गूज़बम्प्स फॉर मी। लेकिन अभी के लिए 11 टीम और 39 सर्वाइवर्स इस मुकाबले के अंदर। देखिए आईक्यू ओरंगुटैन टीएसजी उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि शेर थोड़े ஆடலாம் தான் நினைக்கிறேன் கிரண் ப்ரோ. அவங்க 4 பிளேயர் தான் வச்சிருக்காங்க. சோ ஒரு பிளேயர் வந்து எடுத்து ஆட வைக்கலாம். நீங்க சிட்டி குவாலிஃபயர்ஸ் 4 பிளேயர் தான் ரிவே பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணாங்களா. சோ இதுக்கு முன்னாடி அன்புஜய் ஆடிட்டு இருந்தாரு. இப்போ அவரை விட்டுட்டு இப்போ நோபிட்டா ப்ரோ எடுத்து ஆடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ये दबदबा ये डोमिनेशन दिखाते हुए जाएंगे और शायद इस बार भी इस मुकाबले में एक बड़ा यहाँ पे देखिए चुनौती वो हर एक टीम के लिए बना सकते हैं। वही बात करेंगे क्लजा ई-स्पोर्ट्स। ये ग्रुप बहुत डेडलीस्ट रहने वाला है रॉकी। उसी बीच रिजरेक्शन அடிக்குறாங்கடா அந்த மேட்ச். போயா போட்டாங்கன்னா டாப்க்கு வந்துருவாங்க. 11 एलिमिनेशन के साथ इतना बढ़िया खेलते हुए क्लजा ई-स्पोर्ट्स उधर से वहां पे अपना एग्रेशन दिखाते हुए और आईक्यू ओरंगुटैन टीएसजी तो रुक ही नहीं रही है। वो अपना शिकार चालू कर चुके हैं यहाँ पे। उसी के साथ टीएसजी आगे बढ़ेंगे लेकिन सिद्धार्थ को देखिए एक और एलिमिनेशन निकालेंगे। ऑब्जर्वेटरी का ये एरिया अभी के लिए अपना गढ़ बना चुके हैं। ஆட்டோ கனெக்ட் தான் ப்ரோ கார்டினேட் एक डजन एलिमिनेशन இந்த மெட்டாவுல ஆட்டோ கனெக்ட் தான் கார்டினேட் भविष्यवाणी कहीं ना कहीं करी थी आपने और मैंने दोनों नहीं ऑक्सीजन की। इस मुकाबले में कम से कम 18 से 20 एलिमिनेशन निकालने को ये टीम देख ही रही है। शुरुआत कैसे की थी तभी समझ में आ गया था और फाइनली स्काई लॉर्ड ई स्पोर्ट्स को एलिमिनेट करके बाहर का रास्ता दिखाएगी यहाँ पे रिजरेक्शन ई स्पोर्ट। 13 एलिमिनेशन इनके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। जिस हिसाब से खेल रहे हैं मुझे ऐसा लगता है 35 से 40 पॉइंट का बॉम्बर गिरा सकते हैं देसी स्पोर्ट्स। कहना पड़ेगा जिस हिसाब से इनकी टीम ऑन पेपर मजबूत नजर आ रही थी ऑक्सीजन, उस हिसाब से तो काफी डिसअपॉइंटिंग अंत। अभी तक 3 मैचेस में केवल 18 पॉइंट या फिर आप मान के चले 20 पॉइंट उनको मिले। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इस टीम से वो अपेक्षा थी कि कहीं ना कहीं 3 मैचेस में कम से कम 40 पॉइंट के करीब तो अवश्य करेंगे, बट ऐसा हो ना पाया। आईकू यहाँ पे लगातार अपने खिलाड़ी गवा रही है। दूसरी तरफ लगातार रिमूव பண்ணிட்டு 800 गेम போட்டேன்। 9 एलिमिनेशन इन टोटल। நீங்க அதே மாதிரி பண்ணி கேட்டீங்க। ஆமா उनके पास एक और एलिमिनेशन निकालने का मौका, हल्का सा उनको हाइट का लेवरेज चाहिए शायद खिला कर महाने बोल्ट में कर ही चला दी। कहां रुकिए उतनी भी मेहनत क्यों करते हैं, बोल्ट में कर लगा देते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है नॉकआउट के बाद एक रिमोट आने की संभावना है आटी क्योंकि அவ்வளவுதான் அர்ஜுன் தட்டறாரு போட்டு 6 கிலோ அர்ஜுன் देखिए सही समय पे प्रतीक्षा करी और जंप शॉट के साथ ये सी क्वालिफाइड அடுத்து வேற யாரு TEZ क्वालिफाइड रिजरेक्शन क्वालिफाइड டேய் நான் சொன்ன 6 டீம்ல 5 டீம் கன்ஃபார்ம் ஆயிரும்। இப்போ டிசியா இல்ல 4A மாங்கறதான் கேள்வியே இப்போ। इसी को देखने के लिए इतने दर्शक इनको प्यार करते हैं और कहते हैं ये फैंस नहीं आर्मी है, टीम नहीं आंधी है। जी हाँ गाइस, और ओजी टीएसजी आर्मी देखते हैं क्या यहाँ पे ये टीम एक और बूया सिक्योर करके हैट्रिक लगा पाती है कि नहीं। लेकिन इस वक्त वाल आपस में भिड़ चुके हैं ऑक्सीजन।
जिस तरीके से बमबारी हो रही है मुझे ऐसा लगता है रेजरेक्शन के लिए यहाँ पे बचना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। द फिक समथिंग जियान और सीदाक इस वक्त इस कंपाउंड को घेरे ग्रेनेड வந்துங்கறதால கான்சியஸா இருக்காங்க அவரு काफी देर तक आसरा बना के रखना चाहते हैं क्योंकि अभी भी 28 खिलाड़ी 60 टीम में मौजूद है। पहले நேருக்கு போன சவுண்ட் வந்துருமே से एलिमिनेट हो चुकी है और जिस तरीके से இதுக்குடா போய் அவரே உடைக்கிறாரு தஃபிக்கு लगता है कि सर्कल इसी के आसपास जाएगा। इस बार आईकू OGX TSG का पोजीशन उतना अच्छा नहीं है, उनको ओपन टेरिटरी में 4 AM का सामना करते हुए अंदर आना पड़ेगा। कमेंट में कहूंगा नो ब्रो है तो मल्टीपल थर्ड पार्टीज का शिकार बनेंगे। शिन शिफ्टर भी इस बार उनसे दूर जाता हुआ और मुझे लगता है इस बार शायद हैट्रिक को बूया नहीं लगा पाएगी ये टीम। पांडी ब्रो नो ब्रो बिल्कुल अभी के लिए अगर बात किया जाए सामने यार ये वाला में यूट्यूब पर बड़ा बला रहा ब्रो शायद यहां पे नहीं आएगा वो बूया, लेकिन आपने क्या वो रॉनिट का ग्रेनेड देखा? अगर मैं गलत नहीं हूं तो एलिमिनेट होने से पहले 3 एलिमिनेशन रॉनिट ने इंडिविजुअली निकाला, वो भी ग्रेनेड के साथ। लगता है बॉम्बर रोल को बहुत सीरियसली पूरे बॉय अடிச்சாங்கனா ஒரு வாய்ப்பு மேல வரக்கு। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये रॉनिट नहीं रणवीर है, रैकर सोड़ मारने बोले सुरेंद्र है अपने टीम के 6 टीम जोन राउंग है 24 खिलाड़ी इस मुकाबले के अंदर। आईकू ओरंगुटान टीएसजी इस मुकाबले से बाहर हो चुकी है। हैट्रिक का वो सब सीटी सेटुम பக்கத்துல இருக்காங்க और नई टीम आएगी हमारे सामने रॉकी ऐसा मारे போய் ஆகணும் உள்ள, वो भी अच्छी बात है। हर एक टीम का मौका मिलेगा यहाँ पे अपना यहाँ पे कहीं ना कहीं वो टैलेंट शोकेस करने का, अपना दबदबा दिखाने का। लेकिन अब देखिए रिजरेक्शन स्पोर्ट्स की बात करूं मैं यहाँ पे जियान के हाथ में स्नाइपर है। जियान ने एक बेहतरीन कनेक्शन बनाया, நல்ல ஷாட் நல்ல ग्रेनेड அது और साथ में दाफिक, और ये भी दाफिक नहीं द परफेक्ट फिट होने वाले अपने टीम के लिए। टीम 19 खिलाड़ी इस मुकाबले के अंदर। रैकर्स के पास भी वो 10 एलिमिनेशन का आंकड़ा पार हो चुका है। सामने से 4 AM Esports வந்துட்டாங்களா இப்ப இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி உள்ள வந்தா ஒரு வாய்ப்பு। உள்ள போறேன் உள்ள வரவனே நீ வெளிய இருக்கீங்க। ஓ ரெஸ்ட்ரக்शन माल மேல டாப் 1 यहां पे, और ये क्या प्रचंड रूप दिखाया है रेजरेक्शन स्पोर्ट्स ने। 20 एलिमिनेशन का आंकड़ा पार करती हुई ये टीम आगे बढ़ते हुए मार्च करते हुए हमलावर आक्रामक प्रचंड निर्भर। இந்த மேட்ச் ஒரு சான்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி தான் பாரு। ஆஹா நிஞ்சா வரை வெடிக்கு வந்திருக்காரு खिलाड़ी के ऊपर यहां पे ताबड़तोड़ यहां पे एलिमिनेशन निकालते हुए। அவ்வளவு நீ அவங்க விட மாட்டாங்க அதான் பிரச்சனை, सीटी से விட माटांगे। यहां पे 14 एलिमिनेशन रहने वाला है रॉकी। வரலே மரணடி வாங்குறாங்க पूरे के साथ कनेक्शन बनाते हुए और ग्लू பாவம் அவர்னால என்ன பண்றன்னு தெரியல அவருக்கு இப்போ। வாளில வரட்டே இல்ல அவருக்கு एक बार फिर से 1v3 स्नाइपर के साथ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रिजरेक्शन। जियान क्या खेलते हुए जा रहे हैं इस मुकाबले के अंदर। 22 एलिमिनेशन तक यार रनिंग है को अनलॉक कर चुके हैं यहाँ पे रिजरेक्शन स्पोर्ट्स। 24 एलिमिनेशन के साथ टीम केओस इस मुकाबले से एलिमिनेट हो जाएंगे। गाड़ी आगे बढ़ते हुए रिजरेक्शन सामने वो क्लासाइड के दो आटी उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा। समथिंग सिद्धार्थ दाफेग ये पूरी की पूरी टीम रिजरेक्शन स्पोर्ट्स இந்த மேட்ச் டாப் 1 அவங்க இப்ப வந்துட்டாங்க டாப்புக்கு। 27 கில் பிளஸ் மொத்தம் 39 பாயிண்ட்। और यहां पे उनके सब्स्टिट्यूट प्लेयर उज्जवल, ये पूरी की पूरी टीम ने बहुत बढ़िया खेला। 27 एलिमिनेशन पॉइंट रॉकी। தெரியல ப்ரோ वाओ 27 एलिमिनेशन। ओके आइतो वर्मा पूया के दे गॉट 39 points in a single match। இந்த ஸ்னைப்பிங் ஜியான் தான் வரீங்க அச்சாம் பாறா திரும்பி அங்க ரெண்டு வச்சாம் பாறா 40 पॉइंट निकाल के जाएंगे। पता नहीं क्या हो गया है, लगता है मेरी அந்த கிரேனேட் வந்து விழுகும் பாரு யாரிட்ட சித்திட்டு இருந்து ஒரு கிரேனேட் விழுந்தா டிசில காலி। बिल्कुल बीचों बीच फंस गए थे। लेकिन जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही कहा विध्वंसक रूप धारण किया था रेजरेक्शन ने, एक पल को तो ऐसा लगा कि शायद 2-4 टीमें और होती तो शायद वो भी कम पड़ती, क्योंकि जिस तरीके से நெல்லை மீன் தெரியுமா ப்ரோ? நெல்லை ப்ரோ நம்ம டிசி நெல்லை ப்ரோ தெரியும், இன்னொருத்தர் வந்து நான் பார்த்தனாலும் தெரியும், வீடியோ பார்த்திருப்பேன் பட் எனக்கு தெரியல। स्नाइपर्स की तरह मॉड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे ऑक्सीजन डिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम रिजरेक्शन அதுக்கு நிந்தடியா டாப் 1 வந்துருவாங்க। ஹரி ப்ரோ சொன்னானே திஸ் நாட் ஓல்ட் கேம் முன்னாடி டஃபிக்கு வந்து ஜியான் 2 பெட்டு தான் ஆடுவாங்க, ரெண்டு பேர் தான் ஆடுவாங்க, இதுல 4 பேரும் ஆடுற பிளேயர்ஸ் தான்। यानी कि समथिंग जो है कैसी का प्रयोग करते हैं विद जोसेफ निकिता और थीवा इस सपोर्टर की भूमिका में खेल रहे हैं। आपने बड़े अच्छे से विश्लेषण किया था वहां पे ऑक्सी किस तरीके से कैसी कारगर साबित होती है और दाफिक अली खान को इसकी कितनी सरसरन होता नहीं मैच मिल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 एलिमिनेशन एमवीपी बनते हैं यहाँ पे सिद्धार्थ 9 एलिमिनेशन के पास 7 एलिमिनेशन जियान के खाते में। आनंद बीमारी क्या वரும் தஃபிக்கும் ஜியானோ 5 एलिमिनेशन
This is the whole destructive team of Resurrection. चेक करा दिया पूरी की पूरी ग्रुप डी को कि यहाँ पे किस तरीके से सिद्धि இதுல இருந்து வந்தவரான் TSG ல இருந்து வந்தவரானா சித்தி धुरंधर परफॉर्मेंस देकर यहाँ पे विध्वंस कर चुकी है। M79 से अधिकतर एलिमिनेशन सिक्योर करे हैं यहाँ पे सिद्धू ने, यानी कि सीधा ரீசைனா திரும்பி வந்திருக்காங்க திரும்பி அமைச்சிருக்காங்கன்னு சொல்றாரா மூறாடே நீ டே 1375 का टोटल डैमेज और ये बॉम्बर திரும்பி வந்திருக்காங்கன்னு அர்த்தமா ரிசர்வேஷன் வேண்டா का गेम चेंजर साबित होगा। पिछली बार जब இப்ப கடிக்கிறியா சுரேந்திர तब इनके ऊपर कटाच किया जा रहा था कि आपके पास आईजीएल नहीं है, लेकिन गेस व्हाट, कमबैक करो तो रेजरेक्शन जैसा करो ऑक्सीजन, कमबैक करा, क्वालिफाई करा और मैच भी जीता है। किसके बदौलत? कप्तान की बदौलत जो बन चुका है एमवीपी। बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पे, जितना भी खराब हो कम बैक रिजरेक्शन की तरह होनी चाहिए। 27 एलिमिनेशन के साथ 39 टोटल पॉइंट निकाल के जाएंगे। एक मिनट 39 टोटल पॉइंट निकाल लिए उन्होंने इस मैच के अंदर, वाओ। और उसी के साथ क्लासा स्पोर्ट्स 24 टोटल पॉइंट्स, आईक्यू ओरंगुटान टीएसजी 17 पॉइंट्स, रैकर्स स्पोर्ट्स 15 पॉइंट्स के साथ, 4A 13 पॉइंट्स के साथ, और बाकी टीम्स का आप लोग देख सकते हो इंटेंस क्वैक टीम, एसएमआर, फ्लॉलेस स्पोर्ट्स, देसी स्पोर्ट्स, स्काईलॉर्ड स्पोर्ट्स और एसईए स्पोर्ट्स जो कि 7 से लेकर के 12th पोजीशन पर रहने वाली है। इन्होंने इतना कुछ खास एलिमिनेशन नहीं निकाला, लेकिन जो डोमिनेशन दिखाया है रिजरेक्शन ने, क्लासा स्पोर्ट्स ने, इवन आईक्यू ओरंगुटान टीएसजी ने बहुत बढ़िया खेला। நைட் என்ன டோர்னமென்ட் ப்ளே பண்ண போறாங்க? நைட் வந்து சசி ப்ரோ அது ஒரு 20k கிராண்ட் ஃபைனல் சொன்னேன், மத்தியானம் தான் செமி முடிஞ்சு, நைட் தான் கிராண்ட்। और सिर्फ आप आईक्यू ओरंगुटान टीएसजी की तारीफ ना करिए, क्योंकि डोमिनेशन हमको भी दिखाना आता है, प्रचंड रूप लेके हम भी आते हैं। देखिए एक बार बात करते हैं सर्कल के बारे में, एनालिसिस करते हैं इस चीज का, यहाँ पे किस तरीके से वो रोटेशन ली गई थी हर एक टीम के द्वारा, कि फर्स्ट सर्कल में इतने कुछ खास एलिमिनेशन आते नहीं है। हर एक टीम शुरुआत में आराम से लूट करती है, अच्छी तरीके से अपना रिसोर्सेज बिल्डअप करती है। असली मुकाबला, असली आक्रमण शुरू होता है सर्कल 3 के बाद से, जब हर एक टीम एकजुट आते हैं। देखिए इवन रिजरेक्शन का शुरुआती तौर पे 8 एलिमिनेशन आया था, एंड दैट्स अ गुड थिंग कि उनका शुरुआत सच में बहुत बढ़िया हुआ था। आखिर में जब 4th सर्कल में ये टीम अपनी अल्टीमेट पोटेंशियल को अनलॉक करती है, तो ये किसी की बात नहीं सुनते और उनकी रोटेशन वो चीज दिखा रही है। जब उनके सामने क्लासा स्पोर्ट्स आते हैं, उनके सामने 4AM स्पोर्ट्स आते हैं, इवन आईक्यू ओरंगुटान टीएसजी को भी रिजरेक्शन के प्लेयर्स नहीं एलिमिनेट कराता, 7 सर्कल पे आके ये गेम समाप्त होता है, वो अपने खाते में बूया लेके जाते हैं। अनबिलीवेबल, जिस तरीके से रेजरेक्शन ने जैसा सोचा बिल्कुल वही करके दिखाया, ये देखकर काफी दिल खुश हो गया। और एक ही मैच में वो जो पिछड़ रहे थे उसका कवर अप यहाँ पे कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं आईक्यू ओजीएक्स टीएसजी 79, रेजरेक्शन 3 मैच के बाद 74 पे आ चुके हैं। क्लासा स्पोर्ट्स मुझे ऐसा लगता है शायद दूसरे पायदान से तीसरे पायदान पे गिरा 66 अंक। रैकर्स स्पोर्ट्स के खाते में 47, एसएमआर के खाते में 39, केओस के खाते में 35, 4AM की लंबी छलांग 30 अंक उनके खाते में, स्काईलॉर्ड स्पोर्ट्स 25, एसईए स्पोर्ट्स 19, देसी स्पोर्ट्स 18, फ्लॉलेस स्पोर्ट्स 17, इंटेंस 16 अंक। और ये 3 मैच के बाद स्टैंडिंग्स है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस वक्त बॉटम 3 की टीम्स है ना, क्षमा चाहूंगा बट मुझे लगता है यहाँ पे हरी ब्रो लास्ट ईयर நம்ம கேமிங் திருவிழால ஆட்டோ பாட்ஸ் கேம் போட்டோ எடுத்தோம் ஞாபகம் இருக்கா bro? நான் கூட நீங்க ஏன் இவ்வளவு டீசன்ட்டா இருக்கீங்கன்னு கேட்டேன் bro। கீர்த்தி bro கேட்டது ஞாபகம் இருக்கா? நான் ஃபேஸ் ஞாபகம் இல்ல எனக்கு। கீர்த்தி வாசன் bro शुरुआत अपने உங்க போட்டோ ப்ரொஃபைல்ல வைங்களா, உங்க போட்டோல ப்ரொஃபைல்ல வைங்க, நம்ம எடுத்தோம்ல அந்த போட்டோ மட்டும் ப்ரொஃபைல்ல வைங்க, நான் அத பார்த்தா ஞாபகம் வந்துரும் எனக்கு। लेना उनका फोटो मत கூட வைங்க, எனக்கு ஞாபகம் வரும்। आपसे जिस तरीके से यहाँ पे रेजरेक्शन और आईक्यू ओजीएक्स टीएसजी 3 मैच में बिल्कुल साफ कर दिया उन्होंने कि ये तो यहाँ से आगे जा रहे हैं। ब्रो இல்ல அந்த செல்பல் பிராண்ட் வந்து 1 லைவ் ஸ்ட்ரீம் வந்து போட சொல்றாங்க, அதுக்கு पाते हैं कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा दर्शकों को। रीजन डेसा என்னால லைவ் வர முடியல ड्यू टू सम पर्सनल रीजन, लेकिन देखने वाली बात होगी कैसे कर पाते हैं। ब्रो நான் ஒண்ணுமே சொல்லலையே ब्रो। ब्रेक के बाद लौटेंगे बाकी के बचे हुए 3 मैचेस के साथ के ओके बाय, यू टेक द ब्रेक, आई गो द इंग्लिश लाइव। ராக்கி மாமு அவர் போயிட்டாரு, நம்ம இங்கிலீஷ் லைவ்ல பிரேக் ஓடிட்டு இருக்கோம், அதான் போட்டிருக்காங்க। இங்க யாரா இருந்தா வரைக்கும் யாருக்கு தெரியும் fall down from the இவங்க இவங்கள தான் ரெகுலரா வராங்கடா। நம்மால் வந்தாருன்னா கொஞ்சம் கவர் 4 பேர் தானே இது காஸ்டிங்க்கு। அடக்க நண்பர் ஃபைல் வாங்க ப்ரோ, வராதீங்கன்னு சொன்னா வராதீங்கன்னு தான் சொல்லுவாரு சார், வராதீங்க சார் ப்ரோ, ஒரு பிரச்சனையை முடிச்சுவாங்க। அப்படிதான் நினைச்சேன், வராத சரவரோ வராதங்கிறேன், நல்லதுதான் விட்டுருங்க,
போய் பிரச்சனை முடிங்க சார் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இதெல்லாம். கோல்டு இருந்தால் சென்ட் பண்ணி என்ன டோர்னமெண்ட் ப்ளே பண்ணுறாங்க ப்ரோ? அது ஒரு 20,000 டோர்னமெண்ட் ஒன்று, ஃபைனல் ஒன்று. ஓகேவா? அதுதான் வடக்கு நண்பர் ஒய்டி சேனல் தெரியும் ப்ரோ. அது எனக்கே தெரியாது. நைட்டு லிங்க் அனுப்பலாம் தெரியும். விளாட்றாங்க மட்டும் தான் தெரியும். விஷால் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த லெட்ஸ் மீ குக். லெட் ஹிம் குக்கா? அது என்ன ஒன்று. தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஜுவல்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் த வடாபா விஷால் ப்ரோ. தேங்க்யூ காய்ஸ். அந்த ஜுவல்ஸ் தான் சென்ட் பண்ணி விடுங்க எல்லாம். இது வேற காப்பிரைட் காய்ஸ். இந்த இது வேற. யாரு டாப்ல இருந்து யாரா? இது TSG ஆனா ரெசரக்ஷன் 5 பாயிண்ட். ரெசரக்ஷனுக்கும் அவங்களுக்கும் 5 பாயிண்ட் டிஃபரண்ட். 7 பாயிண்ட் போய் இது 2 பொசிஷன் மேல வந்திருக்காங்களா? சம்மர் மேல வந்துரும். இது கீழ போயிரு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. KS 30 அடிச்சாங்கன்னா மேல போறாங்க. ஆனா 4 அடிக்கும் மே KS. NKG எங்க ப்ரோ? NKG இன்னைக்கு ஆல்ல ப்ரோ. NKG they are playing next week. நீ டேட் சொன்னாங்களாடா? இவன் 6ஆம் தேதி சொல்லி வச்சிருக்கிறியா? அது மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆவற டேட் சொல்லிக்கிறார். அப்படியா? குரூப் ஸ்டேஜ் 6ஆம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுதா? 6ஆம் தேதினா வர்ற சனி ஞாயிறு இல்லாம அடுத்த சனி ஞாயிறு. அடுத்த வாரம் புதன் வியாழன் வெள்ளியா? வியாழன் வெள்ளி சனி தானே? ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே. Thursday Friday Saturday Sunday. அரே bro now check my DP காட்ல bro எனக்கு. இருங்க ஒரு நிமிஷம். நாம இருக்கு. எஸ் ப்ரோ நாம இருக்கு ப்ரோ. நல்லா இருக்கீங்களா? என்ன போய் டீசெண்டா இருக்கீங்கன்னு சொல்றாரு ப்ரோ. எனக்கு அப்படியே ப்ரோ ட்ரெஸ் பண்ண தெரியும். அதனால ஆள் அப்படி நினைச்சாரு போலானே. ரவுடி மாதிரி வரணும்னு எதிர்பார்த்திருக்கீங்க ப்ரோ. ரெவிடி மாதிரி கூட இந்த தடவை வரும்போது புள்ளிங்க வாட்ட வரேன். பச்சை கலர் பேண்ட்டு, கத்திரி கலர் சட்டை, சரியா? விக்கி மோஸ் கலர் செருப்பு, சுவு, என்ன மண்டையில ஆரஞ்சு கலர் டையி, கையில இந்த பக்கம் ஒரு கர்ச்சீப்பு, இந்த கையில ஒரு இது பென்டன் வாட்ச், சரியா? கழுத்துல ஒரு நாய் செங்கிலி. மிரட்டி விட்டுறலாம் விடுங்க இந்த வருஷம். கண்ணாடி வந்து கிளாஸ் இல்லாம. ஆமா ப்ரோ லைவ்ல ரவுடி மாதிரி இருக்கீங்க. ஆனா நேர்ல இன்ட்ரோவர்ட் ப்ரோ. நல்ல பையன் ப்ரோ. நானே ரவுடி மாதிரி இருக்கேனா? உரியிலே வர ப்ரோ. என்னைய ப்ரோ गाइस என்னை எந்த ஆங்கிள்ல பார்த்தா ரவுடி மாதிரி தெரியுதுன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. Welcome back to என்ன எந்த ஆங்கிள்ல ரவுடி மாதிரி தெரியுது என்னைய? First half has already given us plenty பேப்பர் ரவுடி ப்ரோ. but these இப்படி வந்து இது வருது. My name is Oro with me. என்ன பார்த்தா ரவுடி மாதிரியா गाइस இருக்கு. பேப்பர் ரவுடி ப்ரோ. பேப்பர் ரவுடி. Fresh rosters and plenty of expectations. ரவுடின்னு எழுதி கொடுத்தாலே எனக்கு படிக்க தெரியாது ப்ரோ. என்ன போய் ரவுடிங்கறீங்களா ப்ரோ? Right now stepping up seems to be iCoach TSG but right எல்லா ஆங்கிள்லயும் ஜோக்கர் மாதிரி தான் இருக்குது. அதான் அவருக்கு மட்டும் நான் புதுசா தெரிஞ்சிருக்கேன் गाइस. And they have been delivering blows. Unlike yesterday's start, right? Nebula did not have the best. அப்படியே silence bro. To Arise did not even qualify. So at least for the fans out there, நைட் வாட்ச் பார்ட்டி பண்றோம். ஆமா கிக்ல இருக்கும். YouTubeல போட முடியாது. கிக்ல போடுறேன். There are some more players that were intending, waiting for this opportunity, now stepping Sound up on these stairs to fall. அவ்வளவுதான் bro இருக்கு. இதான் bro நானும் சொன்னேன். இங்க சவுண்ட் இருக்காது ப்ரோனே. இவர் லூசிபர் இருக்காரு அதனால பார்க்கலாம். You know, if you look at the scoreboard right now, iQOG XTSG, they have already almost confirmed their qualification, which I feel because they have already got 2 booyahs, right? And if you get correct, you know, 79 points in 3 games, you can expect fireworks, and they're already delivering it, right? And you know, you are just left out with the rest 4 slots or the 5 slots which are left out. So let's see how that pans out, because Platza, they are also doing well alongside Breakers and Team SMR, because all these teams who have come in through the city qualifiers, they're actually showing up well. Everybody has to, but right now let's see what top 4 select aniki. While you can also put it up in the chat and let us know. And we both have Klutza as well as Resurrection along with iCoach TSG. It's just the numbering from 1 to 3 that's different between us, because hey, that's what so far has been happening, and one after another every team has been doing well, but these are the top heavy teams. And you were mentioning, Oro, that hey, we look like we are at a run similar to what happened in Group A, a top
heavy end game here in Group D as well. So far, that's been the case. 3 games are done, 3 more left, and I'm worried if the teams at the bottom, especially at 5, 6, 7, and 8, miss out by not just 1, but maybe 5, 6, or maybe even 10 points. So I hope teams start coping up, because now the maps, they start speeding up. You know, the recovery has to start from Solara. And knowing the fact that Solara is an aggressive map, you can get those, you know, high number of elimination and rack up your scoreline in the leaderboard. And that is something which would be required from all these teams which you spoke about. You know, they are at the bottom right now. Speaking of Team Chaos, 4AM, or Skylord Esports, who have that opportunity to still make it to the top 6. And look at TV Tower. I don't believe it right now, because I see Bloomtown and Casa Vista as open. And also Delta Isle. These are அண்ணா படத்துக்கு போல நீ பீக் அனில்னு சொல்லிருக்கா going there, and some, இல்ல you know, teams are going to obviously go there, and you know, there are going to be இப்போ நான் early வந்து clashes. But where are those clashes going to be? Is it going to be according to the preferred drop spots? ஆச்சி ரவுடி மாதிரி பண்ணு நான் நாளைக்கு தான் படம் வருதுன்னு நினைச்சு இன்ஸ்டாகிராம்ல இன்னைக்கு போட்டு விட்டேன். நீ நைட்டு 1 மணிக்கு காலையில வந்தா தெரியுது படமே இன்னைக்கு தான் ரிலீஸ். அட கடவுளே, வெள்ளிக்கிழமை நம்ம எல்லா படம் ரிலீஸ் ஆகும். They can anticipate that there could be a clash right at the hot drops, but generally, because there is a lot of survival now being involved, as we've already done with half of the games. ப்ரோ இப்ப காமிக்கிற டிராப் பாயிண்ட்ஸ்ல லேண்ட் ஆகுற எங்க வேணாலும் ப்ரோ அது கம்பல்சரி அது ஒரு பிரெடிக்ஷன் மாதிரி. அது ஆல்ரெடி கேட்டிருப்பாங்க எல்லா டீமேட்டையும் எங்க இறங்குவீங்கன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அங்க வருவாங்கன்னு சொல்லி அவங்க சும்மா போடுவாங்க. பட் அங்கேயே போகணுறதா இல்ல. They have to figure out what's the approach here in Solara. Is it going to be studio, put up a show, or is it going to be completely at a different spot where you don't have to be worried teams getting closer? Delta Isle generally a little bit of. Hey guys, like பண்ண லைக் போட்டு பாருங்க. That's going to be the same engage today யார் யாரா Yeah, தெரியல ப்ரோ பாருங்க தெரியும். சரி வாங்க மேட்ச் பார்க்கலாம் for sure, because that's where you get a better idea that where the circle is going to turn out. But right now it is looking quite centric, a little skewed towards the southern end, where TV Tower is kind of the center of this plane path, but the two ends are hub and the base side, and as expected TV Tower is not at all clustered. Are bro HD print வேணுமா bro? வேணாம் you know, in the preferred drop spot it was said to be that 4 or 5 அப்படி அந்த மாதிரி பார்க்கவே மாட்டேன். ஒரு மாசம் விட்டு பாப்பேன். Surprised to see that, but funfair because பட வரதுக்கு முன்னாடி பார்க்க மாட்டேன். பட வந்ததுக்கு அப்புறம் வேணா அத கரெக்ட்டா பாப்பேன். For a joyride maybe. தியேட்டருக்கு போய் பார்க்க வேண்டியது. Team Ico OTT ல வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் bro. நானே வெயிட் பண்ணி பாப்பேன் OTT ல. Delta Isle for them to grab up their armory, get them ready for the next fight. Game பாருங்க. And we ended up seeing Resurrection already picking up their very first, along with Team Chaos. கொஞ்சம் கேம் சவுண்ட் ஏத்துறாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இங்கேயுமே. To get their players back up in action. You know, I'm so happy to see all these teams back in the lobby, these known faces, these experienced ரெண்டுமே ஒரே தானே அப்புறம் இது இல்ல இது ப்ரொடக்ஷன் வந்து அது வந்து ஹிந்தி வந்து இதா இருக்கும். இது கொஞ்சம் இதா இருக்கும். ஒரே டீமா தான் இருக்கும். பட் ஆனா கொஞ்சம் இது team Ico already got eliminated. அதே ஃபில்டர்ஸ் அதெல்லாம் மாதிரி போட்டுக்க மாட்டாங்க. சவுண்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் ஹிந்தி ஆடியன்ஸ் தான் நிறைய பேர். I'm sure one player would have அத பாஸ் பண்ணி the memo. But right now it is SEA who are fighting against Team SMR. மூவி வந்து SMR எதுல வந்திருக்கு OTT ல? See if they'll be able to hold it out. bro இன்னைக்கு தான் ரிலீஸ் ஆச்சு. அதுக்கு எப்படி ஓடிட்டு It seems like they are picking eliminations. 4AM in trouble in the chaos of SMR. We spoke about Desi Esports. They did bring back their players, but right now fight against Lakers. It seems like Shobit gets taken down. His teammate Mysterious will put Freck down. That Max 7 coming into action, bringing back Shobit also up in the same time, and having a total of 3 eliminations. They will be able to hold this Bolt Maker in control. Yeah. This is a solid looking roster, right? You know, so is Team Chaos, where, you know, we see as I was speaking, there was one member spotted out and taken down as well. It is Apart bro hide போட சொல்லிறேன் சைலண்டா இருங்க. பிரச்சனை உண்டு பண்ணிட்டு போறான். ஏய் என்னடா UMP வச்சு அடிச்சிராரு. Ruva from SMR, and his position is known with that UMP. That's a little ambitious in that range. You need a better weaponry, but you have no ஏண்டா ஃபேமஸ் இருக்குதா அப்புறம் அதுல அடிக்கலாமாடா? He needs to run away or have to find a spot for himself. ஃபேமஸ் அடிக்க வராது போல. He is fighting back right now, and this is going to be a little difficult. The utilities are coming in, Lucifer, and he dashes in. This is sad. With that Maxen, he finds him one elimination. Actually, the third one for him. இப்போ கூட SEA கெல்லாம் சான்ஸ் இருக்குது பார்க்கலாம். அடிச்சு வராங்க கம்பேக் அப்படியே. SEA Sports, they know why they are this way, is because they need to enter the top 6. The difference between them and SMR, as you can already see, is almost around 20 plus points. So if they need to get there, they need a lot of points. And right now, Klutza, they don't have that trouble, but the challenge coming in from the opponent team,
Flawless Esports, they are sitting at almost the bottom, if not for IQ. Therefore, Klutza going in for a challenge against them, not the right bet or the play to make. And Klutza instantly wiped them out 4 eliminations in total for just one player and 6 in total for Klutza as a whole. Yeah. Rakers, Himanshu Jr. and Kid being a part of, Kid Team Legacy's roster. We saw them in TEZ FFMIC 2026 spring. They were good then, but they could not make it to the knockout stages. But this time around, they hope so, that they're prepared much more than the last time. But let's see. They're pushing in right now. 4 aim part. Obviously would put in the glue wall. He has backup. Gyro there. Mysterious. He immediately uses the time. Gyro is already taken down. Rakers. Kid has already been taken. One trade has to come by. Fiva helps him to get the revival quickly, but Mysterious falls again. Our team is not looking the way, the correct outcome which was expected from Rakers' end. Game வந்து விளையாடுறது நீ அடுத்து வரணும் அப்படி இல்லனா நீ கிக்ல வந்தீங்கன்னா அங்க விளையாண்டு தான் இருப்பேன். Yeah, I was surprised of them just trying to slide back and forth on the rail. While they knew the player was right in front, but the challenge was them being protected with the glue wall and not ready for the fight. And seems like somewhere in the mix, Sick gets eliminated. Nothing anywhere close to where the 4am players just picked up the players of Rakers, so not much to be worried about. Just one elimination given away. On the other end, SEA Esports, we were talking about them. They need a lot, and right now it seems like a sea of 5 eliminations in total is what they've managed to pick up. Something not same for Desi Esports. It's only one. We've been just seeing them suffering losses, reviving their teammates, and now they have an opportunity to fight, and right now in front of them, maybe this is the opportunity as they try to pick on Skylords. Desi Esports right now, locking horns, but not interested in that way to, engage into this fight. But SEA, they have showcased that they want to fight, and as you clearly told that there's a 20-point difference between them and LSMR, so they need those elimination numbers, and Solara is the perfect way to start, because you still are left out with 2 more games after this, and after this game is done, managing that buffer is going to be very ஆடுவாங்க bro. அடுத்த வீக் ஆடுவாங்க அவங்க. அடுத்த வீக் ஆடுவாங்க. slide rails, dodging all the bullets, and SEA, that was unfortunate. 42 டீம் போதுடா. 42 டீமோட அவங்க அங்க இருந்து அந்த டீம் ஆர்ஜி வராங்க. None of them connecting. What happened? ஏய் பைத்தியாரா, இந்த வாரம் தான்டா இது. அடுத்த வாரம்னா 2 வாரம் கேப் இருக்குடா. 10 நாள் இருக்கு மேட்ச். 26ஆம் தேதி ப்ரோ 10 நாள் இருக்கு. இன்னைக்கு 23 தான். 23 Esports even after all that. எத்தனாம் தேதி மேட்ச் முடியுது? 26 முடியுது. அடே 2 வாரம் இருக்குடா அப்பனா இன்னும். Rakers அதாவது வர்ற சனி ஞாயிறு முடிஞ்சு அடுத்த சனி ஞாயிறு முடிஞ்சு அதுக்கு அடுத்த சனி ஞாயிறு. Right now for SMR, we have seen him fight again alone. அடுத்த வாரத்துக்கு அடுத்த வாரம், but this time he manages to take down with that launcher. வாரத்துக்கு சனி ஞாயிறு அடுத்த சனி. ஏய் गाइस இங்க பாருங்க, இது சனி ஞாயிறா? இது ஒரு சனி ஞாயிறா? அது டேய் அடுத்த மாசம்டா. டேய் பைத்தியாரா, நான் சொல்றது கரெக்ட் தான்டா. வர்ற சனிக்கிழமை முடிஞ்சு அடுத்த சனிக்கிழமை முடிஞ்சு அதுக்கு அடுத்த சனிக்கிழமை. இந்த வாரம் immediately jumps onto 5 elimination points, and this is what we expected from Team SMR. 26ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் 1 வீக்ல bro, 2 வீக் இருக்கு bro. Default and DVG right at the nick of time helps him out, and that is going to be an end for Default as well for AM, but it's இந்த வீக் இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீக் முடியுது, இதுல வந்து செகண்ட் வீக் முடியுது, மூணாவது வாரம் இங்க. அதாவது 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 நாள் இருக்கு இன்னும். SMR will be happy. Esports, they are also happy as அவன் இந்த மொத்த மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமே 10 நாள் இருக்குன்னு சொல்றான். நான் இதெல்லாம் முடியாமயே 14 நாள் இருக்குன்னு சொல்றேன். 2 வாரம் வர கரெக்ட்டா. Okay, one for Armo, but nothing much left as he also அப்ப அடுத்த வாரம் ஃபுல்லாவே நார்மல் லைவ் गाइस. SEA, they might have dabbled with giving one elimination away. Nothing much to be lost or being sad about, because they have in total 4 eliminations, which they just got more, and total of 8 to be. Week on week he's still surviving for Team Chaos, so as long as he's surviving, see, immediately he brings back, he gets the opportunity to bring back Armo there. So one by one, I would expect Team Chaos members to join back the lobby, but they're very close by. Team IQ, GSTSG have decimated the lobby today with 2 booyahs already, finding the third one.
I'm sure they would want to replicate what Team Lead did or would. அப்ப போ சொல்ற இப்பதான்டா அதிக நாள் லீவ் இருக்குடா இப்பதான்டா பண்ண முடியும்டா அடுத்த வாரம்லாம் பண்ண முடியாது அதுக்கு அப்புறம் TSG would be happy to do it. ஆன்லைன் This very moment they have to fight against SEA to do that, make it successful, and SEA made it very solid and clear that they want those elimination points. Yeah, they're trying to climb Mike up. Vittu ke Solara is working out for them. Mike Vittu ke Enquiry TSG, they've held their fort right as of now, and they are able to at least hold off SEA from attacking in their forefront approach. Link irukku link Ayush ready, he spotted the players, call being given, and now they want to make a quick jump to it. Steffi being used, and right now I want to see if it's going to work out. And there is the opening, that's what they wanted, all the players down, quick on the reviver, SEA Esports, but it's going to work out. Personal, Ayush being used, and even Ronin together, and Krish coming in, 3 of the players down, only one who made it across, while the entire 3 players confirmation works for Enquiry TSG. They've always been the team who has been mechanically gifted, but they have always lacked on the direction part. And with Ronit coming in, you know, that part is looking so solid. Even though this is still day one, and slow please, you know, everybody would want to hold on to the horses because they still have to prove a lot. And there are some changes on this roster, even though they still made it to land sacrifice பண்ணனும் bro நான் எல்லாம் sacrifice பண்றேன் பாரு என்னோட ஸ்லாட்டையே sacrifice பண்ணிக்கிறேன் நான் விளையாடலன்ட்டேன் அதுக்கு அப்புறம் தான் நான் விளையாட்டா நீங்க விளையாடுங்கன்னு சொன்னா ஜோபி லார்ட் போனதுக்கு அப்புறம் இல்லடா வேணாம்டா அலிம் ப்ரோவே ஹைப்பர் ப்ரோவே எடுக்க அலிம் ப்ரோவே ஆல்பியன் ப்ரோவே எடுக்கலாம்னாங்க நீங்க பெஞ்ச் ஆகற மாதிரி இருக்கீங்க அப்படினா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல நமக்கு டீம் நல்லா இருந்தா போணும்னு சொல்லிட்டு நான் அப்புறம் நான் பெஞ்ச் ஆயிட்டேன் அப்புறம் ஆல்பியன் ப்ரோ போனாரு ஹைப்பர் ப்ரோ போனாங்க அப்புறம் know that the other players were from a completely different team, and even the last survivor ஹைப்பர் ப்ரோ ஆல்பியன் ப்ரோ போனாங்க அப்புறம் கூட நான் ஆட சொன்னாங்க நான் தான் வேணாம்டா இல்லடா ஹைப்பர் ப்ரோ எடுக்கலாம்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். So therefore they just get almost nothing. நீ நம்பிக்கலாம் டோபிட்ட கேட்டு பாருங்க இல்லன்னு சொல்லுவான் انا அந்த மாதிரி சொல்ல இருக்கேன் வேணாம்டா இல்லன்னு சொல்றான் to brag about. And Enquiry TSG, it is kudos to them. மணிட்ட கேளுங்க மணி தான் உண்மை சொல்லுவான். Seems like similar fate for Skylord Esports. They thought they were running towards a safe haven at Riders Club, but they get entered towards the Flawless Esports' control. Flawless Riders now keeping control at this position, holding and even reviving the team. Bro, நம்ம கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போனோம்னா இன்வைடர் ஸ்லாட் வரும் bro. சரியா கவலைப்படாம இரு. இன்வைடர் ஸ்லாட்ல அடுத்த வருஷம் போறோம். Their approach while they're at the bottom of the charts, they need to acquire a நம்பிக்கையோட இருக்கேன். நடக்கும் நம்புவோம் அவ்வளவுதான். Even after taking down 2 of the players. Yep. You know, we have always seen teams facing problems with eliminations or either with survival game. நானும் பிரேக் எடுக்கலாம்னு இருக்கேன். Elimination. உனக்கு என்ன பிரேக்? Right now they would சுரேந்தர் want to take more. டேய் நீ கிளம்புடா உன்னை யாரா அழுகுறா உன்னை யாரா புடிச்சிட்டு தொங்கறா நீ போடா கம்முனு சுரேந்தர். Oh wait, Abhinav, how did he land up here? It is a different team. That's Skylord Esports, and they get sandwiched in the meanwhile. But Kishu gets caught. one side domination TSG resurrection going on. But that was not the case. What Enquiry is in the mood to do. இல்லடா irra என்ன resurrection இருக்காங்கடா as he should because he's the last man. Because he has no way to run out. ஆமா இவங்க எல்லாம் மேல போய்ட்டாங்கன்னா நமக்கு தான் ரிஸ்கா. Not the best spot to be at, and he will be found by Arjun. That is the end for Team Chaos, and they got ended up at the 6th spot. Now 4 AM. எவ்வளவு பாயிண்ட் நம்ம முடிச்ச 124. They acquired 7 eliminations. The difference right now still stands. As long as they survive, find some more eliminations or maybe placement points for themselves, they should be able to make it across. And right now, Rakers, they don't have much to be worried, but they soon might be in trouble. And there it is. That's going to be Ziyan. We just saw how Resurrection pulled off a booyah, and now Ziyan is just popping off 2 of the players down. Thankfully to the Chrono, quick on the revive, and they will be safe for the time being. Resurrection, that was a little too much for Rakers to bear on. Wow, I mean, Rakers, Resurrection, Enquiry, XTHG, Klutza, it's the bigger names. Like put guys, players are still surviving. It feels like the newbies against the bigger names. Where Enquiry, XTHG are dominating right now with 17 already. In the meanwhile, Skylord Esports gets eliminated and Klutza, they're on a roll as well. While they are on a roll, 10 eliminations in total, but right as now Enquiry TSG, they are at 17. If you talk about somebody on a roll, they're the roller coasters of this game. Yeah. And game number 4, it seems like what they wanted to make a back-to-back
which got stalled by Resurrection. They might be able to pull it off here in Solara. SMR right in front of them. Ronit did send off a shot and even an answer back. But right now a charge in Ayush, closing the distance with his teammate Krish up front, but receives a lot of damage. Sanket trying to hold off a quick dash coming in from DVG, and he knocks, gets the elimination on Krish. That was brilliant. Instantly right now wounding the side of iCoach TSG in terms of numbers. And DVG, what a dash that was, almost in midair, then crashing down towards Krish. But right now, even them losing a player a little hot on that hit was SMR. They should have slowed it down, but rather decided to charge, thinking they have the complete advantage against iCoach TSG. They get taken down. It's down to the last two players. Who's causing the problems right now, Lucifer? It's for 4 a.m. Path is already taken down. Default. Shows his face. It's going to be problems. And look at Ronit with that Winchester. He's also creating problems. Default, he still manages to crawl inside the circle. But look at Ayush, he uses the railroads to close in the distance. He literally jumps in with them, 590, onto 4 a.m. He goes, puts in the glue wall, creates a distance for himself, but Ayush is there to support him for now. Ayush, can he do it? Unfortunate. There's been shots taken. Ayush gets knocked. However, his teammate is close by Ronit. A shoulder that they can believe on. As 4am, they don't have the numbers, and Sik gets taken down. Confirmation going for Ayush. He was the one who was knocked, but he's back up on his feet and is already firing. 21 in total elimination. Gyro up close, but what can he do? On one end, there is another team completely eyeing on him, and now his numbers not that great. A 1v2 situation, tries to isolate the duel, but instantly with the glue wall. Backs off Gyro, not for long, as Ayush back with his M590, puts him down, and 4am are out, down to our top 4 teams now. Wait, what was Shubh doing there? I thought he should have been the best man to who was spectating the fight all along. He could have third party, which he's doing right now with that M249 going berserk. Will he be able to find one knock? But it is Zian who is doing the damage for Resurrection. He is doing those eliminations. And there goes Resurrection denied by Resurrection. It's a 1-3-4 for Shubh. And look at Siddharth going for crazy with that. He wants to knock himself, but it is Zian who steals it. And says, let me get one more for myself, and it is Resurrection with back-to-back booyahs, Lucifer. Resurrection, brilliant stuff. There is telling. It's not only Aiko OG TSG. They might have been the invited squad, but we are not going to let them just walk away, run away with opportunities. We will also put our foot down, get these eliminations, get a booyah for ourselves, and also show everybody that there is another team to dominate in the lobby. And therefore, we called it in our game number 4 start that this is going to be very top heavy. Let's take a look at the last shot. It started with me watching Klutza as well as Rakers, and Rakers all alone, just sighting across, and thanks to the help of Zian as always, being a menace with that sniper. You did see Ayush also try his best, but the numbers not that great on Aiko OG TSG, and then Resurrection in all directions that they spotted the opponents, took all of them down. I mean, Resurrection Esports, the name couldn't be more fitting, Lucifer. Players who once carried different banners have now united under one. They're not rebuilding careers, they're rebuilding expectations, and they're doing it so well. Dafiq, the way he has grown, the way he has shown maturity in this lobby and today's 4 games is immense, right? Look at Siddharth. There are 2 snipers in the lobby. Known as one of the best community, and that gives them link வந்து கமெண்ட்ஸ்ல கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. இதுல போட முடியாது, ஏனா இது கட் பண்ணனும், தனியா தான் இருக்கணும். அவரை போட்டு மறுபடியும் 9 மணிக்கு வர மாதிரி இருக்கு. அது வேணாம்னு சொல்லிட்டு நான் கிக்ல போறேன். வந்துருங்க. ஓகே. Zian is getting 8 elimination. It's just giving Dafiq that space to grow more. 10 கில்ரா Zian. 10 sorry 10 this team is coming together. While we are seeing the rushers on one end, yes, they're doing the job, but the snipers Zian going way big. As you can see, MVP 5,732 damage coming in from his end. He is NKG நீங்க ஒரு கிராண்ட் ஆறாங்க. அது சாம்பியன் ட்ரெஸ் தான் நினைக்கிறேன் பாரு, பார்க்கலாம். How intense it was. அப்புறம் எது லைவ்ல அவ்வளவு டைம் கேட்டிங்களோ டைட்டன்ஸ் சொன்னா. Sniper with the AWM, we saw his shots coming too. 9 மணி bro, 9 மணி used along with that Moko, Luna and Maro, and all his hits one after another through his opponents, getting the eliminations. Yep. Beautiful from Zian. ஆல் பண்ணமல ஏறலப்பா, எங்கப்பா ஏறறது?
He's சரி போன definitely வாரம் showing பணம் up for வாங்குனீங்களா? his அதை team எப்ப and he's தருவீங்க? creating immense value right now. எப்ப வாங்குனீங்க? Resurrection at this point. பால் They பணம் have வந்தா got எடுத்துக்க சாமி. lost 28 points from பணம் this மட்டும் game, கொடுக்குறீங்க even though they சாமி. got the booyah. But Ico OGXTSG, they சம்பளம் have a higher number of elimination, and we have seen it. நீ you know, என்ன வேலை every நீ time என்ன a வேலை team கொடுக்குறப்ப scores சம்பளம் 20 வந்துட்டாங்கற plus புரியல. elimination, they are the ones வேலை இனிமே நீ who கொடுக்குறப்ப get சம்பளம் to வந்து that கேக்குற. top spot, and this time it is again Ico OGXTSG. சரி உங்க சம்பளம் எங்க? Sam, ஒரு I இடத்துல already வருது. told you after the 3 games that Ico OGXTSG was sitting at ஏப்பா 79 என்னை கேக்குற அப்புறம் உங்க சம்பளம் எங்கப்பா? to it. So they've already crossed the 100 pointer in 4 games. If this அரும்பு keeps சக்கரை ஓட்டு. happening, while the right now highest score sits at 142 total points, Oro, I am worried where இந்த we'll ஓட்ட end எவன் up பாக்குறேன்? once உங்க அப்பன் game தான் 6 வரணும். is இந்த done. And these வாடகை added இருக்கு. points you mentioned, yes, ஒப்பன் we are சுந்தரம் தான் already வரணும். at என்ன வளர்ந்து 100 plus points. You இல்ல will அதுக்கு அப்ப eventually see வலுப்புறம் தான் the வரணும். today's standings ரெண்டு as பேர் well, வர just to give you மாட்டானுங்க. an idea, but the teams who missed the opportunity almost look like they could வாடா have an ஓடணும். உங்க opportunity அப்பனுக்கு to pick up மரியாதை. a lot in terms of eliminations. Was SCA Esports, we spoke about it, getting eliminated the 10th இருப்பா spot, just பாக்குற. getting 1 placement point hours to அப்பளம் வந்துருச்சு, அளவு இருக்குது because நமக்கு. they have 2 more eliminations from anybody else in the bottom, and those 2 eliminations are big when you just think about yesterday. Teams இருப்பா got பாக்குற. left out because there was a வந்துருச்சுப்பா. miss of a single or double points in their standings. Yeah, you know, I remember, you know, you're definitely talking about Rise Esports. They could not qualify because of that 1 point. So hopeful that today we do not end up seeing something like that. And for that not to happen, these players have to be very accurate about their rotations, because you know, Ico OGXTSG, we know that they did not end up landing, you know, towards the extreme என்ன 10,000 eastern side of the Scam map card. where the circle Titan. ended. Scam It card was 10,000 towards note. one fair, ஏப்பா but the way they rotated inside the circle and ended up getting those eliminations, அவ்வளவுதான். so it was very வருங்களுக்கு clear பால் for them பணம். that they are not fighting for the booyah. பா- If you saw them in the last fight, you know, they were pretty much என்னத்த? going YOLO against ஆ, all the ஆமா, teams அது out அப்புறம் there, கொடுக்குறேன். because they knew that eventually they're going to fall. It was going to be சேலரி Resurrection's 2 team கிலோ because they வரப்பா had the அப்பா better கொடுங்க. edge அப்பா in the காப்பி angle. சொல்லுப்பா அம்மாவா. And they ended up converting it, and they got those eliminations, which gave them that extra edge என்கேஜ் again. மேட்ச் 9 And pm there you கிக் go. ஆமா ஆமா It's ஆமா 109 என் ககாசி for எஸ் Ico OGXTSG already, Lucifer. 109, 102 for அடிச்சுக்குறானா. Resurrection. Klutza, they அப்பா, are TEZ behind, first இருக்குது. but not too இப்படி much எங்க to அம்மா be வந்து worried இந்த about, ஊட்ட வாடகை because கொடுத்தா this கூட is not a காசு வரும். chase நீ towards கொடுக்குற either the top சம்பளத்தோட three அதிகமா வருங்க எங்க or அம்மா. you getting a podium in terms of the prize money. The prize money இல்ல. is still a little bit far in terms of சார் reach. இல்ல bro, சுந்தரம். Lakers at 57 சுந்தரே. points, that's the எங்க அம்மாவோட biggest in அப்பா. terms of leap. 33 in difference அது along வந்து with எங்க TEZ வலுப்புறம் வந்து FFMIC, எங்க அம்மா- and எங்க then அப்பாவோட coming in அப்பா. his team Chaos, who are almost at a difference of 60 சுந்தரானுக்கு if என்னை you மாதிரி count வாய் the தான் team bro, at the அதனால தான் top. போய் சேர்ந்துட்டேன் சீக்கிரமா. However, 4 AM, they'll be happy that they're at only 1 நீதி point நேர்மையின் difference வாழ்ந்தவனாமா. because they are the only closest team right as now at போட்டு the end of வச்சிருக்காங்க game சுந்தரான. 4. But Skylord, SEA, அப்படியே இருக்கு bro Flawless, team, அந்த better team start அப்படி raking நகர up நகர விட points bro from placement their அப்படியே இருக்கு. position at அப்ப 34 சோறு எப்படி points. சாப்பிடுவ? They have a difference of விஷம் தான் 15, காசு and then you கொடுக்கணும். quickly jump into every team அதெல்லாம் is எங்க at அம்மா 20 காசு points. So they கொடுக்கலாம் are at a போட்டுரு. difference of at கொஞ்சம் least வார்த்தை 20 plus தெரியுமா points. அவ்வளவுதான். This tells us the lobby is getting tougher if the top teams keep taking away the points. SC, even after getting 8 eliminations, how much did they acquire on placement? Just 1. லாக்ஸ் making லேண்ட் it a பண்ணா total கூட of 9 பத்தாது points. போல ப்ரோ. So that ப்ரோ சத்தியமா movement பத்தாது ப்ரோ. is not லாக்ஸ் going இல்ல to be enough க்ரோர்ஸ் to லேண்ட் make a பண்ணா quick கூட jump. பத்தாது. Just an example, even though Nebula is an invited team, Yeah. but because of their big games that they ended up starting at game number 2, game number 3, Correct. they managed to get back into the top 6 comfortably. Yeah. But for these teams, because right now we are not talking about game 2 or game 3, it is game 4. Next is game 5. Game 4 done, all your mistakes done. Now game 5 and நொட்டு game 6, the 50,000. last two, and கேட்ட especially போறேன். the biggest hurdle at game 6 is you don't ஒயிட்டில know வரணும். which ஒயிட்டில game போட is முடியாது ப்ரோ. coming. இப்பதான் இந்த So லைவ் get முடிச்சு up கட் top பண்ணனும். and get ready மறுபடியும் for 9 the மணிக்கு next போட்டா வேஸ்ட் தான். அது ஒரு 2.5 மணி நேரம் நடக்குதுன்னா வேஸ்ட் லைவே. Because அது you know, these அதனால கிக்ல போறேன். bottom 4 teams, அதுவும் they இல்லாம have to கிக் do தான் a heavy கொஞ்சம் lifting இது. right now because they அதனால have to போறேன். get those bigger So, numbers. நீங்க அதுல They have வாங்க to bro. fight it out with teams, and that is not going to get easy with Nextera coming in and with the ப்ரோ randomizer இவ்வளவு being விளக்கமெல்லாம் there on the கொடுக்கவே sixth வேண்டியது இல்ல map. ப்ரோ. You know, உங்களுக்கு we நான் don't know ஆல்ரெடி that சொல்லிட்டேன். what மறுபடியும் is மறுபடியும் gonna அது சொல்லக்கூடாதுன்னு come up. பாக்குறேன். If they are டீ going வித் to fight பட்டர் on குக்கீஸ் Bermuda, probably அந்த அளவுக்கு someone இல்ல. will be டீ happy, தான் someone will be அவ்வளவுதான். unhappy. வேணா They குடி would have இல்லைன்னா wanted கெட. Kalahari or Solara, but that's not the case here. The Salary only சொல்லக்கூடாது thing bro. is Salary that சொல்லக்கூடாது. they need those elimination points, and I'm sure that Booyahs are not going to save them. They need elimination with அப்பா live ல Booyahs so கூப்பிடுங்க. that they வேணாம், வேணாம், can வரமாட்டாது come bro. up to a 25 plus or 30 plus, to be honest. Otherwise, it's going to be GG's for them. ஏன் சாமி because they're இவன் not இந்த நாயை going வந்து to be பாத்துக்கிட்டு able to இருக்கீங்க qualify அப்படிம்பாரு. for the top stages. Right now, the preferred drop spot. போய் just படிங்க like சாமி. last இந்த time, பரதேசினா we ஏன் saw சாமி that பாத்துக்கிட்டு team இருக்கீங்க? எங்க cover அப்பா set கால up empty. சம்பளம் I வராதுன்னு don't தெரியாது think அதுல Booyahs will be இல்லைனா left out empty. ஏன் சாமி Wave இப்போ Labs, வந்து சொல்லக்கூடாது. there's ஆமா only ப்ரோ one சொல்லக்கூடாது. team can get, going there. That's Resurrection. Let's see how that turns
out because Resurrection is a red hot team right now with 2 back-to-back booyahs, as is Team Ico OGXTSG.
And with that, let's see where we Wong predict Sami the இந்த teams பரைஸ் to நாய் be பாத்துட்டு at. இருந்து Let's என்ன take சாமி a பண்ண look at the போறீங்க top three. அப்படிங்க. You have Rakers, Team Chaos, and Klutza. I've got அப்ப காசு வராதுப்பா. வேலைக்கு போ. iKoji, THG, and Resurrection. But I bring வேலைக்கு back போப்பா. Rakers. வேலைக்கு போனா Rakers were 10,000 again ரூபாய் close. கொடுப்பாங்க. I'm looking at them ஏடா making an impact. பிச்சை எடு a போ. lot more, பழனி maybe போ their பிச்சை எடு. Booyah. But looking at the கோயில் கோயில திரி. tomorrow, I am worried because if you see entirely, it's iKoji, எங்க அப்பா அப்படியே எனக்கு THG, ஆப்போசிட். Resurrection. இல்ல. iKoji, THG, Resurrection. நல்லதெல்லாம் செய்யணும்னு if நினைக்காத these two சாமி teams ஒண்ணு itself நினைக்க keep getting நிக்காது. the booyahs, as you mentioned, சம்பாதிக்கிறியான்னு பாரு. இந்த காலத்துல சம்பாதிச்சதா உண்டு. நான் அப்படித்தான் இருப்பேன். இப்ப எங்க அம்மா பண்ணாதீம்பாங்க. ஏன்னா எங்க அம்மாவுக்கு வந்து கரெக்டா இருக்கணும்பாங்க. எங்க அப்பா அப்படி இல்ல. காசு வருதா யோசிக்கும். ரொம்ப கெட்டதா இருந்தா வேணான்றோம். ஒரு அளவு கெட்டதுன்னா சரி பண்ணி விட்டுருங்க. So this is your best opportunity, and you can see already teams, India so final many of them taking an early drop already from Intellect Center, and this could cause drop clashes as well. It's only 4 AM that I see Safe and Sound and IQ once again seem like they might be in trouble, and SMR are the ones. They are also looking good, and therefore they want to stay in the top 6, and if they fight with IQ, bro அது pitch எப்படி இருக்குது அது மாதிரி தான். All I can say is more revival is equal. அதுல கொஞ்சம் ரெவென்யூ நல்லா வருது. அதனால எல்லாரும் அங்க போறாங்க. நானும் போறேன். எனக்கும் காசு வேணும்ல. I don't see any எல்லாரும் drop சொல்ல மாட்டாங்க. நான் clashes. சொல்றேன். எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. எதுக்காக அங்க போறேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. Even though சொல்லுவாங்கன்னு there are தெரியல. நான் few சொல்றேன் shots அவ்வளவுதான். being exchanged, தேங்க் யூ பாரு வடா பாவு ப்ரோ. அவெஞ்சர்ஸ் ப்ரோ. ஏய் गाइस அந்த இது இருக்காங்க. சென்ட் பண்ணி விடுங்க ஜுவல்ஸ். Team SEA. சரியா? Oh my நிறைய பேர் கடைசில என்னால சென்ட் பண்ணவே இல்ல. கொஞ்சம் சென்ட் பண்ணி விடுங்க. picked off with that Uzi, and Ayush goes berserk Ati. with that mini Uzi, and he gets one more. THG எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காட்டிட்டாங்க பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல. SEA suction, he fights back, but for how long is the question, Lucifer? He's the one of the last ones standing and make it the last man standing, and I think the last player did already cut this fight, make a run. However, iKoji, THG, Arjun seems like he might have a hint of where that player tended, especially with knowing where the vending machine is. Face cam போடுங்க bro. Did Face cam use the binoculars, and it seems like maybe he just got a hint, slight nudge of the player, but maybe he got away Narikoottam reaction from the அவர் இருந்தாருன்னா radius. பயங்கர And now என்டர்டெயின்மெண்டா தான் iKoji, இருக்கும். THG ரியாக்ஷன் from an எல்லாம் opportunity இருந்தாருன்னா where they could பக்காவா have இருக்கும். wiped out the team. பாட்டிக்கு மட்டும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா எங்க அப்பாவுக்கு வந்துருவாரு. Have a breath of இங்கேஜி survival. பூட் கேம்ப்லாம் கிடையாது. ரூம் எடுத்து தங்கி இருக்கானே. Is the trouble for இவனோ IQ. ரூம் எடுத்து தங்கி இருக்காங்க. They இவனு suffered இருக்கானே. at the இவனும் previous வாடகை game கொடுத்து அங்க without இருக்காங்க. anything. They were out as soon as we landed, seeing every team. They were not even in the ground. Correct. And right now it could be trouble, but it seems like இங்கேஜி somebody பூட் is going கேம்ப்லாம் to be a கிடையாது. savior. அந்த அளவுக்கு As 4 வசதியான AM ஆளு jumped இங்க in இல்ல. and SMR have வசதி வந்தா another கண்டிப்பா கட்டிடலாம். distraction or attention to pay to, and it's Sanket going down, meaning SMR they better buck up or they're going to lose their பாடா players who தமிழ் are all டீம் outside. பார்ட்டிசிபேட். இப்போ இல்ல ப்ரோ. நாளைக்கு தரேன். இந்த குரூப்ல எதுவும் இல்ல. On the rooftop, they have the better as in terms of the higher ground. They can definitely put you under pressure. Oh wait, Cairo, while he jumps down, he gets taken down. But immediately brings him back. But SMR, they are inside the compound. They come out, uses the chrono shield, and immediately retaliates. Kill போகுது. Rackers எடுக்கறாங்க. Still a player to be taken out. Sick goes down, but look at the way players are dealing with this situation. It is the player who's still sitting on the rooftop who's creating the problems. But NKG இல்ல bro. NKG இல்ல. towards Zipway, where Rakers are. PVS ப்ரோவோட டீம் RB செட் இருக்காங்க. NKG வந்து முடிச்சிட்டாங்க. PVS ப்ரோக்கும் RB செட்டுக்கு மேட்ச் இருக்குது. அப்புறம் தமிழ்ல சான் கேமிங் ப்ரோன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் வந்து கர்நாடகா டீம் வச்சிருக்காரு. அவங்க அப்புறம் கால்லேக்கு வந்து அடுத்த வீக் ஆடுவாங்க. ஓகே. Nobody is அடுத்த வீக்ல அதுக்கு அடுத்த வீக். 6ஆம் தேதி ஆடு. 6ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் நடக்கிற மேட்ச் 6ஆம் தேதி 6 7 8 9 நடக்கிற they will try their best, and especially it right now playing out at game number 5, meaning every team understands that they are so close to survive and make it to the top 6 or so close to elimination as well. It is either way threat and an adrenaline rush that they're trying to make use of. Rakers, in the meantime, we already saw them there jumping across. SCA again in another trouble. Somehow they fended off the fight previously, but wait, what happened? Skylord, they get picked off, and they're the very first team. I did not think that this will happen. However, Kid, his approach also same, but he did not pay attention to a player who was close by. However, with the shots taken, he will give that information to his teammates and moves in the other direction as the players of SEA Esports climb down. He also slowly tending towards the floor and now getting ready for action. Kid with the maximum in his hand. Wait, why did he suddenly decide? Hey, Kabila! Because he was Kabila put up that glue wall and tried to engage in that. Mani, kamunu vaama ni ella unakku enna maadhiri. Charge buster puts in the glue wall, but Chobit, he needs a breather. But will he get that breather? Is the question. No, is the answer. Sadava Sajid poma. Needs the diversion.
he has to be the one. But look at Fiasco. He's Hi bro, already ஒரு on a மாதிரியா flank. சேடா இருக்கு bro. Question is, என்னாச்சு Anshu, black does he know his positioning? Wait, he gets picked off black by do iCoach ஒரு group bro. XTSG, என்னாச்சு? and that is Ayush Dove from group the bro. longer என்னாச்சு range, black bro? picks him off, catches him off guard, and immediately finishes him. And the focus shifts onto Anshu Jr. Lucifer. Anshu Jr. in trouble. However, he has a track. He will make a run out of there. Kid, however, he thought he could be jumping back in the same spot and be safe. SEA Esports, they don't know that is iCoach TSG that is trying to take a shots at. So SEA after winning it, they'll அவங்க விருப்பம் ஆன்லைன் மேட்சஸ் எங்க இருந்து வேணா ஆடலாம் guys. அவங்க விருப்பம் ஒரே ரூம் கூட ஆடலாம், தனித்தனியா கொண்டு ஆடலாம். Not sealing the fate லேண்ட்னா ஒரே இடத்துல as of ஆடலாம். now. However, Ronit has the call, and there it is. Krish finally with the quad knocks and gets the confirmation as well. SEA Esports are wondering, wait, we just had one team we were fighting with. Who's the other? Who made an entry here now? SEA Esports, they're making a run. Boltmaker being called. iCoach TSG. There's been a little bit of a wound. Krish has to patch himself, and that is the call. They decide to back off JK rather நால than எனக்கு take this தெரிஞ்சிரும் approach to the ஜல்லிக்கட்டு. Boltmaker and maybe be hurt by it. Look at the vicinity. I mean, Lucifer, 4 AM is surrounding. But iCoach XTSG, they're prepared for them as well. You know, this team is handling 2 teams at a time. And they're doing and managing it so well right now. iCoach XTSG. We know that Ronit has ended up in this, in this lineup for sure. But, it has shown a lot of difference already. And they are falling back from the situation, which is the ideal call. Again, which brings me back to the point that the decision making is looking so confident and there's no questioning whatsoever. And they are actually jumping onto 4 AM. It was an approach. They knew that playing from a downhill position will not work out. And now in mid-air, Ayush, he picks him off. 4 AM மேல வந்துட்டாங்க பாருங்க. 4 AM in trouble. While they thought that nobody is surrounding them. போறாங்க. bro. What they are trying to do. ஏன் bro இப்படி பண்றாங்க இந்த பசங்க? And more is the chase coming in. But Klutza, they're here. They become a surprise for iCoach TSG. One of the players getting knocked. And Ayush now instantly has to back off because Krish is bleeding out. And I think that is going to be a little unfortunate. He will bro வெறுப்பு bro 4 AM உள்ள வராங்க bro மேல வந்து இறங்கிறாங்க. இப்ப FL and now Klaus is closing the distance with the max 7 and hurt is Ayush and he will also get picked off. Confirmation one after another. Now Klutza, they get a total of 10 elimination for themselves as they surround iCoach TSG and push them back. Whatever these guys are doing, they need to wrap it up quickly because Flawless are circling, Chaos is circling. This has turned out to be a party spot for all the teams out there who want points right now. Chaos, they are not in the top 6, they are in the race. Flawless, Anshi bro, வாங்க Anshi bro. என்ன நிறைய வாங்கிட்டு வந்திருப்பீங்க போல புரியல நமக்கு. தட்டி விட்டு அடுத்த வேலை பார்க்கலாம் வாங்க. Meanwhile, ஐயோ மொரட்டடி வாங்கிருப்பீங்க போல Anshi bro. The very first game they have got eliminated so early and this has turned out to be a shock. கால் பண்ணா லேடிஸ் பேசுறாங்களா? ஆமா அப்படியே பேசுவாங்க. அப்பா நம்பர் கோடிங் லேடிஸ் fight back to Flawless. He has a different angle altogether. With that SKS, he's controlling a lot and definitely his position is going to be crucial. If he gets taken down, Klutza's hold is going to be a little weaker, Lucifer. Crucial, his position as you mentioned. But right as now Klutza have surrounded. Wait, what a shot! Kishu! That is from a different position. It's another third party happening. One after another. This position has seen multiple third parties. iCoach TSG thought they were on top of it, but it did not work out. Armo closing the distance. Shub doing the damage. Bully helping out, and Armo is done. However, his teammates so close, multiple in numbers, and they quickly revive him. Shub, can he change this chrono being used to avoid the shots? But the shots are not stopping coming in, especially because of the distance. Ninja trying his best to provide cover fire, but Klutza are spread so far apart that Team Chaos, even if they want to continue this fight, they cannot, and slowly now they are backing off, giving Klutza the space to get back into Zipway. Yep, I don't think Team Chaos wants to engage anymore because the players are clustered. They are more interested in looting for sure. If players are getting revived back, I'm 100% sure that they would require those loot. But there's a different fight happening. This is SMR going against Resurrection. The Fee gets his second elimination. And in no time, Resurrection is back again with 8 eliminations. Did you see them doing it? The answer should be no, but they have done it again and they are charging onto SMR and probably they might end up fighting Team IQ as well. At least this is a good game for the teams at the bottom because except for iCoach TSG, mainly iCoach TSG have been taken down. Resurrection are now trying to pick up eliminations. They just get one more. And these are some stragglers who unfortunately got left out and now look at this.
Desi very Esports good. Vedant gets a monster truck driven over him, loses half of his HP, more than half, and now Siddharth with the max 7 so close that he Night live illa kick la watch patti unne. Have the right weapon on team hand. He couldn't even closely aim. That's how difficult it got for Desi Esports, and more trouble now striking because Rakers have them surrounded. However, Mysterious goes down, and Freck, he doubles down, puts Shobit as well, and Kid, while he was trying to get one, he finally hits Freck as well, just jumps in with one final hit on the M590, puts the end for Desi Esports. I thought Freck almost brought it back for the side, but it was not enough. Unfortunate. Rakers, however, keep it flying and get those points. The number game was always against him, even though the hope was real, Lucifer. I feel it, and I feel for Desi Esports, but right now, Resurrection, they have intruders, and it is Team Chaos. Wait, Obito is the solo survivor for Team SMR, and he spotted. No, he's not the solo survivor. He was one of the survivors from Team SMR. He gets picked off, and immediately one elimination point converted. And he also get eliminated. He gets spotted by Team Resurrection. You know, this isn't looking that great for Team SMR. Individually, and these solo fights are never going to help you as a team. இந்த மாசமா தலைமறைவா கடைசி எப்ப வந்திருக்கீங்க? Eastern side of Nextera has seen so many fights, bolt makers, teams being eliminated, and it seems like players are still sticking here, as you can see at the edge of mud side. Nice shot coming in from Siddharth. This is why when you have snipers who are already deadly, and on top of it, it ends up being dual snipers in a team. You can see Siddharth just got a knock and elimination, whereas Zian has the most damage, 3,100. Remember the previous game, he was already sitting at 5,000 as an MVP of the previous game, and now already at 3,000. If it continues with still 7 teams surviving, 8 being them, it could be a lot more that Zian can find. But right now, it's the peak. It seems like these eliminations are getting shared. They are now getting a little bit of a jealous within the team rivalry. It's good for their health because it keeps every team, every player at a tiptoe, and they're doing the damage. However, Team Chaos trying to take those eliminations as an advantage, trying to take those points away from them because they are right now at the 6th spot. 4M who have got eliminated. It seems like Team Chaos want to solidify their position at the 6th spot. Make sure going into game number 6 they're at a better spot. Flawless Esports, they're the closest after 4M going down. But now they have a charge coming in from SCA, who want the same thing, is get to the top 6, and this time a little slow, but still SCA keep firing. Yeah, 3 teams were fighting in boxing gym. The fight still continues. Ayan is the one from Team Aiku who cleans up those players. The knocked out players are still left out. Fiasco is eliminated, which இந்த பையன் என்னடா எம்பி பாடில அடிக்கிறான்? Players who surviving. I don't think Sad will be able to survive for long. Aimbot is the one who will eliminate him. Yo, IQ மேல வந்துருவாங்க போலடா. Team SCA, he has left this building. For sure, he would require those players to be brought back. Otherwise, it would be. Hey, 12 kill ra ippe பக்கத்துல வந்துட்டாங்கடா. I still remember Lucifer. They got 8 eliminations. They were looking solid, but they ended up getting 1 survival point. Okay, self love bro. And that is something which should not require 50 point தொட்டாதான் leaderboard because the top teams are still delivering. Even though ICOG XTSG have got eliminated, but Skladza, Rakers, and Resurrection, they're still building those numbers. Numbers by the மேல இருக்கிற டீம் அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிட்டாங்கனா இந்த மேட்ச் அடுத்த மேட்ச் squad revive. நீங்க அதே மாதிரி இதே மாதிரி ஆனா this is what troubles. While I was talking about the teams at the bottom, this is the best opportunity with ICOG TSG going down, and Resurrection not yet doing a lot of eliminations. They should have been the ones taking it away, but now the teams at the bottom fighting amongst themselves gives an opportunity. It seems like Team SMR who bro எனக்கு இதான் bro தெரியும், எனக்கு இத விட்டா வேற எதுவும் தெரியாது. நான் இங்க கிடப்பேன் being picked out. அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன். They have their opportunity, making a jump right towards Team Chaos, and nice eye coming in from Bully in case somebody steps out from Team Chaos. And there, look at Kaushik, how bold, right in front of his enemy's line, was using the stealth bite, so therefore he survives. 4am la varadu bro gaadi bro total points adhe pottainga. Klaus is close the distance, had a charge buster as well. There Ninja, the position point ala kill point madda adaitu. That is the reason they hold Bully, but Amo, he comes in, takes Kaushik down. And T points in total points அது சரி ஆமா ஆனா எலிமினேஷன் பாயிண்ட் ஷேட் ஆயிதா கடைசியா இப்ப காட்டாது. And Kladza, they're only surviving with a solo player. Wait, did he get taken out? So he has also wait, he has not been eliminated yet. It's Bully who's the last one surviving. He's spotted by Zian with that CSK94. He's waiting for that blue wall to break off. But Team Chaos is also closer to Bully. Hey, illada position point ஏறுதுடா. But Team Chaos they have ஏறுதா? ஆமாடா. right now.
3 versus 4. Resurrection first, TEZ second. அவ்வளவுதான். மேல அப்படியே 5 இல்ல பைக்கு 3 பேர் இருக்காங்க. ஒரு 2-3 கில் எடுத்தாங்கன்னா கூட அது அட்வான்டேஜ் தான் அது. They are stuck in the corner and Resurrection. ஆமா மூவ் ஆகலாம். 4 அத அடிக்குறாங்க பாரு உள்ள பூந்து. ஆனா ரெசரக்ஷன் ஃபுல்லா இருக்காங்கடா. Immediately shuts down Team Chaos Lucifer. I don't know how Team Chaos still made it there, but now Resurrection is there. They're not going to let anybody revive each other. They won this lobby. 21 total eliminations, but Siddharth gets lost. That's going to be IQ. IQ, I don't know how they managed to make it this far. They were the ones to get eliminated very first. It's a 3v3 fight now. Up and forefront. Something has spotted them. Iron, the glue wall being எடுத்தானுடா IQ எடுத்தானுடா. That's Zian helping out. However, Iron and Aimbot, they find one needs something and the fig both down. It's all up to Zian from afar. Aimbot picking these eliminations, making it even more worse for Resurrection. Now Zian is left all alone. Bablu is left all alone. And Aimbot, a 1v1 situation for this final fight. It's a 3-way Mexican stand. 3 பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். IQ-க்கு அந்த 3 பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். IQ Resurrection has Zian கிட்ட ஸ்டார்ட் ரேஞ்ச் இல்லன்னு நினைக்கிறேன். Zian sniper. The question is Bablu is not looking to engage in அவனா this ஆடலாம். He has a good spot. இவர் எந்திரிக்க மாட்டாரா? Wants to play out with the information game. அவ்வளவுதான். Bablu is sitting inside that ஆனா அந்த பையன் சீக்கிரம் ஜோனுக்கு போயிடும். In the opposite direction. It is Bablu அங்கே அவளதான் உட்கார்ந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் கிட்ட தான் வெளிய வருவாங்க. Used already. Zian is already causing a lot of problem. The only issue is Zian is only left out with 8 glue walls, and I don't think that 8 glue walls is going to help him. He would require a lot more than that. எடுத்துட்டாரு இப்போ குளோபல் முன்னாடி இருக்குது. But his opponents also need a lot more, as you can see. Nice aim, but on the pickup truck. Zian will not let him. He will not spare his life. What was those shots? Yeah, நல்ல மூவ் bro. Boost அந்த இடத்துல இதாய் போச்சு. And IQ, who made it so far, will only be getting the third spot. Still better than what they got in the last one. They need a lot more points, but what does Bablu do? You mentioned about Zian having only 8. Now it's come down to the 5 glue walls. Make it 7. He ended up getting. And now Bablu, the last one, he is making a jump. I think he wants a close combat. Nice nade being tossed. Using a Riptide rhythm as well, but it's not working out. Finally coming in, closing the distance, using his shots, and the Mac 10 do the job for SEA Esports. And they get the booyah. What a play coming in from Bablu. He knew his advantage. இல்ல முருகன் bro என்னோட போட்டோவை வச்சிருப்பேன். போடுமா விடுங்க. இந்த லவ்லி ப்ரோ லவர் ப்ரோ என்னோட போட்டோ வச்சிருப்பேன். அது நீங்க வேற யாரோ கேக்குறீங்க பாத்துறீங்க விடுங்க. For the second time that a team has been 18 பாயிண்ட். First it was ICOG XTSG and now it is நேத்து வந்தயா நம்ம டீம் ஆடுன மேட்ச் பார்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நார்மலா வச்சிருந்தா நம்ம டீம் மட்டும் தான் பார்த்து கொஞ்சம் நார்மல். ஓகே He pulled it off with 6 elimination points and SCA needed it. They were towards the spot and those points are more than welcome for them. And here is the last moment. You look at the chaotic situation that happened inside that building, right, Lucifer? It was Team IQ fighting against Chaos, and that's where Team Resurrection decided to third party. And we saw that from 3 teams was one individual players who was surviving, and Zian, as we always know, that he is never immediately took down and he was fighting his battle against Bablu, but eventually it was Bablu who got the booyah, and it was much needed for SEA. I thought maybe it would be Zian running out of glue walls, but he had that steel cover in front of him as a compound. From there it ended up being Bablu. I don't know what happened there, that Bablu all of a sudden let that fight come down to just him and the opponent, and he did not know who it was, but he knew that he had okay ayyo ansi bro ngala onnume solla vidunga ayyo climb up. Now I want to see how the today's standing seem to be. நீங்க கத்தி விட்டா நம்ம அடுத்த வேளை பார்க்கலாம். என்ன பிரச்சனை அதெல்லாம் தள்ளி விட்டுவாங்க. In terms of chaos that could have broken out for SEA Esports. Even kudos to IQ Esports because they made it so far. Last match swept out. They were the first team to be eliminated in our game 4, but now in this game 5 making it a top 3. Amazing stuff. With this, let's take a look at our Booyah team stats. As you can see, Sad, Bablu, Fiasco and Saksham, but the credits all go to Bablu. And now I know why he ended up playing that way. He was on the extreme state, having helping him for tanking and helping his teammates up, and then Nikita for the firepower in terms of reloading speed. He played it to perfection, making sure Zian doesn't get a close combat opportunity.
Yep, he was the medic for the team Fiasco. alongside Saksham. Sorry, long range opportunity. I mean, see, if எப்படிடா பேர் Fiasco, கண்டுபிடிக்கவே தெரியல. he would have இந்த மாதிரிலாம் played வைக்கணும். throughout that last circle in a different way because he had that Morse to help அது him. ஊர்ல அது But ஈஸியா வரதா இருக்கும். unfortunately, he was taken out pretty early in the game and he could only Profile deliver காட்ல bro 273 சேவ் damage. பண்ணுங்க. But even though he assisted with one knock for sure and any of his teammate would have converted it. But Easy one அடிப்பாரு thing is bro. for sure சும்மா that அடிப்பாரு they அவரு. did not end up with a higher number of eliminations. So I'm not quite sure even though they have got the booyah, right, Lucifer, they still are, have they covered that gap between them and a lot more other teams who are on above them. But sad, he is definitely the one who has ended up getting the booyah with 3 elimination, and he is one of them who's showing a lot more potential than the other 3. I don't want to portray anybody lower than him, but I'm sure he has been the stronger one for that team who is doing or cutting off the number of eliminations or maybe delivering the damage in the lobby. I would want to give this to Bablu as well because he was the one who ended up getting the booyah for the team. But I really like that a rusher with the M249, and this is just an unstoppable beast of a weapon. Because once you keep firing, especially it helps in destroying glue walls. This is something that I was having a discussion, and players now, why they kind of move away from maybe the Riptide rhythms, they bring in the other ones. Nero's plushie, especially with the nerf it got, that players are not now, we have not seen so many plushies being used. That tells us that now teams are trying to tend with just these glue wall destroyers as weapons. And with that, let's take a look at the game standings. SEA என்னடா SMR கீழ வந்து இருக்காங்களா இருக்குது 18 points, but look at Resurrection. You can't keep doing this. 33 points without a booyah takes away so much, and if this continues it is going to be a lot more of a problem, especially for teams such as Intense Quake, IQ that we were watching. 26 in total points, but they were sitting at the bottom. SEA Esports, who needed to make it to the top 6, they only got 18 team qualify points. Bro. Klutza, they're already in the top 6 and they take 21 points. So teams taking away so many points, I don't know what has happened in the standings as of now. Anything below 20 feels like a below par kind of a performance for especially when you're at the bottom 6. Exactly, and it also if you look at the standard, right, Resurrection and IQ, TSG, anything below 20 feels like that. But right for now, circle analysis where definitely some good movements and good rotations coming in from Team Chaos. They were the one I thought that they could have converted this game, probably would have been the best of the situations because they are also fighting, right there towards that 6th position or the 7th position. guys 1k likes போலாம் இன்னொரு 70 லைக் தாங்க guys கவனஸ் லைக் போட்டு பாருங்க 1k likes போலாம் get in the bigger numbers because they were fighting all along the way, and Zian almost clutched it for his team, but it was SEA Pablo who had his cool when the fight was onto him and he completed the fight and எனக்குமே அப்படிதான் லிங்கேஷ் bro. And with that, let's take a look at today's standings. After what Bablu did, is it enough? No. Only to the 8th spot, 46 points. 4 AM, they did not make a move. They were the ones closest who could have made it to the top 6 because we spoke about it. They're a difference of 1, but right now எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க bro. என்ன தவிர 10 points because Team Chaos, they also made a lot of points in the previous game. Intense Quake, IQ that we were talking about, they have a total of 43 points, made a 3 position jump. This is in game number 5. It's only one last game left, game number 6, and bye தமிழ்நாடு மண்ணாத்த காப்பாத்திடுங்க bro உங்க ஸ்குவாட் சொல்லி மொத்த ஸ்டோரி bro. These are the only teams I we see will try having bro a possibility. கண்டிப்பா நாங்க காப்பாத்துவோம் Yes, they கவலைப்படாதீங்க. have 41 points. Maybe we can try and count them, but looking at their performance, I am a little doubtful for Flawless Esports because imagine if it's Flawless, if it's Intense Quake, if it is 4am, if it is SEA, there's already 4 teams along with Team Chaos who want to hold their position as a stronghold at the 6th spot. So it's very tough for just one spot and 5 teams fighting at the same and making that nature seem possible. அவரோட வாய்ஸ் டெலிவர் இருக்கு மாதிரி இருக்குதானே 4am and SEA. So Team Chaos better hope that they just survive just like they did in Next Era. And they also have to hope that they have to survive longer than what these teams do, because if by any chance these guys get the booyah with at least 10 eliminations, they can cross them at any point of time. But not for IQ, even though they got 26 points in the previous game, they have probably caught on to the game a little late, but it is the randomizer again. The question comes down to the last game. This is the map where தேங்காய் திங்கறதானே probably things அந்த change, குட்டியா இருக்கு மல தேங்காயோடது. Is it Purgatory, is it Bermuda, or wait, it is தேங்காய் மரத்துல இருந்து விடுமே. ஒன்னு சின்னதா விழுகு மல மரத்துல இருந்து. ஆமா எடுத்து ஃபுட்பால் இது கிரிக்கெட் மாதிரி ஆடுமே. அத தான் பல்லுல கடிப்பனாங்க.
Yeah. அதெல்லாம் கடிப்பீங்களா? Kalahari it is. We start with Kalahari. We are ending it on கிக்ல ஷெட்யூல் போட முடியாதா? நோ ப்ரோ, கிக்ல ஷெட்யூல் போட முடியாது ஆல்பர்ட் ப்ரோ. ஆல்ரெடி இருக்கிறது தான். You can also do your very own and let us know if that's going to be the case, that they have a chance of a comeback. And that being the reason, when I was putting these names, the reason I thought, hey, ICOG, TSG have gotten it. அத வந்து Resurrection விளக்கமா have சுத்திட்டு gotten it. வச்சிட்டு And we're அடிக்கிறது seeing போட்டு. Resurrection being a lot more consistent and heavy in terms of their fights. I keep them at their first spot, maybe looking forward to 3 Booyah. But Rakers and Klutza, I want to see them. They are almost there, but they're missing out, Oro. Yeah, you know, I was looking at our predictions. You know, கிக்ல கிரிக்கெட் லைவ் எதுலயும் அதுல எல்லாம் பார்க்க கூடாது, சேனல் தூக்கிடுவாங்க, அந்த இதெல்லாம் பார்க்க most of கூடாது. the teams we have predicted, they are in the top 6, so I'm happy about it. But we are about to start with the last map. You know, there are still hopes for the last, you know, bottom teams where SEA. गाइस NKG நீ நைட் ஒரு மேட்ச் இருக்குது, ஓகேவா? கிக்ல லைவ் இருக்கும், எல்லாரும் வந்துருங்க. Okay, make it to the top 6. Will they be able to make it to the group stages? That's the question. You guys can go ahead and give your 2 cents on it, give your predictions who is going to win this game, because this game is going to be very, very important for those bottom 3 teams. Let's see who it is going to be as we head towards Kalahari. சரியா गाइस, NKG வந்து ஒரு கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் ஆடுறாங்க. அந்த மேட்ச் வந்து கிக்ல இருக்கும், வந்துருங்க எல்லாரும். ஓகே, 9 மணிக்கு Jump closer to each ஒரு 8:50 காட்ட வந்துருவேன். other. வந்துருங்க நீங்களும். But it is going to be multiple players trying to do it. Already ஆப்பிட்டு teams வந்துறேன். taking எத்தனை a மேட்ச்? dive, and it was Klutza the very சாம்பியன் ட்ரெஸ்ஸா இருந்தா நிறைய மேட்ச் இருக்கும். 90 பாயிண்டா இருந்தா இல்ல 150 பாயிண்டா 2 நாள் நடக்குமா இருக்கும். Make a jump. They think they are all alone, but they aren't. At confinement, they're about to be confined by Skylord, and I hope either Desi or Skylord survive, because both of them need points, and if they only get the points, it's good, because Team Chaos, they are closer. 2 of their players trying to move around to see if there is something ஒரு மேட்ச்ல 6 மேட்ச் as pick-offs. Yeah, 4 a.m. சாம்பியன் ட்ரெஸ்ல என்னன்னு தெரியல, வந்தா தெரியும். ICOG, XTHG, all there towards Refinery, and it's a bloodbath right now. This situation looks dangerous. Arjun, he has an AK. Probably would you know, fancy his chances because of the weaponry. He finds himself a better swap with a double vector. You do not want to engage in the situation. Quiet. அவர் வந்துட்டாருன்னா காலி Gets பண்ணிடுவாங்க. taken down with that double vector in hand. Arjun would be super confident. It's not a sniper, but that's not a problem, because the rest members from ICOG, XTHG, they are here to give him that backup, and Flawless have stepped away from this situation, as they should have done pretty early. Garena Esports மிஸ்டியோ. Yeah. சென்னை வா. தைலண்டா இருங்க ப்ரோ. It is not too late, but Flex, he is now the last one standing. If he gets spotted, he is Ayush along with his teammate, both of them firing, and he will be put down. And that ஒரு is the டீமோட end of டோர்னமென்ட் Flawless கனவு Esports. இப்ப Their கலந்துருச்சு. chances at our next week is now Well gone. tried, Unfortunate, guys. they took this fight head on at Refinery, and Refinery, we all know, is a chaotic place, not the Night best spot kickla to bro drop. live. And right as now, 9 when we மணிக்கு. speak about the drop, we were talking about Desi Esports along with Skylord Esports, and it seems like Team Chaos, they made it up to this mix of it, and they're the ones getting put down rather than either Skylord or Team Chaos. Rather than Desi Esports. இவங்க எலிமினேட் ஆகணும் 4 am இல்லனா ரெண்டு டீமுக்குமே ஆவத்தான். Move from them, you know, jumping in நான் அவங்க ரெண்டு டீம் ஆடும் நல்லா. On to ICOG, XTHG, and Chaos, Flawless, but it's good that they're still surviving. They are the closest to Team Chaos. Team Chaos would have been the happiest, but right now it is SEA, another team who are looking on to that top 6 spot. There it is again, using that cord and dashing in. Imagine you have a cord as a Russian in your hand. நீங்க லோ வந்து பார்க்க நல்லா இருக்கு. It's ஆமா, இது nightmare HDR for இருக்கிற your மாதிரி opponents, இருக்குது. but right now it 3D is இருக்கிற மாதிரி இருக்குது போட்டோ. They have created a lot of damage and problems for the other teams, Points. but something, he gets taken down. Wait, this is another team fighting. No, it is Fiasco from the longer range who's creating those Ziyan problems. நசுக்க போறாங்க. அவ்வளவுதான், Ziyan அடிச்சிருவாரு. He's alone right now. Sidak is coming in, but will he be able to give that back? No, Just he is not able to handle it. So hopefully Sidak is going to turn his monster truck in a different direction and would. Resurrection he eliminates. gets taken down. Resurrection is Eliminated. eliminated, Lucifer. பரவாயில்ல, குவாலிஃபைடு. This might be good. With Flawless out, Resurrection out, there is some points for teams to acquire. Skylord, they're also picking. It seemed like finally the fight between Skylord and Desi total Esports points are காமிக்க breaking மாட்டாங்க out. பாருங்க. Freck, இந்த மாதிரி the man காட்ட who மாட்டாங்க, almost அடுத்த tried to match save his team from ICOG TSG. அவ்வளவுதான், This இதானே time கடைசி he's going to be match. again in a very dicey spot. All alone, but CA not க்கா the only பார்க்கலாம். player CA standing. க்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு தான் Vice நினைக்கிறேன், quickly பாப்போம். rushes in, takes him down. Another elimination. 5 in total for Skylord, and Vedant is also spotted. Nisarg with his M24 wants to take a shot, and on the other end it's also an M24, so both of them trying to fight with the same weapon. UAV being destroyed.
Nisarg, that's the only one right as now. But at this spot at confinement, there's another squad. That's going to be Klutza. We spoke about them. They went to Shrines, but now they're here at confinement. Abhinav holding the front and still getting hits on Desi Esports and more eliminations for Skylord. But it's not done yet. There is more trouble as Klutza are now jumping into the battle. Shog utilizes the freeze nade. Nalla freeze nade bro. And the Cronal side uttaru varu. Taken down. Abhinav is trying to run away. This is not the right decision. When you're fighting against an opponent, you should never show your backs. That's very basic of Free Fire Max, but right now he is continuously trying to run away because he was trying to survive. But that's not the way. Right now it is iQOG XTHG against I2. They got 26 elimination. Will they be able to pull something like that? Right now the answer is no, because iQOG XTHG, when they are on a roll, they definitely shut you down pretty easily. Then Mangala say thanks for Jolts bro, Surya bro. Hey guys, adu irundala send panni vitrunga Jolts la. Aha. Fiasco gets spotted, instant hit. What was that? Ayush. Damn, that was quick trigger. But Krish, he thought he's safe, but this is SEA Esports. 1-for-1 exchange. Quick on the glue wall. Ayush jumps up. He loses a lot of health in that dabble, but still will be able to save his teammate because of Ronit, and Ronit puts Sad down. And his teammate Saksham, who decided to fire and take the player at the edge of the hill, will now be in trouble. A toss, damage being done. Avaru poda danger la avarku damage podu bro ingirunde. Bolt maker. iQOG TSG have him surrounded. There is nothing that Saksham can do. A rush coming through, and Saksham will also be taken down. What he did, he will end up suffering. Enemy pona prachane illa, nammuke povudanga. Give them more eliminations. Thank you Jolts bro, thanks for Jolts Muthuk Karthi bro, thank you so much. 360-degree kind of an awareness from Vibe high. Immediately the Bolt maker called, because they knew that their players are going to be in the open and there are not a lot of real estate where they can take cover. But right now, iQOG XTHG, they take the fight towards the sub. And this is 4 a.m. putting up some glue walls, but it is only 2 members from iQOG XTHG who have closed in. But Gyro, he's there towards those tankers, towards those crates. And reaction live illa bro. He deals with Ronit was the man who was supporting his team from the longer range. Now he gets dealt with. Arjun is still trying to create one knock so that his rushers can make the movements, but they have to do it. It is Ayush and Krish. They're fighting it one by one, and Gyro gets taken down. They take a revenge on Gyro. He's down. Confirmation as well. More could follow. I was about to hope and wish that 4 a.m. having all their skills ready, they might be able to quickly challenge. And they're trying to do so. Krish, he's lost half of his HP. However, he'll quickly patch up, helping and using the glue walls. Ayush providing cover fire as well, making a check and then a hit. I don't know what happened. 2 of the players from 4M thought that's an opportunity to jump in, but instantly get hit, instantly get shut down. And now Arjun, he's like, hey, it could be the same team, but no, it's a completely different team. That's going to be SEA, who tried to trouble them as well. So both 4AM as well as SEA, who tried to trouble iQOG TSG, they just get hit. Revenge taken and eliminations acquired. You know, in that fight between iQOG XTHG in that sub area, they are surrounded by SMR as well, and that's where Obito's shot landed on one of the SEA's player, and he got taken down. And even eventually, I think it was a player from iQOG XTHG who confirmed that elimination, and you know they ended up having 15. Right now, the fight has not ended yet, because this is towards command post where SEA are still fighting. Thanks for Jolts. Chaos. Photo story bro. They have to be super aware about thank you so much Phoenix bro, thank you. Because they are not comfortable. நிறைய பேர் 1000 இருக்குங்க, அப்படியே சென்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. அது அடுத்த மாசம் ஓபன் ஆயிருச்சுனா வேஸ்டா தான் போகும். எனக்கு சென்ட் பண்ணி விடுங்க கொஞ்சம். இன்னொரு 13 லைக் போடுங்க, 1k லைக்ஸ் போயிரலாம். கம் ஆன் லைக் போடுங்க. Team Chaos, while the difference bro அது எனக்கே தெரியல, ஆனா கிக்ல வந்து நம்ம சேனல்ல லைவ் இருக்கும். ஓகேவா வந்துருங்க. Okay with that. SEA Esports have got கிக்கோட சேனல் வேணா நான் உங்களுக்கு காட்றேன். ஓகேவா இதுன்னு meaning almost around 5 points closer are SEA Esports to close the distance. However, இதான் நம்ம கிக்கோட சேனல். ஓகேவா down performance here on Kala. Narikoottam reaction இருக்கா? They managed to get out. However, சரி Narikoottam game இந்த வெரிஃபை டிக் காட்டும். ஓகேவா எல்லாம் வந்துருங்க. Survival instinct, survival mode active from their end.
இதான் வந்து நம்மளோட சேனல். ஓகே மறக்காம எல்லாரும் வந்துருங்க. மஜாவா இருக்கும். மேட்ச் பார்க்கலாம் நீங்க இப்போ எல்லாரும். Try to surround ICOG TSG but very mechanical and precise. However, Sanket வந்துருங்க guys எல்லாரும். puts the ஓகே player down. AC80 now closing the distance with the Max 7, wants to get it to a CQC, but the challenge and the valiant dash, and now Sanket in trouble, and then it is a hit coming டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நரிக்கோட்டம் கேமர்ஸ் போனீங்கனாலே நம்ம சேனல் தான் வரும். However, one of the players managed to get out on the horse and quickly will try to get the players back up. Yeah, it is DVG and he brings back the players. Play Store-லயே இருக்கும் அதெல்லாம். Vending machine. நீங்க லவ் போட்டு வாங்க. GXTSG Arjun, he has 6 eliminations already. Try next. The dash was in desperation to survive, but he was not able to do that. But what was he trying there? Was he trying to reach out towards that vending machine? Because that was an inch. Watch party bro. Just watch party. He literally tried to bring back two players, which I think he failed, and he got taken down before he could do that. But they see Gamers and Vedant towards the platform. அதிகமா கன்சியூம் பண்ணது bro கேக்கே. குவாலிட்டி வேணா கொஞ்சம் லோவா வெச்சுவாங்க bro அதுல. Words refinery. நான் என்ன பண்றது சொல்லுங்க. We have always seen Lucifer in the meanwhile Puli from Klatsa. He connects the shot on தமிழ் டீம்ல 9 மணிக்கு गाइस கரெக்ட்டா 9 மணிக்கு இருக்கும். சரியா? லிங்க் ஓட கமெண்ட்ல இருக்குது. A lot of phenomenal snipers we've been seeing in action. Dhruva in a 1v1 against IQ. IQ made it to the top 3 and will still be able to hold their own. Mac 10 coming into play. DVG a little too late to avenge his teammate, but still will be able to do it. A valiant dash being used, sends the other player packing and quickly gets the elimination. However, trouble still striking. The player decides to challenge aimbot on the 1v1. Oh, nice DVG. This time as well against DVG, and a Mac 10 will not be able to deliver. That's a second elimination. A 1v2 being pulled off by SMR, and they will be happy that they're still punching. They are also stable in top 6. Klatsa, they decide to move out. Wait, Rakers. அப்பா சரியான trying to rotate. Kaushik was the flanker. He decided to create a different angle and they succeeded to literally bamboozle Rakers. They did not read it. Mysterious, his position is spotted for sure, but he is near a vending machine. He has only 800 coins. He can only bring back one, and he does bring back Kid. He would require more coins to bring back the other members. And you look at how Klatsa's team members are waiting for the team Raker Esports to come back in the lobby. Eventually when the circle becomes smaller, it's very difficult. You saw in the last game when SMR was brought back into the game, they were picked off or plucked off in air and got eliminated eventually. This time, however, okay, Lingus pro paakren. While we see him a little ahead of ICOG TSG. ICOG TSG have a total of 19 eliminations. We spoke about the record, which right now stands with Group A, Team Elite. 142 total points. Maybe there is a chance ICOG TSG break it. However, their previous game loss might affect them. Maybe it still depends. We still have 7-8 teams surviving. If they manage to get closer to the Booyah, there is an opportunity. But Arjun clearly has an idea of where one of the players from SMR are about to make a move. And therefore, he's trying to hold him down to sides and pick him off as soon as he tries to step out. But on the other hand, Esports, and that is going to be Freck, who gets taken instantly out. And that's an added-on elimination for Team SMR. They still hold their ground. They only have one elimination, and this is where I get scared the most, Lucifer, because they have stopped suddenly looking out for fights. They're looking to, survive, and that's where the problem starts. I feel being aggressive is the best way to defend your scoreline. If you look at the other teams around them, they are fighting SEA7, but wait, Sanket, will get taken down. Mac 10 was the savior for Sanket. He handled it well, but 4 AM they're waiting. They have heard the gunshots. They would definitely want to look out for Team SMR. They would definitely want to stop them from getting inside the circle. And Parth immediately connects that AC-80 shot onto him. Parth and Gyro, he has closed in the distance. DVG dashes in. Gyro also dashes in. It's Dhruva who has to take one player down, but he eventually gets taken up by Gyro. Gyro right now, he has the M590, but he had a Max 7 actually. And he eliminated SMR.
Oh, that was a good fight, but look at Team iQOO TSG. They are immediately into this fight, and 4AM are out for trouble. Blu-ray glass irukku bro. Idu potukku Not appo. much of a recovery chance. The platform as well as the edge of these pillars have been taken. Ayush drops with a shot and knocks the player out. Sick found as well. Big damage being done. One player still close by. I'm not sure what he decided, but Gyro, it's only an exchange. No confirmations. iQOO TSG have numbers working in their favor. 21 in total eliminations, and Ayush having the highest. Bro, Vimal ipatti team la illa bro. Avanukku age illa. சரி அதனால official event எதுவும் ஆட முடியாது. அவன் இப்ப ஆடல. This is just a very ராஜேஷ் மணி ஸ்கிரிப்ட் அலிம் ஹைப்பர் நீங்க தான் டீம். நீங்க அஞ்சு பேர் தான் the டீம். others do if they still keep taking it away and another player falls. ஆஹா முடிச்சார் இங்க இருந்தால. And IQ they get spotted by Klutza and their run also comes to an end at #7. Aimbot was the last man surviving, and Klutza also cranked up. With 15 eliminations. Resurrection getting taken down for sure. The most happiest would be iQOO TSG and Klutza, but they're fighting at the top. The problem still lies with Team Chaos. Wait, it is only SCA who's in the battle. 4AM and SMR and Team iQOO, they're out. 4AM 22 kill bro. Stages are eliminated. ஆமா TSG அப்பவே அடிச்சாங்க 19 கில். Would be safe enough. But look at iQOO TSG என்னன்னா இப்ப டாப் 1ல முடிச்சா அட்வான்டேஜ் இருக்குடா. டாப் 1ல முடிச்சா 42 சரியா? Team Elite cranked up in group A. 22 elimination. If they're able to end up with more amount of elimination and ஃபர்ஸ்ட் get ஒரு 12 டீம் இந்த ஒரு குரூப்பா போட்றாங்களா? அப்படி இல்ல. நாலு குரூப் தான் மொத்தமாவே. We both are looking forward to. இப்படி போய் வரும்போது NKG having the highest in total points here in the plains. That is a total of 45. நம்மளா சொல்றாங்களா? They already have 22. They need a little more. If you add the Booyah right now, it is going to be a total of 34 points. So they need additionally 11 points more, meaning 11 eliminations. And there is a chance if you exclude them, there are still 4 teams, and all 4 of them, if you count, it is 16. Thanks for the trophy cake, sweetie boy bro. Thank you so much. Therefore, there is a chance of it being either happening or not at all. அதெல்லாம் நான் கரெக்ட்டா கேட்டிருந்தேன். Down to the last player surviving, Team Chaos, SCA Esports trying to still stand a chance to qualify, but they have Team Chaos. They have to look forward to somehow wishing for somebody to take Team Chaos down, then SCA surviving, and there is a chance to make it through the top 6. You know, I love the way the conversation have jumped on to how iQOO TSG can break the numbers, right? But right now it is Team Chaos. They are still at, you know, a little pickle with their positioning. It's not confirmed yet with SCA surviving, and if iQOO TSG decide to push onto them. Okay, இரு கண்டிப்பா இருக்கும் கிங்கோலி bro. கிக்ல இருக்கும் கண்டிப்பா கிக்ல வாட்ச் பண்ணி இருக்கும். Makes it more difficult for them to defend their position. They out in the open. They are out for trouble because Team Clubs are also peppering them. They're getting peppered from both the angles, and here comes Shobit. Wait, what? Rikas is surviving, and Arjun immediately smacks him on the head and disconnects him from the lobby. But thanks sir. What about Mailarson bro? Mailarson Kumaraswamy bro. Thank you so much. Shut down, and they are it's the story game bro. Title nightmare. Okay. Unfortunate, not the position they would want. It's just been revived. Melters, nades, all being tossed, shooting through the glue walls as well. Now பயம் இல்லாம அந்த பசங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா அதனால பயம் இல்லாம ஆடுறானுங்க. ஆனா ஆப்போசிட் இருக்கிற டீம் பயம். டீம் இப்பதான் ஆடுறாங்க. M590s right to their face. And that is going to be SCA Esports out of the race, meaning Team Chaos, I think, can be worry free. However, they need an opportunity, maybe rake up a little more points, because we saw they don't have a lot going for them. iQOO TSG, they realize, hey, the team next to us doing nothing. Let's go towards a fight against Klutza, because they are the ones who are taking away a lot of points. And if we have a chance to take them down, a lot more to add on to our backpack, to our total points, and they are trying and jumping for it. However, Klutza, they decide that we'll take the platform and move even further up, creating a distance between themselves and the opponents. You know, they have a first movers advantage. Absolutely, they are okay. Team Chaos. They are closing in the distance between them and iQOO TSG. Actually, going in for the play circle right now. iQOO TSG, they're playing it very smart, Lucifer. Team Chaos. இதுலயே இருக்க கூடாது bro. அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னு பார்க்கணும் bro. இதே பெரும் பேஸ்ட் கூடாது. அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னு பார்க்கணும். The utilities being exchanged, freeze nades, melters, and Kaushik finds the one onto Scary. Immediately gets revived back. இந்த செகண்ட் தூக்குறாங்க bro. ஆமா மூணு பேர் இருக்காங்கல கரெக்ட்டா அவனா தூக்கு சொல்லுவாங்க. அந்த 1 3 இருக்கான் பாரு. அவனா தூக்கு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? And imagine they are on the top. அவனே சொல்ல நான் மணியோட இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். மணி 5th போறதுலயே கான்டாக்ட் இது வந்து தூக்குவானுங்க. ஆமா
தூக்குற லேட் ஆகுது பாரு தூக்குற ஸ்கேரி தூக்குற லேட் Team ஆகுது Chaos, I don't know this time can they revive? Yes, they do. Therefore, Team Chaos still have their 4 players. But as I said, only one elimination, they have nothing else to answer. And the zone not in their favor. They're at the right ஹைப்பர் edge யூஸ் of it. பண்றாரு Container right behind. Melters being used because I think Klutza lost sight of Team Chaos. And now Team Chaos, if they don't make a mistake, they have an opportunity. But a Melter being tossed towards ICOG TSG should give away their position. A lot more likely that Klutza now will hold them towards their sides. Klaus, you can see what a nice angle is that he's holding along with Bully. Therefore, Team Chaos trying to make it out of here is going to be very difficult. However, all of them waiting for the zone to shrink and now Melter being tossed, making sure that Team Chaos, they have to run out in the open, use the glue walls, but all of them will be weak. One after another being broken and now ICOG TSG as well trying their best. But Klutza, what ninja, how does he finally gets 2 with the M24? The players above, they get some space for Team Chaos. It is Arjun who immediately trades player from Team Chaos. ரெண்டு டீம் சேர்ந்து ஒரு டீம் பர்சன் ஓட்ட என்னடா பண்ணுவானே அவ்வளவுதான் முடிச்சு விட்டாங்க TCA. In this situation it is Team Chaos who are இல்ல இவனுக்கு தான் லட்சால தான் டவுன் ஒரு மேல glue walls. Team Chaos finally their 4 members எப்படி ஒரே அத மூவ் பண்றாங்க and all rest of the members ரிட்ஜ் போய் புடிச்சு கீழ இறங்கிட்டாங்க நல்லா divided this play circle into parts. One has been conquered by Klutza, one by ICOG TSG, and there are flying monster trucks coming in. This area is cluttered more with glue walls than members, but look at Ayush. He's on that recoil tower. He has the best of the angles. He can absolutely clinch players from that position. He can pluck those, but he immediately leaves that positioning. It's Klutza. They're defending this circle. They want ICOG TSG to fight. அந்த பையன் போடல அந்த பையன் அடி வாங்கிட்டான்டா. Goodness me, Klutza show. He finds one more pick over there. But this fight is still not started. They're still fighting. Oh, nice. சரியான on top. It's not over yet. Team Kaushik and Team Klutza eliminated, and Kaushik is the one with the grenade launcher. And Klutza ends this with the booyah, Lucifer. What was this? It was fight after fight, exchange after exchange, knock after knock, launchers being used, eliminations being found, couldn't even follow of which team had the better of it. If one team lost the player, if Klutza lost the player, for him that was even ICOG TSG, it was even Team Chaos. One after another, it came down to Kaushik with his launcher, the M79 found all the opponents, doing the after effect of the damage was Kaushik over there, and then getting this booyah for the team. 12 placement points, 25 in total eliminations, and they put a 37 total pointer game for themselves. But this is where it started. They had to shut down a team, and I was SCA unfortunate, cornered in one position, and after them getting taken down, Team Chaos in a position where they almost looked like they were picking players off. They used the launcher, but as you mentioned, Scary, unfortunate, using it in close quarters of the glue wall will obviously do a little bit of a damage. Hindrance coming in over there, and then launcher put on the launcher in that last hit that he gets on. And thankfully, because he was the first to take that player down, and then he goes down, he ends up getting this booyah for Klutza. Night என்ன bro night kick live இருக்கும் ஓகேவா NKG ஆடுற மேட்ச் இருக்குது சோ kick எல்லார்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படினா வந்துருங்க இல்லாதவங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டு வாங்க ஓகேவா சோ அதோட நம்ம ஐடியை காட்றேன் ஓகே அந்த ஐடில தான் இருக்கும் எல்லாரும் வந்துருங்க மறக்காம literally made it chaotic. இதான் நம்மளோட ஐடி எல்லாம் வந்துருங்க ஓகேவா Narikoottam Gamerz நம்ம ஐடி சோ எல்லாரும் வந்துருங்க புண்ணியமா போ இன்னைக்கு NKG Esports ஆடுற மேட்சோட வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கு ஓகேவா 9 மணிக்கு அண்ணா கிறுகிறுன்னு வந்துருங்க நீங்க so that he could convert those elimination points, and then there comes the the Alavero damage as well, and you அண்ணா this match அப்புறம் வர கேம் ப்ளே பண்ணு can you imagine this match அப்புறம் நான் சாப்பிட்டு வந்துறேன் that all those knockouts did not come in the last circle. ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க டைம் 9 மணி. He had 6,810 damage, and look at the overall damage his team has given. Sniper skill இல்லடா நேடு பவர் வச்சிருக்காரா. He is sitting at 6,000, Bully at 4,000, a total of 10,000. I mean, this almost pulled off a 20,000 if more வந்து லாங் ரேஞ்ச் டேமேஜ் அதிகமா போருக்கு. ஆமாடா. A grenadier
right? And sitting at 6,000 damage is just unbelievable stuff. And on top of that, wielding Third of mana. bows, we generally see Skyler use snipers, பண்றாரு it ஒரு should have been maybe sniper, அதனால bully, ஏத்துறது. but this is how the tactics of one unique active skill is bringing in. Teams are figuring out, hey, why not send a player super close and then make him use the launcher, and that's how it worked for Klutza here in the very Sniper skill, ஆமா, last ஆமா. fight, and even இது the last shot coming in Alvaro towards மட்டும் இது. M79 clutches Booyah with a roll of 37 points for the team. Need use பண்ணுவாரு போல. TSG, they fall short of the record of an individual game, but have they clinched the overall today's standings? That's something that we have to take a look at. 4 AM they got points, but we spoke நான் உள்ள about போவே it. மாட்டேன் கிங் கோலி அதெல்லாம் அவங்க எல்லாமே ஆச்சு ரெகுலரா டீம்ஸே பாப்பாங்க ஓகேவா They were already in the top. We don't have நான் போய் சொல்லணும்ங்கற இல்ல டீம்ஸே பாப்பாங்க எல்லா டீம்ஸோட ஆடுறாங்க அவங்களுக்கே தெரியும் எந்தெந்த டீம் வரும்னு at 9 points. அந்த டீம்ஸோட மேக்ஸிமம் ஆடிட்டு இருக்காங்க பார்க்கலாம் This was the last. This was at the edge. They have only 9 points compared to the 16 that SCA has. So I'm not too sure. 4AM also have same. ப்ரோ ரெகுலரா போட்டா நான் இது பண்ண முடியாது ப்ரோ நான் அடுத்த வாரம்லாம் நார்மல் ஆயிருவேன் நார்மல் இந்த வாரம் 7 நாள் மேட்சிங் ஆடிதான் இப்படி இருக்குது அடுத்த வாரம் மேட்ச்ல அதுக்கு அடுத்த வாரம் தான் மேட்ச் அதனால அடுத்த 10 நாளைக்கு நார்மல் லைவ் தான் இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படினா நம்ம வாட்ச் பண்ணி போலாம் but they decided that we will stick to refinery. We would stick to refinery. We would want to play this out, you know, on the basis of survival. They did it pretty well. They ended up messing it up. They almost got the booyah. You know, they கமெண்ட்ல பின் பண்ணிக்கிறங்க ஸ்டிக்கரோடது எல்லாம் மறக்காம வந்துருங்க and we know that in the வாட்ச் பார்ட்டியோட ஓவர்ஆல் வியூஸ் எவ்வளவு தெரியுமா 10000 வியூஸ் தான் இல்ல சார் 10500 வியூஸ் தான் மொத்தமாவே வாட்ச் பார்ட்டியே இதான் பிரச்சனை the way that last circle turned out இந்த வாரம் 10000 இந்தமா இன்னைக்கான வீடியோ 2.5 மணி நேரம் போட்டுருக்குமா 2:40 நிமிஷம் நான் 10000 வியூஸ் தான் மொத்தமாவே அடி வாங்குது தான் பிரச்சனையே வாட்ச் பார்ட்டி வேற எல்லாம் தியாகம் பண்ணி தான் ஆகணும் we saw how Klutza was sitting on the platform, right? And they were always prioritizing the circle. எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணி பண்ணுவானுங்க there will be some knocks coming in. Knocks were there at a teams single கூட point நல்லா where இருக்கும் Team Chaos was being peppered by Freeze name. நம்ம 5 6 டீம் 7 டீம் குவாலிஃபை பண்ண வச்சு ஆளுக்கு ஒரு குரூப்ல போட சொல்லிக்கலாம் Also from the top where, you know, Team Klutza was sitting, but they still managed to survive there and it ended in the very last seconds of the circle. நாளைக்கு தான் ஆர்பி ஆடுறாங்க 25 நினைக்கிறேன் 25 26 PS 25 RB செட் them getting themselves the champions title at the end of TEZ FFMIC 2020 நாளைக்கு என்ஜி ஆடுறாங்க குரூப் ஸ்டேஜ்ல வியூஸ் வரது இல்ல சேனல் அடி வாங்குன்னு சொல்றேன் and also that player going down just before just after taking down the last player from the opponent team. With this, let's take a look at today's standings and see if it is going to be the same teams that we saw in the top. ஒரே ஒரு 4 மட்டும் 3 பாயிண்ட் தப்பிச்சிருச்சு நின்றுனாங்களா அவ்வளவுதான் just because of their survival towards the end of it. And 4 ஏஆஸ் வந்து காலி ஆயிருப்பாங்க 3 பாயிண்ட்ல போச்சு மத்த எல்லாமே பக்காவா சொல்லிக்கறனா as well as 6 points டேய் ரெசரக்ஷன் வந்து டாப் 1 முடிப்பா நினைச்சா முடியல What's this for performance, right? அவ்வளவுதான் இப்ப 6000 க்கு தள்ளப்பட்டுமாடா 6000 பிளேஸ்மென்ட் நம்ம அப்பனா 32வது குரூப் resurrection as well with 136. Not about resurrection நாளா மூணாவது குரூப் அப்பனா இந்த மூணு டீம் நம்ம மேல பெரும்ல right with 136 and if imagine they would have been, you know, available in the last circle, it would have been chaos and I am sure that they would have also eyed for that 150. நம்ம யாரோட ஆடுவோம் தெரியுமா ரெசரக்ஷன் ஓட இருப்போம் overall you know with, you know, record of Team Elite who scored 100. ஓ நம்ம லாஸ்ட் குரூப்பா with 153 that's gone. Now at least in today's journey as a recap, right, the invited team here in fall, they've made it through, and along with that the two city qualified team, that is Team SMR as well as Klutza, one from Bangalore and the other from Kolkata, both have made it through into the next stage, that is our group stages. So congratulations to them and even the teams from the FFC. ஆமா மூணு டீம் மேல வந்துச்சு பாரு ரெசரக்ஷன் மேல வந்துட்டாங்க This almost looked a lot tougher for Team Chaos because you could see the number of points. However, with that, let's take a look. fourth group எப்பறா வருவான் 1 2 3 4 5 ஏய் be happy with Ronit's addition. They have managed to 4 group மேட்சா அப்பனா 4th group லடா 3rd group தானடா வருவான் to show who's the next powerhouse. I would still say Lucifer, that team SMR would be the one who would be super proud because others அட அங்க வேற ரெண்டு டீம் அட சாரிடா நான் அத மறந்துட்டேன்டா some kind of players in them who had already played a bigger stage, right? So SMR would be proud
would be proud of themselves the way they have, showcased. But it is, of course, for the likes of Ico, GXTSG, who have definitely scored higher or highest in this lobby. நான் அப்படியே போயிட்டு வரேன். ஓகேவா 9 மணிக்கு அதல சந்திப்போம். ஓகே 9 மணிக்கு என்ன டோர்னமெண்ட்? அது 20k கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் சொன்ன गाइस. அது ஓகேவா எல்லாரும் வந்துருங்க. இக்கோட லிங்க் chatல பின் பண்ணிக்கிறேன். நானும் ஒரு தடவை கொடுத்துட்டு போறேன் கடைசியா. எல்லாரும் அந்த லைவுக்கு வந்துருங்க. ஓகே ஜாலி பண்ணு மக்கள் மகிழ்ச்சிக்காக நரிக்கோட்டங்க நிகழ்ச்சின்னு சமம் பண்ணிடலாம். ஓகே ஒரே ஒரு தடவை லிங்க் மட்டும் கொடுக்குறேன் गाइस. தொட்டு டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் த மைக் ட்ராப் ப்ரோ, ஃபியூரி பிளேஸ் ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச். சரி நான் போயிட்டு வரேன். ஓகேவா எல்லாரும் வந்துருங்க. ஓகே 9 மணிக்கு வின் பண்ணுங்க ப்ரோ. இது நம்ம கையில் இல்லை, அது அவங்க கையில் தான் இருக்குது. என்ன பண்ணுறாங்களோ பண்ணட்டும், வந்து பார்ப்போம். சரி பாய் பை 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 பை. தேங்க்யூ ஃபார் த பாதி ஹோவா தேங்க்யூ ஃபியூரி ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய் போயிட்டு வரேன், அதில் பார்க்கலாம். நன்றி.